बड़ा शूट में सही मेरी ऑडिबल है कि नहीं? A very warm good morning to one and all. Myself, Nidhi Vats from Department of Endocrine Surgery, King George's Medical University, Lucknow. I'm very much honored and grateful to extend a warm welcome to you all in this national webinar on impact of COVID-19 pandemic on health and education. The world is facing a global pandemic with enormous personal, societal, and economic consequences. We are living a unique time now and facing new realities of working from home and following physical distancing. There are big changes coming to the future of world around the globe. Today's webinar will provide a platform to the audience to learn new practices, ideas, and resources about the country's response in the field of medical education and other challenges stemming up from the current global pandemic. It gives me an immense pleasure to welcome our chief guest, Dr. MLB Bhatt sir, Honorable Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow. Our guest of honor, Dr. Hem Chandra sir, Honorable Vice Chancellor, Hemwati Nandan Bahuguna, Uttarakhand Medical Education University, Dehradun. Our guest of honor, Professor A.K. Singh sir, Honorable Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow. Our guest of honor, Dr. Rajiv Lochan sir, Director, Balrampur Hospital, Lucknow. Our guest of honor, Dr. Manoj Dikshit sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya. And our guest, Dr. Radhesham Singh, Principal Kamla Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur. It's an update that rest of our guests are not able to establish a connection with us due to the network issue. So starting from our chief guest, I would like to invite Dr. MLB Bhatt sir, Honorable Vice Chancellor. I
will invite Dr. Rajiv Mishra, sir, for presenting the keynote. Uh, uh, Good morning to all. Again, welcome on the behalf of the organizing committee. First of all, I would like to again thanks to our chief guest and guardian of our institution, Professor MLB Bhatt sir, Honorable Vice Chancellor, KGMU, Dr. Rajiv Lotan sir, Director, Balrampur Hospital, guest of honor, Professor A.K. Singh sir, Honorable Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Honorable Vice Chancellor, Professor Hemchandra sir, Vice Chancellor, Hemvati Nandan, Bahuguna Uttarakhand Medical Education University, guest of honor, Dr. Manoj Joshi sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, and Dr. Sankhwar sir, CMS, KGMU, Dr. Rajesh Haswardhan sir, Professor and Head Department of Hospital Administration, SGPGI, Dr. Anand Kumar Mishra ji, one of the co-organizer of this program, Department of Endocrine, KGMU, and Dr. Brijesh Kumar Shukla sir, Dean of Art, University of Lucknow, Dr. Radheshyam Singh sir, Principal, KNI PSS, and Dr. Ram Narayan Singh, convener of this program. Once again, welcome to you. And especially thanks to Mr. Sanjay Pandey, coordinator of this program from the KNI PSS. The COVID-19 pandemic is the first and foremost health crisis. Many countries have decided to close schools, colleges, and universities. The crisis crystallizes the dilemma policymakers are facing between closing schools and keeping them open. Teaching is moving online on an unstated and unprecedented scale. Student assessments are also moving online with a lot of trial and error and uncertainty for everyone. Many assessments have simply been cancelled. Importantly, these interruptions will not just be a short-term issue, but can also have long-term consequences for the affected cohorts and are likely to increase inequality. In higher education, many universities and colleges are replacing traditional exams with online assessment tools. This is a new area for both teachers and students, and assessment will likely have larger measurement error than usual. The career of this year, university graduates may be severely affected by the COVID-19 pandemic. They have experienced major teaching interruption in the final part of their studies. They are experiencing major interruption in their assessment, and finally, they are likely to graduate at beginning of a major global recession. The new coronavirus has affected people's health in more ways than one. Access to health care is a fundamental human right, but the strain that COVID-19 pandemic has placed on healthcare system everywhere has in turn affected many people's primary care provision. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and doing less in terms of social interaction and exercises. This can have a negative effect on our physical and mental health. The new realize of working from home, temporary unemployment, homeschooling of children, and lack of physical contact with other family members, friends, colleagues take time to get used to. Adapting to lifestyle changes such as these and managing the fear of the contracting the virus and worry about people close to us who are particularly vulnerable are challenging for all of us. They can be particularly difficult for people with mental health condition and other health issues. The most important, KGMU already has started the
uh, telemedicine and health radar to face such type of issues. Now we are again facing the issues like health issues. No patient are they are not able to visit the hospital. So, but by this way, by uh, new gadgets, software, we can replace and we can manage this COVID-19 pandemic issues. Thank you. Now, I will invite Dr. Hemchandra sir, Honorable Vice Chancellor, Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University, Dehradun, to present the opening remark. A very good morning to all of you. Ladies and gentlemen, at the outset, I would like to express my gratitude and the thanks to the organizers for having invited me for this webinar, that is the impact of COVID-19 pandemic on health and the education. I extend my regard and my teacher, the special regard to Professor A.K. Singh for having taken over the charge of as a Vice Chancellor of the first Vice Chancellor of the Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow. And he has been our teacher in the KGMC, that time basically, now the KGMU. And my thanks and regard to Honorable Vice Chancellor KGMU, my dear friend, Professor M.L. Bhatt. And again, my teacher, Professor Manoj Dixit, under whom I have done many degrees from the Lucknow University. Special thanks to you, sir. My regard to you. And my dear Dr. Manoj, Mr. Manoj. And my dear Rajiv Misra and other dignitaries, and the convener, Dr. R.N. Singh, and my dear participant, ladies and gentlemen, a warm welcome again and again to you. As we all know that this is more than 70 days have already occurred that we are facing or running under the stream of the COVID-19. It's not new today for us to discuss about the 19 for every day, all of us, and most of us, we are the healthcare providers here. But it's good that the Dr. Rajiv Misra has included the Professor Manoj Dixit, Vice Chancellor, RML Awadh University, Faizabad, Ayodhya, because being involved in the overall education system and the medical education is the part of that. Let me start from the health part. There are always, what I personally feel, whenever there is a endemic or the pandemic, epidemic, there are the positive and negative aspects of it. I'm not going detail into the corona or the COVID-19 because by now everybody knows in detail about, so the mass media, through the other sources, we are well aware about it. The thing which I have observed during last 70 days under the leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the way he has motivated the population, the community of the India basically, I personally feel this is the first time this was a mass awareness about a disease and the prevention and so many other aspects which should be involved in the promotion and the prevention of the disease and promotion of the health services. And probably this is the first time that I have seen the people are that much concerned. They are meaning thereby. They are well aware about the situation going on, maybe due to the enforcement by the government, by the disaster
pandemic act on us. So the lockdown situation throughout the country in 4 phases. Now we are under the unlocking system. But it is quite clear that everybody is well aware and understand the reason behind it. But in our situation in India, especially, I will tell you, where the density is so high and the population is 1.3 billion or something like that, more than that. It is very, very difficult if you say the population keep a social distancing or the physical distancing. I am sure being a health care provider ourselves will not be in position once we go to the market. So lockdown was the only necessity to imposed upon the population, so make available the people under the social distancing and the physical distance. But it has some indirect or the negative impact also. The negative part is the economy has gone down and some of the people, they have gone under the emotional distances also. And it is not the emotional distance. In fact, the terminology which we have given the social distance is not that much of appropriate, what I was to see. It is a physical distance. Since we are a part of the society, that's why we often call it the social distancing. So awareness which I have observed among the population of the India, starting from the first day, that was the 22nd of the March, it was the Janta curfew, and then implementation 24th of 5th as a first stage of the lockdown that was continued in the gradual in the phases and phases. Second aspect is that time has gone. We thought that most of the communicable diseases have been under control. And now we as a healthcare provider or the public remain more and more focused toward the non-communicable diseases, food habit, hypertension, diabetes, psychosis, and so many other things. But the introduction of the corona, that is the COVID-19, has given us a lesson that by ignoring the communicable disease prevention, if you go alone, move forward or just to control for the non-communicable, it is not the right path, basically. Last year of you, every year we come across to the plague or dengue or H1N1, but this situation, I think for the first time, we all of us have observed in our life that it is absolutely locked down for the more than 70 days and the train movement is absolutely seized, aeroplane movement is absolutely seized, local transportation is absolutely seized. Even you ask a gentle person having the more than 100 years age, he will say never we have come across such type of a situation. So this is the first lesson. Second aspect that we have to think or simultaneously while we are going to control the non-communicable disease, and we have to live with the communicable diseases also and go simultaneously for their control aspect. Second, the positive aspect are that now the people are well aware. They have come across many instances and now they remain educated and last also, but somehow they could not follow the prevention. And this is the first time I think the lesson has been given to the community. And I hope that every citizen of India will take a careful living standard in their life. We have completely changed our food habit and the working style. And this is the first time I think we have learned many more things while we remain inside our house as a lockdown. Now we switch over to the medical education aspect, education and the impact of the COVID on the education aspect. Especially we are concerned nowadays with the medical education. During the last 70 days, you know, all the academic institutions, education institutions, they are closure absolutely for more than 80 days. Closure means they are inside their residences or the home or wherever they remain, they are there basically. Schools are completely closed. Now the alternative method what we have developed so far is that is the basically online teaching system. So loss of academic calendar is the number one, especially in the medical field. Basically, it is run
or the governed by the Medical Council of India or the Board of Governors, Ministry of Health and Family Welfare, and which is directly connected with the internship and the PG entrance test. So everything has been postponed by 3 months, hopefully. And second aspect, delay in the higher education program all over the universities. Third is the online system. That's fine. We used to do, but not do it that much of frequently. Now, this is the only alternative nowadays to go online. Online has a good system. There is no problem. We are also watching at the same time. I have seen for the last 2 months, basically, we have come across at least 15 or 20 webinars on this thing. But certain adverse things are basically, there is no personal touch, especially in the medical field, wherein we always remain with touch with 150 students while they are going for the practical. The hands-on training will not be made available throughout your online system. You go for the virtual system 1,000 times, but the personal touch will not be there. That is the. And some of the places I will tell you observe, since I am stationed in the hill station, that is the Dehradun. Some of the students, they are in remote areas or the hilly areas. Neither at some places, either the internet facility is not available or there is a very, very slow signal service. So we are sending sometimes the WhatsApp and the PPT so and so, that is not going to make. Ultimately, we will have to make some certain arrangement once they come. The Medical Council of India, we have requested, we have an association of the medical universities of India, wherein 20 medical universities are the members of that. Recently, we met twice or thrice, and the Professor Bhatt is the witness of that. And we have sent the recommendation to the Medical Council of India, Dental Council of India, Pharmacy, Nursing, so many others, regarding the impact to overcome the impact of this pandemic COVID-19 over the medical education. And you will be happy to know the recommendation given by all of us, one by one, being accepted by the Medical Council of India. As we know, there is no alternative. So online, even the online has been accepted with certain deviations, and the relaxation in the examination, relaxation in the appointment of the external examiners from within the state. These are the few recommendations we made. So if online, the situation, now we have to be very, very frank basically to say that we are ready now to face such type of situation in future also, and the online teaching will be the only solution for that. So we have to change accordingly our course and curriculum and the methodology. And however, I personally think that the conferences, seminar, or the symposium will not have that much of difference, except the personal meeting during once I go to the Mumbai or the Delhi or to the Lucknow, other places, we meet and greet the people. Other than that, otherwise, I personally observed it's a very good medium for conversation. As of now, we are also like talking, and the second aspect which I will like to convey to all of you, that if the online system we insist upon and it is enforced on us as an only alternative, definitely one negative aspect on the any type of the education, especially in the medical or the engineering or the other parts, especially where we are concerned with the population or the community or the public, that there will be a lack of the development of the soft skill by the healthcare providers, may it be a faculty, may it be the senior resident, may it be the junior resident, or may it be the MBBS. Because soft skill is always earned by the individual while you are working with the society. That is the way of the communication. That is why the Medical Council of India, if you remember, for the first time in history, they have introduced the foundation course of 1 complete month. There is no study at all about the medical. It is only to develop the individual or the incumbent who has been enrolled in the first year of the MBBS, go for 1 month as a foundation course in which
you will come across many facets of the different parts, not only the treatment, but the soft skill development, communication, legal aspects, so many things are there. So this will be, there are certain limited positive aspect. Otherwise, we all will have to accept that this corona or the COVID-19 pandemic has given a remarkable negative effect on our health and the education, especially in the medical education system. I think I will stop my saying at this point, and thank you very much for inviting me for this inaugural session. Thank you for organizing this. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I will invite Dr. Manoj Dixit, sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya, to say the opening remark of the webinar. Thank you, Rajiv ji. Honorable Vice Chancellor, KGMU, Professor M.L. Bhatt ji. Vice Chancellor of HNB Medical Education University, Dr. Hemchandra ji, who introduced himself as a friend and a student both. And Honorable Vice Chancellor A.K. Singh ji, who can also have the same phenomena. He was a student once, then a teacher for our university as well, and he has helped students of hospital administration immensely in the past. Congratulate him for taking up this coveted position. The participants in this webinar, which now appears to be a new virus, which has struck us very hard. I think we have 3-4 webinars every day, and that consumes 3 to 4 hours every day, preparing and delivering lectures. And you know, एक excuse भी नहीं चलती है कि I'm not at home or office. You be connected anywhere we are. So, but nonetheless, I think this has given a new dimension to our sharing of ideas and imparting some education. COVID-19 is all your issue. You are understanding it, and yesterday for 1 hour, Bhatt Sahab has explained it to the common masses on the Rashtriya Shiksha Mandal's platform, all about COVID-19, its medical history and its implications and future cautions that we need to take. I only have my own bit of understanding, which I would share for you to include in your general understanding of treatment of this pandemic, which of course, as mentioned by M. Chandra ji, is unprecedented, once in a 100-year kind of a disease, that we have no experience of this kind of this magnitude of this disease. The last being quoted as 1980, none of us were there. But today's India is different. 1980s India was different. It was a very smallly populated, a lot of greenery available, a lot of land available. Today we are a nation filled with population. And all our hotspot areas have a population density of anything up to 10,000 to 15,000 per square kilometer, which is matching only with the highly developed nations like Hong Kong or some very densely populated cities of the world. But our density has no development, no developmental issues, no healthcare systems, no proper PDS systems. Nothing is available in those dense areas. These are not planned and dense areas. These are unplanned dense areas where we have started this. Yesterday, I traveled for about 100 kilometers to 150 kilometers in the rural areas just to have my own understanding of the kind of directions and instructions that we are trying to give to the people and
and we expect them to follow. I was afraid that none of them were followed. None of them. Everything is life as usual. And they're happy that some restrictions have been lifted. So life is as usual. No restrictions to be followed, no precautions to be followed. I traveled 75 kilometers from this side, 75 kilometers from the other side, and saw no change in the rural areas. So which means that I came back with a understanding that I have to involve my colleges situated anywhere in the rural areas to at least provide this kind of an information to the people that by being casual is no solution. Then COVID-19, the kind of phenomena that we are observing, has one aspect which is a medical aspect, has another aspect which is the educational aspect, as you saw, and there is another aspect called the social aspect and psychological, social, economic, psychological aspects of the same disease, and also the administrative aspects of the same disease. A host of instructions are issued for police to follow. And after, say, around 100 days, they have also understood they're fatigued, they are unprotected, and therefore they have also started thinking that everything has come to them. So there are loose ends now. And as we see, it may not be fatal, it may not be deadly as it appears, but the spread rate has suddenly increased. We may see the phenomena of maybe what you call as the homecoming laborers, or UP is probably the worst affected, as along with Bihar. The kind of people, number of people that have come, and the way they have come. I think no norm of COVID-19 protocol issued by either WHO or Ministry of Home Affairs or the government of Uttar Pradesh was followed, because we could not have followed that because of the numbers. All this is increasing our task. So I salute the medical fraternity for the way they have taken up and they have battled it out. But I expect all other faculties, non-medical faculties, to come and support the cause in checking the spread of this disease till we are able to find some credible answers to this, some medicines, some vaccines, etc., etc. Till that time, the social side of the whole story, or the social scientists and psychologists and economists and everybody has to understand their own bit of role in checking the spread and in the contributing in their ways the spread of this disease. Education systems are undergoing change anyway, but unfortunately, it has come as a jolt or as a shock rather than as a choice. It has been enforced rather than been accepted, but enforced nonetheless has gradually led to the acceptance part of it, and the virtual world is now matching hand in hand with the actual world. I don't know when the universities and the colleges will be back to normal life, and with the kind of protocols that being issued by the medical fraternity through the administrative systems, make it very difficult for us to work normally in any time near future. So I look forward to your suggestions, your interactions, and I expect Rajiv ji to share, once the meeting is over, the key recommendations are made out and shared with all of us to disseminate among the masses, and try and ensure our own bit of contribution to checking the spread of this disease. I wish your interactions to be long, detailed, healthy, and useful to all of us. And once again, I congratulate the organizers for organizing this, and I also congratulate the participants for participating in this exercise. I hope to be a beneficiary of this exercise. Thank you so much, and my best wishes for the successful webinar. Thank you so much, sir.
Now I will request Professor A.K. Singh sir, Honorable Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University from Lucknow, to present the opening remark. Well, at the onset, I thank the organizers for including me in part of this discussion, a thing which has been very dear to me. But I have a couple of statements to make before I start. One is that, well, I am still not a proper vice chancellor, I would say. You can call me the vice chancellor designate because I have not yet taken charge as of today, maybe in the next few days. Well, that's one. Then I see a lot of, I would call them, senior vice chancellors who are there in the as a guest of honors and the chief guest. So I would be perhaps age-wise maybe the oldest, but otherwise the youngest vice chancellor as far as the hierarchy is concerned. Well, the other thing is that I have been working for this for the last maybe 2 months or so. And I think I'm in a privileged position to make a few just basic comments because I'm involved as control of examinations of KG Medical University, which is an affiliating university as well. So beside the examinations for the KG Medical University, we have about 9 medical colleges in different cities which are affiliated to it, and also some nursing colleges which are affiliated to it. The other thing is that's the examination part of it. I have been trying to propagate the preparedness for COVID on the instructions of the UP government. And I have been instrumental in training 36,000 NCC cadets who would be as the backbone if the disease spreads, and as it is, looks likely. I have been teaching veterinary officers for advanced medical training because with the help of my team in KGMU, so that if we fall short of doctors, we can take their help to assist us as far as the management of COVID is concerned. Because veterinary officers are officers who are already dealing with viral infections and they know most of the medical terminology and are actually treating these small animals. Then I have been training teachers of higher education and teachers of secondary schools, their principals. So a fair amount of knowledge I have gained whereas while teaching these people. With this, I do agree with the statement that what we are looking forward to is a physical distancing rather than a social distancing. What is important, I think, in COVID is essentially that we have to break or keep in check the person-to-person contact, and that is very important. A thing which Professor Hemchandra Sahab said that he went around yesterday and he found to his dismay that this physical distancing or the use of masks and all is not being done properly. The best thing to do is to understand or go with that feeling that perhaps the other person who is in front of you may be a COVID positive, maybe a COVID positive person. And with that impression, if you go to meet somebody, then perhaps you'll keep a check on yourself and break that barrier, basically the droplet barrier between yourself and. Now coming on to so this was about the health. Coming about to the education part of it, UGC has circulated guidelines as far as its universities are concerned, that it did it in April itself, that how to go about in examinations. And that's a very useful document which people should go and read that document. I won't go into details of it. And the reason for not going into details is that we have about 12 speakers in a span of about an hour or so, from 10 a.m. to 11 a.m. So I think every speaker besides the chief guest would be getting say 4 or 5 minutes. So I won't make this seminar look like, everything being said by the people who have been called as guest of honors and then take so much of time that it becomes the actual seminar itself. What we are looking forward to is that we should ensure, the first and the foremost thing is to ensure the health and safety of the students, the faculty and staff, and keeping that in mind, continue the academic activities. That is the most important thing. Then we have to conduct the examinations and the declaration of the results, all maintaining the sanctity of the examination as well as keeping to the basic principles of adhering to COVID prevention. Then the further things would come in being are the admissions part of it. We know that the entrance to the NEET has not yet happened.
the first round of counseling of the center, then the second round of counseling, the first round of counseling the state has, but we have still not got residents. Our residents who have completed their degrees, they are out to go. They have been given some extensions. Some of them are undergoing examinations. KG Medical University has taken the lead, and from 15th of June, we are going to have the postgraduate examinations, diploma examinations, and nursing examinations. That has been part of our revised schedule. So these things have to be done. And also one thing which is important is to plan out the next academic session. So with these things, I think everybody agrees that the call of the day is to have a telemedicine sort of a thing. That is what we are looking forward to, a telemedicine sort of a thing, where teaching is done online. We are doing it in KGMU and maybe in other institutions as well across the country. Then the problem is of practical examinations. The problem is of practical teaching. So I think the way out of practical teaching, because you have labs, you have dissection halls. So for the time being, I feel that these labs and dissection halls would be replaced by online teaching of videos, and hands-on experience may not be available. So we'll have to resort to online teaching with the help of videos and video dissections, things like that, virtual dissections. That is perhaps the way ahead in the I would say near future, and maybe even furthermore. So the way is to have innovative steps, and the internet facilities are going to play a very important role as far as the conduct of teaching is concerned, the conduct of examinations concerned, and not only that, lab research for like postgraduate writing theses. I think patients are not there, the number of patients wouldn't be there. So they have to be, the theses also have to be oriented to more of, say, maybe a meta-analysis sort of thing, literature review, or something which can be doable in the present circumstances. So with this, I think preamble, I won't take much of your time or the participants' time, and would once again thank the organizers for inviting me to this useful webinar. And I wish all the best to the organizers for a successful webinar. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I will request Dr. MLB Bhatt, sir, Honorable Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow. So please say a few words. Thank you very much. Most on the auspicious occasion of the inaugural function for the national webinar on impact of COVID-19 pandemic on health and education, dignitaries present in this Zoom meeting, Professor Manoj Dikshit, Honorable Vice Chancellor of Dr. Ram Manohar Lohia, our university, Professor M. Chandraji, Honorable Vice Chancellor M. Nandan Baguda, Medical University, Dehradun, Professor A.K. Singh, Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, and Controller of Examination of the King George Medical University, Lucknow, Dr. Rajiv Lochan, Director of Balrampur Hospital, Lucknow, Dr. A.K. Gupta, CMS Balrampur Hospital, Dr. S.N. Sankpar, CMS KGMU, Dr. Rajesh Harshvardhan, Head of the Department of Hospital Administration, SGPGI, Dr. A.K. Mishra, Head of the Department of Endocrine Surgery, KGMU, Dr. Brijesh Kumar Shukla, Dean, Faculty of Arts, Lucknow University, Dr. Radheshyam Singh, Principal, KNI PSS, Sultanpur, and Organizing Secretary, Dr. Rajiv Mishra, and his very committed, hard-working team consisting of Ms. Nidhi Vats, Dr. Bharat Ranjan, and other dignitaries present in this Zoom meeting, and most distinguished, the resource persons for this meeting. And I can see a very rich academic program lined up today. So we won't be taking much time in this inaugural function. But first, at the outset, I'd like to congratulate the organizers for organizing such a wonderful meeting, where the impact on health and education both is going to be deliberated, which is so pertinent to all of us, and majority of us participating in this webinar concerned with education also and health as well. And I'm sure the deliberations will take a new direction in the medical education in particular and education in general for the future, because the IT
and these web services have been most appropriately being utilized during this pandemic, which has never been done. And in fact, many of the services which were contemplated earlier being not allowed by the regulatory bodies and the governments of the states and government of India, now they are requesting the medical fraternity and the educational system to incorporate them in their teaching training program and patient services as well. So this is a new chapter opening for all over the society. As far as the impact of COVID-19 is concerned, we all know that the currently around 7 million population of the world is afflicted. More than 400,000 deaths have taken place all over the world. And no country in the world, more than 200 countries in the world are affected by this pandemic, which was declared as a global pandemic on 11th March by World Health Organization. In our country as well, the first case appeared in the last week of January in the state of Kerala, a student coming from Yuan, China. And then subsequently, there has been consistent rise in the number of cases in our country. And currently, we know that the 2.5 lakh population is affected with disease. And around 7,000 have died because of this disease in our country. So this is the enormous number has been lost by this pandemic. And this is the only tip of the iceberg. And why I'm telling so, that many of the countries and many of the states in our country also not able to test the adequate number of the population intended to be tested. In few of the states in our country, like Chhattisgarh, I came to learn that even 7 days, 10 days, the sample being collected are awaiting their test. So that is the kind of situation. And in our state also, many of the patients are waiting for more than 24 hours and even more than 48 hours for their test to be completed. So this is a kind of situation. And then many asymptomatic patients, they go unnoticed. They will remain undiagnosed unless the blood sample is tested for the antibody status. So this is what is the visible number currently to the world is the tip of the iceberg. We are destined that this human race is going to lose many more lives. The deaths are going to be in the millions. And the impact of this disease has been then the billions are locked down. They are kept away from their social activities, economic activity, educational, cultural, all kinds of activities that the billions are being locked down. And trillions of money is being lost in the terms of dollar, pound, and rupee in the terms of economy of the world economy. And that poses a lot of suffering to the whole society, whole world, and particularly the downtrodden, the lower rung of the socio-economic state of population, deprived, and those who remain from outside the main stream of the socio-cultural and economic growth tangent. So this is a kind of impact of this pandemic all over the world. The education system is also similarly threatened. And we know the classes cannot be conducted because of the lockdown, even during the unlocked one also in our country and many of the countries of the world. So we have to search and devise various methods of innovative methods of teaching and training and education in the world. We know that the classroom teaching so far being practiced all over the world is the best method of teaching and training. But this online training program, all these web services or digital services cannot replace truly the content and the quality of education being imparted by the classroom situation where teacher and taught relation is the paramount. And without that coming into the fore, we cannot think of having the proper education being imparted to the population. Degrees can be given, and that has been done. But degrees are not the end of the whole education process. Whole education process is creation of a human being who is responsible citizen, who is responsive to the needs of the society. So that kind of journey is hampered by this pandemic. And we know that this pandemic is so rampant currently that we are not seeing anything in near future where it's going to stop. And
This is a really major concern, and this is the time that this pandemic wants all of us to survive. And survival in majority of situation is in our own hands. We have to prepare ourselves, fight to this menace, this virus. And what is that method is that we improve our immunity, we indulge in good eating habits, we take adequate rest, adequate waters for our intake, and plenty of fruits and vegetables, breathing exercise. All these added together will give us the armamentarium to fight against this dreaded disease, and that is what is known as the lifestyle modification, and which whole world is listening. The biggest impact I can see for the health sector, that the Ayurveda, which has been the colossal system of the Indian origin all over the world, was looked down by the modern medicine till date, by even in our country and outside also. But it has generated a kind of confidence and respect after this COVID-19 that is going to be a real new beginning, new era for the resurgence of Ayurveda all over the world. And the knowledge of Ayurveda all over the world is being utilized. They are using the ginger, they are using lime with warm water, they are using garlic, they are using golden milk consisting of turmeric and black pepper. So all these things, and even Chyawanprash and Triphala is being utilized all over the world, and there is the recognition. This is the responsibility of all of us in the medical profession to have and indulge into the modern methods of research to establish the Ayurveda, also incorporating into the modern armamentarium of medical fraternity to fight not only the COVID-19 but many more diseases, because these, the treasures of Ayurveda, they are the biggest and best friend of the humankind, giving good immune system, good resistance power to fight not only this viral infection, but many more infections and many more lifestyle diseases, including diabetes, hypertension, kidney problems, and many more things. So I'm not going to elaborate on those things. Recently, I went through a book titled How to Survive a Pandemic, written by an Australian doctor, Dr. Michael Greger. Dr. Michael Greger writes that how to prevent a pandemic is best way to prevent the pandemic in the first place. And I'll put few words in that perspective, how to prevent such pandemics, and there I'll end, taking not more than a couple of minutes or maybe 1 minute. And what is that information I want to share? The hardcore medical fraternity knows about this information, which I'm going to share with all the participants of this webinar. The 2002 SARS caused by the coronavirus was again origin from the bats, the changada, and the intermediate host we know was this intermediate host for 2002 SARS was one of the animals I'm just forgetting, and 2012 MERS, the intermediate host was camel. So these intermediate host and current pandemic corona COVID-19, the intermediate host is pangolin. So there is always the intermediate host for the transmission of disease from these wild animals like bat to the humankind. And when there is a half cooked or the ill prepared, or maybe the wild animals which has not been eaten by the humankind are incorporated into their lifestyle and their living habits, that poses a threat. So we have to identify this threat, and this is going to be ultimately taking care of such pandemics to occur in future. And that is the big lesson learned by the modern civilized society of the day. And we have to devise a method which is conducive for the survival of all kinds of animals on this planet, all kinds of plants, and that is what the concept of One Health is coming up all over the world. Without this One Health, where human health is considered in consonance with, in conformity with, in coexistence with the animals and plants, then only we will have the probability of surviving healthy and living for 100 years. So these are the few observations I want to share before the August gathering present today on this webinar, and wish my best wishes for the grand success of this event. And congratulations to Rajiv Mishra and his able team for organizing such a wonderful event. And
best wishes for a grand success and many more such events in future also. Thanks to all senior persons, honorable vice chancellors, other resource persons, and other participants in this webinar, and best wishes once again, and thanks once again from my core of heart. Thank you very much. Thank you so much, sir. I would like to inform you all that due to time issue, we have changed some format of the inaugural session. And now I would like to welcome and request Dr. Radhesham Singh, sir, Principal, Kamla Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, who wasn't able to join us earlier due to poor connectivity. Sir has just joined us. So I will request you to say a few words. सम्मानित कुलपति समूह, उपस्थित प्राध्यापक बंधु और प्रतिभागी मित्रों, एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर ये वेबिनार आयोजित किया गया। कोरोना का स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव है और कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं, इन बड़े प्रश्नों पर, मानव जीवन से बड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस वेबिनार का आयोजन हुआ। सबसे पहले तो वेबिनार के आयोजकों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। जब हम इस काल पर विचार करते हैं, मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा आपका, 5 मिनट, तो हमें लगता है कि जो हमारा वर्तमान है वो इतना हावी कभी नहीं रहा मानव जीवन पर जितना कि आज हो गया। आज हम घर में बैठे हुए न अतीत की तरफ देख पाते हैं, न भविष्य की कोई योजना बना रहे हैं। हम सिर्फ वर्तमान में रहने के लिए अवशक्त। हर व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। हमारा कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, हम उसे संदेह की निगाह से देख रहे हैं। मनुष्य मूलतः एक सामाजिक प्राणी है और उसे सारी सामाजिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। वो किसी भी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सेदार नहीं रह गया। ये सब इस तरह की चीजें हैं कि जो जिजीविषा है एकमात्र मानव मूल्य बनकर रह गई। 1000 साल की मानवता की जय यात्रा में कमाए गए जो मूल्य थे, वो सारे के सारे मूल्य एक अदृश्य वायरस ने नष्ट कर दिया है, एक अदृश्य वायरस ने समाप्त कर दिया है। केवल जिजीविषा ही आज का जीवन मूल्य है। हमारे जितने रिलेशंस हैं सब वर्चुअल होते चले जा रहे हैं। इन्हें हम अपने एक्चुअल रिलेशन में कैसे तब्दील करेंगे? क्या इस रिलेशन वर्चुअल की आदत तो नहीं पड़ जाएगी मनुष्यता को? और हम प्राध्यापक हैं और एहसास करते हैं इस बात का कि हमारा जो छात्र है वो एक दूसरे तरह की मेंटल इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। उसके पास कैंपस की सुरक्षा नहीं है और मीडिया ने भी इस महामारी का इस तरह से प्रदर्शन किया कि सारी मानवता जैसे डर गई, सहम गई। इसने मेंटल सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया। आज जहां तक अध्यापन का प्रश्न है, सारी जो अध्यापकीय गतिविधियां हैं वो निरस्त हैं। ऑनलाइन अध्यापन को चाहे राज्य के शिक्षा मंत्री हो चाहे केंद्र के शिक्षा मंत्री हो, दोनों को लग रहा है कि यही एकमात्र विकल्प हो सकता है। जबकि स्थिति ऐसी है, हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की समस्याओं को जानते हैं। 24% आबादी के पास एक कमरे का मकान है जिसमें 8 आदमी रहते हैं। वहां से किस कनेक्टिविटी से? इंटरनेट है नहीं। इंटरनेट है भी तो बाप के पास पैसा नहीं है। ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात पाए बिना हम इसी को मान लें कि जो ऑनलाइन अध्यापन है यही आगे भी चलता रहेगा तो ये ठीक नहीं होगा। ये थोड़े दिनों का विकल्प हो सकता है। कैंपस का विकल्प इंटरनेट कभी नहीं हो सकता। जब कैंपस में छात्र आता है, स्टूडेंट आता है, तो कैंपस में उसके व्यक्तित्व निर्माण की सैकड़ों गतिविधियां चलती रहती हैं अदृश्य तौर पर। वो अपने समूह के साथ होता है। समूह का सहयोग, जो समूह का अपने समस्याओं का आदान प्रदान और उससे समाधान पाना, जो इमोशनली कनेक्शन है,
वो उसका अपने समूह के साथ बना रहता है और उससे उसको मेंटल सिक्योरिटी मिलती है। वो कैंपस को लूज कर रहा है, कैंपस आज उसके साथ नहीं है। एक बात और आपका ध्यान दिलाऊं, शायद इस पर भी विचार हो कि ऑनलाइन अध्यापन कहीं अमीरी और गरीबी की खाई को और तो नहीं बढ़ा देगा। अमीर 20% ऑनलाइन अध्यापन से जुड़ा हुआ है, 80% छात्र जो है ऑनलाइन अध्यापन से जुड़ा हुआ नहीं। जो 80% छात्र है, यदि वो सूचना के विस्फोट के इस जमाने में सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर रहा है तो कहीं वो पिछड़ तो नहीं जाएगा, और जब वो पिछड़ेगा तो अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ना तय है। हम सबको इस पर मिलकर विचार करना होगा कि सही विकल्प क्या हो, सही चयन क्या हो। और एक बात जो दिमाग में आ रही है, बस उसको कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये तो एक मेडिकल का पार्ट है कि हम मुंह पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और घरों से बाहर ना निकले। एक मेडिकल पार्ट है जो कि मानवता को पढ़ाया गया और मानवता ने उसे स्वीकार किया। इसके पीछे एक सांस्कृतिक पार्ट भी है, कल्चरल लेसन भी है। मुहावरे होते थे ग्रामीण क्षेत्रों के कि मुंह नहीं दिखाना, घर में लजा के बैठे रहना। आखिर मानवता ने कुछ न कुछ अपराध तो किए, प्रकृति के साथ किए, दूसरों के साथ किए, और आज वो मुंह छिपाए कपड़े में घूम रहा है या घरों में बंद होकर चुपचाप पड़ा हुआ है। इस पर भी विचार करना है कि हम अपने पर्यावरण से कैसे इको फ्रेंडली हो पाते हैं। सारे प्रश्नों पर विचार करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े भागी हैं, हमारे पास इतना बड़ा पैनल है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, 4-4, 5-5 वाइस चांसलर्स जुड़े हुए हैं जो जीवन के व्यापक अनुभवों को रखने वाले हैं। तो सब से निवेदन है कि इन सब प्रश्नों पर भी विचार करें। आपने मुझे अपने पटल पर थोड़ा सा अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I will request Dr. Rajesh Harshvardhan, sir, from Department of Hospital Administration, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute, Lucknow, to say a few words. Good morning to all those who are present online. Especially my regards to Professor M.L. Bhatt sir, Professor A.K. Singh sir, Professor Hemchandra sir. Keeping the context intact, as I have been made to understand that the theme is impact of COVID-19 on pandemic on health and education. So there are two specific verticals or two specific perspective or two specific frame of reference. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. So the frame of reference or the perspective is to look at how this COVID-19 pandemic has impacted. The one dimension is health and other is education. So let us look at it one by one very quickly, as the time given is not that much. So let us look at it let us come from a broader canvas or from a zoom out view to a zoom in view. When we try to critically evaluate or critically examine the impact that this COVID-19 pandemic has made on the healthcare delivery or healthcare system or healthcare industry or healthcare processes or services, can be looked at it from and to begin with them one by one. First is and foremost is the infrastructure requirement to the way disease is progressing and the way it has been predicted to increase subsequently in weeks and months ahead. To what extent we the healthcare professionals or we the healthcare providers, we the state or we the country are ready to cope with them and to meet with the requirement of beds along with all infrastructure support in terms of manpower, equipment, supplies, etc. Government is doing a commendable job and is trying to create
adequate bed complement commensurate with manpower and supply so as to ensure that no one is left out given the Harshvardhan sir, you are not audible. So can you hear me? Due to due to poor connectivity, Harshvardhan sir is not able to continue with us. Now I will invite Dr. S.P. Singh sir, Associate Professor, Department of Physics from Kamala Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, to present the vote of thanks. On behalf of organizing committee of national webinar on impact of COVID-19 pandemic on health and education, I would like to extend thanks to all the guests for throwing light on this pandemic and guiding all of us. I like to thank our principal, Dr. Radheshyam Singh, Vice Principal, Dr. S.K. Singh, guest, Dr. Brajesh Kumar Sukla, Dean Faculty of Art, Lucknow University, guest, Dr. A.K. Misra, Department of Endocrine Surgery, KGMC Lucknow, KGMU Lucknow, and guest, Dr. R. Harshvardhan, Department of Hospital Administration, SGPGI, Lucknow. I also thank to our special guest, Dr. S.N. Sankhwar, CMS, KGMU, Lucknow, Dr. A.K. Gupta, CMS, Balrampur Hospital, Lucknow, guest of honor, Dr. Manoj Dikshit, Honorable Vice Chancellor, Dr. RML Awadh University, Faizabad, Yodha, Faizabad. I thanks again to our guest of honor, Dr. Hem Chand, Honorable VC, HNVUMU, University Dehradun, guest of honor, Professor A.K. Singh, Honorable BC, ABBM, University Lucknow. I extend my sincere thanks to guest of honor, Dr. Rajiv Lochan, Director Balrampur Hospital, the chief guest, Dr. M.L.B. Bhatt, Honorable Vice Chancellor, KGMU Lucknow. I also extend sincere thanks to all the participants who are participating in this webinar from different parts of India and abroad. Thank you. Thank you so much, sir. Now we'll have a break of 5 minutes and we will be resuming with our session after this duration. Thank you. कौन है मैंने तमाशे भी को कहा Rajiv sir, Ashish. Hello. हेलो Hi sir. हाँ सर सर आपका सर इस पर वो सर अनाउंसमेंट है सर ठीक सर इसके बाद Sir, type करनी है. ओके सर यस हेलो
Hello. Yeah. Is it audible? Hello. Yeah, it is. Yeah. Now I would like to invite our first speaker, Dr. B.K. Ori, sir, senior most practitioner in the field of naturopath. So, sir is with us. Now, Dr. B.K. Ori, sir. So, please, sir. Thank you, Dr. Rajiv Mishra. Hello, friends. I welcome all the guests, special guests, and the participant present to attend this webinar. This is my first experience that I am attending webinar, and I think webinar is a first experience for almost everybody. Today's topic is very specific. It is the impact of COVID-19 on health and education. Now, health and education are related with each other. If health is poor, then education will definitely go down. If the education is not there, the health will not be remain good. So the seminar is a very appropriate, given a very appropriate title to it, and I'm happy to be a participant. With my little knowledge, I'll explain the impact of COVID and as well as on education. Now, as everybody knows, health does not mean only the absence of ailment or illness. It is social, mental, physical, and cultural health, which includes a complete and holistic health. Now, why any disease, new or old, occurs and invades the human body? The answer is when the internal system, which is called immune system, gets low, the body is unable to resist the invaders, and that disease occurs. This is also a known fact. I am just revising myself. Now, how this coronavirus itself is not a new thing. It is a category. Coronavirus is a category. But this COVID-19, this is novel coronavirus, is there, name is there because of mutation in some corona category viruses. How this mutation occurred, it is just a question of guess. Nobody knows the specific cause. But the fact remains that whatever is the cause, it is now invading everybody on this earth, whether it is the advanced countries, developed countries, or underdeveloped countries. Everybody is being impacted badly, and everybody is tense how to cope with it. And if a person apparently you see seems to be healthy, but internally he is worried कि कल को कहीं हमारे ऊपर तो अटैक ना हो जाए. So see how it has impacted the whole society and the psyche of the people. When the psyche is going down, then definitely immunity will be impacted adversely. So when the immunity impacted adversely, definitely this new virus will attack more vigorously, more intensively, more intensely. And there will be a rapid spread, which is occurring as we are watching. It is occurring. So first, in naturopathy, we base every treatment, every research on the basis of two main factors. One is the cause of the disease is the accumulation of foreign material, that means toxicity. The other thing is immunity, how to be able to cope with a unhealthy situation, how to cope with any type of disease, what to talk of virus, every pathogen,
body is capable. But since this is a new virus, the body has not identified in advance. So the lack of antibodies is there and we are suffering. Now, what is the answer then? The answer as a naturopath I have is that to increase the immune level of everybody. How immune level is increased, how immune level is raised is by changing our eating habits, because our eating habits have gone haywire. We are more used to having uh, ready-made things from market, packaged foods, synthetic things, and what not, fast food. The most of our youngsters are always running after the fast food. So the body is getting toxicated every day and every night. So we have to be beware that this toxicity level has to be there. You see, any disease occurs, if I am correct, every disease occurs when the uh, toxicity level goes high. How it goes high and what makes when the level goes of toxicity goes high? That means the blood's pH level is disturbed. As you know, for normal pH level of a person should be 7.4 average. It is between 7.35 and 7.45. But the average is 7.4. But when, and that means it's towards a little alkaline. When the alkalinity factor is absent, acidulation occurs, acidosis occurs, and the disease or the whatever you say, toxicity level goes high and the immunity goes down and the disease occurs. So in naturopathy, we always try to give those things where the immunity level is high, becomes high, and acidosis of the blood is prevented. Like, because I am an inventor of viral hepatitis, especially the hepatitis B, I have got patent for it, and I have treated lakhs of patients. So what is required, what my philosophy is that ask the patient to be on a regular green vegetables diet, mixed vegetables, whether in the form of cooked food or raw if it is possible, or soups, etc. Then other thing is fruits. Both of these vegetable factors and fruits contain the uh, antioxidants. Antioxidants, when they are increased, the immunity level goes up. So the requirement is to keep you equipped with lots of uh, in the system, lots of vegetables, lots of fresh fruits, even nuts also. But the best thing is simple thing is vegetables and fruits. I am treating day in and day out with this method. And then naturopathy says that you give the natural things. So I have constituted a multi-herbal formulation herbs, because herbs contain all the 5 elements of the earth. Hava, mitti, pani, surya, akash. That is what is the philosophy of yoga, naturopathy as well, and everybody knows it. Nobody can contradict it. So once we take all the 5 elements inside in a particular quantity in our body, the immunity level becomes high and it remains high. Once we keep away all these good things from us, then definitely the immunity level will go down and we can be invaded by many type of pathogens causing disease process. And this is happening in the case of COVID-19 as well. So my advice is to take lots of fruits, lots of vegetables, uh, and then herbs in the natural form if it is possible. Like I'll give some list of
And one thing I observed during my 40 years of research in the naturopathy system, that in a very difficult disease, no single herb is completely able to control the disease. There is a need of multi-herb formulation. Like people say ashwagandha. Yes, ashwagandha is good for raising immune level, but only ashwagandha will fight COVID-19 or any other disease. No, it's not that. You have to combine with others. Now, specifically, I come to in this disease when the symptoms level, when the symptoms start, that means गले में खराश है, सूखी खांसी आ रही है, नाक से पानी बहने लगा. So that the infection starts from nasopharyngeal level. So you can attack the at the nasopharyngeal level only. We are taking some steam inhalation containing dalchini, badi ilachi, tulsi. All these things boil and get the steam inhalation 2 times a day. Initial stages, it will control the congestion and make the breathing easy. Now, for throat irritation, you can take mulethi and kulanjan. Very few people know what kulanjan is. It is also a woody herb like mulethi, and the combination gives very fast relief to throat infection and relieve the symptoms. So if in the initial stages we catch these viruses, definitely I think the virus will not go down deep in the lower respiratory tract. The dalchini itself is vasculodilator also, vasodilators also. So that is helpful. That's why it is recommended in heart cases also. So as I have heard from an article by some scientists from America, that there is a coagulation of blood in different veins and arteries. So it can be prevented. So these are all, nobody knows the specific treatment. I am just guessing because my formulation itself is based on immunomodulation and detoxification. So other diseases can also be controlled this way. And now the impact of, I'm not going through very detail because of limited time. So this is the aspect of impact of COVID-19 on health. Health is definitely going down. We are our now. If I am not suffering from COVID, or I am not having a virus inside my bloodstream, but still I am worried. So I am not very healthy. So it has impacted my health because I am tense. Oh, ऐसा ना हो मैं बाहर जरा सा निकलूं और निकल मुझको वायरस पकड़ ले. So this is happening. So we have to cope with, because tension also leads to lowering of the immune system. So how it is directly and how it is indirectly affecting, it is affecting overall health of individuals, overall health of society as a whole. Now, impact of this disease pandemic is on education. Now, when we attend the institution, when we study in an institution, whether it is a primary school or is a higher secondary school or a college level or a university, what we find is an academic atmosphere everywhere in that campus. The air is academic, the talk is academic, whether we are criticizing some professor or teacher, or we are appreciating, or we are talking ourselves about some topic. So there is a complete environment of academia. Academic environment is there. So when we are advised to give to take education on online, so that atmosphere is lacking. So when that atmosphere is lacking, then that means that the
focus of the mind is not there. The other factors of the academic and environmental environments are missing. So definitely it has impacted adversely the education also. So we cannot give quality education all the time through this video conferencing or whatever you say, digitalization. Yes, for the time being, if there is nothing, something is better. So that is all right. But it is not a permanent solution as far as education is concerned. So this is what I want to say. I don't want to go take much of the time because many of these speakers are there, and I have heard. I am so thankful for the my predecessors who spoke very good things, and I have learned many things. And I am especially thankful to Dr. Rajiv Mishra, the organizing secretary, who especially invited me and asked me to attend this uh, webinar. And thank you so much. Thank you so much, sir. Your session was indeed very informative. Moving on to our next speaker, I'm glad to invite Dr. Shalini Srivastava, ma'am, Senior Dietitian, KGMU Lucknow, to deliver her talk. Hello, everyone. Am I audible, sir? Hello. Hello, sir. Am I audible to everyone? Hello. Hello, everyone. Ma'am, you are audible. Okay, thank you. Hello, everyone. Myself, Dr. Shalini Srivastava, Senior Dietitian at Department of Internal Medicine, as well as working with Infectious Disease Hospital currently and Corona Control Room, King George Medical University. I am senior dietitian over here and practicing for more than 20 years. Today, I would like to talk about nutritional preventive measures against novel coronavirus disease 19. It's a new disease we all know, so and diagnosed in 2019. So it is entitled as novel coronavirus disease. Its effect on health as well as nutrition education. In our institute, we are at a higher institute who is providing tertiary care services along with the educational part in the King George Medical University, which affects our health as well as the education to our forthcoming fraternity. No doubt, it's a big lacuna in teaching. Classroom is a must for effective and vigilant teaching. Sometimes, as we all know, we are attending webinars, but log on, but doing other works also. So, in this situation, our focus is less on it. So, in the classroom, what happens? We interact with one-to-one people, which is the utmost important thing, not the alternate, I must say. But yes, we are trying our 100%, even I must say more than 100%. If daily we are attending 1 to 2 or more than 2 webinars, they are trying hard to educate the people about each and every vertical of health. In the aspect of patient health, public health, our healthcare professionals' health, doctors' health, and the public who are sitting at their homes, locked in their houses after opening the lockdown also. And even we are trying to educate the people who are just roaming here and there and enjoying the unlock. So one-to-one diet counseling and specialized personalized diet schedule is an effective nutrition tool for optimum result, I must say, because that is a completely different when we talk to our patient, get the
accurate problems from them, listening to them, then we are more able to help them to cope up their disease and give them a specialist and personalized plan. So now in current situation, what we are doing using telemedicine for diagnosing, tried to make it up with along with sample menu plans for different diseases, which are sample menu plan, but for individualized diet counseling, I have put my number as well as my WhatsApp number as well as my email ID. And those people who are connected via group chats, via WhatsApp groups, after these things, so that most of the people get benefit of health, get benefit of nutrition. Proper nutrition is the key to be strong, but it's not a key to fight with corona. Yes, if our immunity is strong, we are taking balanced diet. It is real truth that we can fight it. So many patients are getting much better even in the smaller period of time, smaller span of time, and relief from the hospitals, which is a big achievement because hospital stay itself is a stress-inducing, affecting health, cost, bed occupancy, and so on. Nutrition education, what I am doing for education to my students who are coming to attend the classes over here, currently not coming, but previously, we are trying to talk about the medical nutrition therapy via telemedicine, via short videos, via radio talk for the public, and other common people. Nutrition education articles via print media using Facebook, using social media, WhatsApp, and newspapers like Dainik Jagran and other newspapers also. And the thing is just to educate each and every, not only immunity about the immunity enhancers along with the balanced diet, which is the basic of everything, I must say, because when we talk about the basic needs, roti is the first thing. It comes in our mind, roti kapda aur makan. Then the other things come in the line. So our basic need is a proper nutrition. Medical nutrition therapy for healthcare professionals. When we talk about the healthcare professionals, our Ministry of Ayush, Food Security and Safety of India, our government of India are so many things are working on it and giving just basic additions to your regular diet, which are common. Everybody knows about it. I would just like to read it. Lukewarm water, herbal tea, green tea, or kadha wali chai. Golden milk using turmeric. Fresh fruits and vegetables, seasonal. Whatever seasonal fresh fruits are coming, vegetables, soaked and sprout pulses. For example, moong dal and whole pulses, chana, etc. Increased intake of fluids. These are the basic things we kept in mind just to prevent the infection. If uh, we are working in our hospitals and we are advised also to take a good breakfast and in between just to prevent the nosocomial infection in previous days. So now in these days, as you all know, it's the throat is the first thing we grasp is throat infection. The minor infection, if we get, it could be flushed off, and if the infection quantity and the virus quantity is higher, then definitely we need to go to for other. And in if you get infected, no doubt, no diet can prevent you, but yes, we can recover fast. Balanced diet along with immunity boosters. These are the things very much very earlier started when we received first patient in our OPD in the month of March. They especially designed for a large number of working people. So keeping in mind, it should be a balanced diet, including 5 food groups. I mean to say, energy giving foods, protein giving foods, and vitamins, fibers, and antibiotics and probiotics. The food must be locally available
we cannot talk about hypothetical. These things must be the scope. Every food is having different quality, different nature, and the main thing. And as well as the cost effectiveness must be kept in the mind, because locally, why locally available food products? We must go for local food, as these are locally available, free available, and low cost, as well as the fresh. This is the most important thing. And the familiar, as you all know, and it's well said by all, food is token of love, and it should, and the eating habits are very different. We cannot introduce a new food product. The person could be allergic of it. When we take a diet history to a patient, when we go right back, there is a very much need to know if there is any allergy of any food item which is known. So introduction of a newer food or adding in a big quantity, in a major quantity, in milligrams or in grams, it could be a reason for allergic reactions also. Every person is different and they are having a different genome. So the, as per our Indian climate, the food must be the familiar food, which are easily available at our home, and we are using it on the regular basis, or our parents are using it, and in our family somehow we use it. So I just went for familiar food like adrak and tulsi. Every family is having these things. So addition of herbal tea, which is converted into kadha wali chai using the Indian spices, dalchini, kali mirch, long, and adrak, tulsi, nimbu, and the basic of it is like herbal tea, or it could be a lemon tea, added sugar if required, or it could be replaced with jaggery, I mean to say good, which is easily available, as well as we are familiar with this. In, maybe in today's scenario, in today's nowadays, we are not eating, but in our childhood, we are familiar with this, and somehow we eat it. That is why the familiar foods are very much important. Another thing, promoting homemade simple food, as you all know, during the lockdown period, and people are stressed, as well as so many healthcare workers are coming to their duties, having less time to spend for cooking. So it's very much important कि आप simple food को ही थोड़ा modify करके उन्हें nourishing बनाएं, और इस चीज को जरूर से ध्यान दें कि जो रेगुलर बेसिस पर चीजें हम लोग ले रहे हैं उन्हें सरल तरीके से बनाया जा सके, ज्यादा देर हम उन्हें रख सकें, अपने साथ टिफिन में कैरी कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि उन्हें बनाते समय हमें कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज करें, जैसे कि अभी सिंगल पॉट में भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि एक ही बर्तन में कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि कई सारे चीजों को ऐड कर सके और हम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स को पा सकें। And I used to promote, I used to request my all healthcare workers, my doctors, my VIP patients, and when we were doing OPDs, I used to request all the people who are coming to me, just bring your tiffin, whatever is possible. Like if you can bring a small tiffin, it's fine. Make 2-3 tiffins, small tiffins, so that once in a time in between, whenever you are hungry, you can have it. I remember when we were running our OPD in medicine department, the diabetic patients were coming, and they are coming with in a fasting condition, just to get their RB fasting blood sugar level to be done. So we request them just to bring your tiffin so that you can have it when you get your test done. In case you, if somehow or any XYZ we get we are waiting for a long time, you just use your tiffin. That is very much easy, and via this way you need not to run here and there, and you will get a proper meal, the basic thing. In current scenario, what I promoted to bring tiffin,
5 boxes tiffin with 2 small bottle, 2-liter water bottle, as well as a tea thermos. 2 water bottle, in which one of them I used to recommend. One bottle is of plain water bottle, clear and hygienic water, as well as one bottle of lemon juice water, in which just pour a half lemon and just have it in your daytime, so that it's a quite refreshing, and the natural source of vitamin C, which is a lemon, can be used in day to day, and along with the tea thermos, in which I recommended just a small thermos, in which we are having it, I titled it as a Kadha Wali Chai, and I found it very much useful. And many healthcare professionals come to me and shown their thermos via pics, and coming to some other people, and they are discussing and just sharing with me, yes, I am using this thing. So it's a big deal. Another thing we added, adrak is very much important, and raw food products like lasun and hari milk is also a good source of vitamin C. So using salad, but in a steamed form. This is a sample menu plan for healthcare professional. I am really thankful to my head of the department, Dr. Vivek Datanka, as well as in charge of infectious disease hospital, Dr. D. Himanshu, who requested for this thing to make a diet plan for healthcare workers, those who are working, and what they must eat. Everybody knows we are having a good food, and a little bit of information is with everything. Nowadays, we are getting so much of information from here and there, so we get some pictures see what to do. But I would like to request all the speakers go for a qualified diet. Because that and ethical superfoods talk didn't work. They are just good to share, but they didn't work. For this thing, I would like to request all of you just follow a balanced diet, which includes fresh fruits and vegetables, pulses, अनाज जिन्हें हम लोग कहते हैं, हमारे देसी जो ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे सालों साल से हम लोग खाते आ रहे हैं, और जिन्हें जो इस कैटेगरी में आते हैं, डॉक्टर शालिनी मैम, हम लोग सालों साल से खाते आ रहे हैं. डॉक्टर शालिनी मैम, मैम your voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. Can you please be just little loud? I will try to be louder. It's fine? Yes, ma'am. Now it's much better. Hello? Hello? Yes, ma'am. It's much better now. Okay. So, okay. I will keep my mind closer to me. I'm talking about the balanced diet. Balanced diet का मतलब है कि आपके खाने में दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, यानी कि जो चीजें हमें प्रोटीन देते हैं, वो दूध से प्रोडक्ट में, जैसे इडली हम लोग कहेंगे ले सकते हैं, पूरा दूध जरूर लीजिए सुबह शाम, और उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर ऐड करिए. का दूसरा पार्ट आता है एनर्जी गिविंग फूड, में हम अनाज केला जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने अक्सर ही टीवी पर, अक्सर ही प्रोग्राम्स में और भारत सरकार द्वारा चलाए गए ईट राइट इंडिया कैंपेन के द्वारा भी सुना होगा कि आज से थोड़ा कम, यानी कि हमें अपने खाने में और शुगर क्वांटिटी कम रखने की जरूरत है, सो दैट कि हम लोग एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन ना कर लें. तो थोड़ा कम हमारे रहता है, खाने में थोड़ा तेल, थोड़ा नमक कम, और खाने में थोड़ा शक्कर कम. तो ये जो चीजें हैं ये आपको फैट बढ़ने नहीं देते हैं. और
है विटामिन हमारी इम्यूनिटी इनहेंस करने में बहुत ही अच्छा पाया गया है। मौसमी संतरा, और ये तो मैं पाती हूँ कि बड़ा साफ सुथरा अपनी कवर के साथ है, हम लोग उसे रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं प्रॉपरली हैंड वॉश करके। जब भी मौके भी अच्छा सही नहीं, इसमें नेचुरल विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को और तो जैसा कि आप इस डाइट प्लान में भी देखेंगे, मैंने ऑप्शन दिया है कि एक फल संतरा या अन्य तो संतरा या मूंगफली यूज करिए। जैसे मैंने बताया कि मैं बोतल की प्रमोट करती हूँ कि आप अपनी बोतल में आधी नींबू जोड़कर ले आइए और उसे दिन भर या बीच में पानी पिए तो उसे यूज कर सकते हैं। This diet plan is covering all the 5 food groups, including prebiotics and probiotics. Prebiotics and probiotics मतलब कि फाइबर और जिनमें की नेचुरल बैक्टीरिया जो कि हमारी ब्लड की हमारी इम्यूनिटी इनहेंस करेगी थोड़ा होता है। इट मैटर्स अ लॉट। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है वो आपके ब्रेन को भी गवर्न करता है। तो आपका जो गट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे अच्छा रखने के लिए दोनों ही काम करते हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे क्लीन हो, कैसे डिटॉक्सिफाई हो, मतलब कि कैसे हम उसे साफ सुथरा बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि रेशेदार फल, मोटे अनाज, अंकुरित दालें और दही या मटन में एक दोपहर के समय में जरूर यूज करिए। और दूसरी चीज है कि अगर दालों को भिगा कर खाते हैं तो बहुत अच्छी इसमें एक क्वालिटी ये है तो ये बहुत अच्छा है कि जब हम लोग यूज करते हैं दाल को, अंकुरित दालों को अंगूर सबसे जिससे मैं भेल की तरह बनाने की एडवाइस देती हूँ कि आप इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। फाइबर्स का भी, प्रोटीन्स का भी, मिनरल्स का भी और प्रीबायोटिक्स का भी। और जब हम लोग इसकी सोकिंग करते हैं तो अच्छी बात यह है कि सोकिंग करते हैं उपलब्ध होते हैं, जो पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं वो अपने बाउंड फॉर्म से ओपन हो जाते हैं और इनकी बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी यानी कि हमारे शरीर को उपलब्ध होने अच्छी चीज ये है कि इसमें ना ही कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं हो, बहुत कुकिंग करनी है, कुकिंग कर लेनी है रात में ध्यान रखते हुए। और मैं आप लोगों से चाहूंगी ध्यान रखते हुए कैसे कि अपने घर में जरूर एक चेक बना करके रखिए कि मुझे क्या क्या चीजें, जैसे डाइट प्लान को मैं अक्सर बोला करती थी कि आप अपने घर में सामने किचन की दीवार में जरूर पेस्ट कीजिए सो दैट यू विल read it and then you will be like reminded how what to take right now and what must be taken and what I replace so that we can तो आप इसे रात में भिगा दीजिए। और अगर आपके लिए थोड़ा सा सरल है तो जैसे मैं करती हूँ कि अंकुरित मूंग, चना और मूंगफली तीनों को एक साथ भिगा देती हूँ और सुबह उसका पानी निकाल कर और वॉश करके हल्का सा स्टीम कर दीजिए। इन करंट सिनेरियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दिस तो दैट कि इसका भाप आने से जो इनको इसकी सरलता है बढ़ चबाकर खाने अगर कोई भी तकलीफ है जैसे कि ओल्ड एज पीपल, तो मैं उनसे कहूँगी बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है मुंह, आप आराम से इसे खा सकते हैं। इट्स अ गुड इम्यूनिटी just in one bowl you are having so many nutrients completing hydration यानी पानी नींबू का पानी गर्मियों में तो मैं कहूँगी दोपहर के समय में आप शिकंजी लेते हैं, आप अपने
हर्बल टी या मेरी मैं कहूँगी काढ़ा वाली चाय लेते रहिए। और दूसरी चीज आती है कि फिर हम लोग जो हम के साथ में दली उबाल सकते हैं, ये चीजें अलग से बनना संभव नहीं है। अपनी रोटी और हरी सब्जी भी खाते हैं और उसके साथ में एक कप या पनीर या इसके साथ में अपने हॉस्टल आइए। शालिनी मैम, अगर आपकी रोटेशन शालिनी मैम, yes, मैम आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। आप प्लीज अपना माइक थोड़ा अपने पास रख लें। अभी क्लियर आ रही है? मैम नहीं। हेलो, यस मैम। मैम बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। लेट मी चेक। Hello, now it's audible? Yes ma'am, it is much better. Okay, thank you. It must be hydrating, यानी कि आपको पूरे दिन भर में कम से कम 2 से 3 बात आती है कि हमारी भोजन की थाली कैसा होना चाहिए। जैसा कि नॉर्थ इंडियन डाइट हमारी जो है, ये सभी डाइट में कहा जाता है क्योंकि इसमें अनाज है, दाल है, हरी सब्जी है, सलाद है और 1 कप दही या रायता या मट्ठा या आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभी हम लोग जैसे मीठी खीर भी या कुछ डिजर्ट्स में स्वीट्स भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि छेना। और इसके साथ में आता है अगर आप चाहते हैं तो चावल भी ले सकते हैं। चावल मैं कहूँगी कि जिनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर हम लोग चावल को बदनाम करते हैं कि नहीं चावल नहीं खाना है, लेकिन चावल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सोडियम में बहुत कम होता है। तो अगर आप हाइपरटेंसिव है और आपको स्ट्रेस रह रहा है, या मैं कहूँगी थोड़ा सा ये एक सात्विक भोजन का भी पार्ट है, तो आपको थोड़ा चावल जरूर लेना चाहिए और उसको रिप्लेस करते हैं रोटी से। तो आप 1 रोटी और थोड़ा चावल साथ में जरूर ले सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि अक्सर हम लोग जो है ना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ऑल्टरनेट उसका क्या है कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी जैसे शाम के समय या बीच में कभी कभी भूख नहीं लगी होती लेकिन कुछ खाने का मन करता है, तो उस समय पर भुना लिया चना है ले सकते हैं और 1 कप चाय ले सकते हैं। इसी तरीके से रात का खाना, लेकिन मैं रात के खाने में चावल और दही का उपयोग मना करती हूँ, जैसा कि सैंपल मनी प्लान में भी किया गया है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। तो अगर बात पित्त और कफ जो डिजीजेस का डिस्क्रिप्शन किया गया उस हिसाब से देखा जाए, तो जिन लोगों को बात की प्रॉब्लम अधिक होती है, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन जिसमें कि म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अवॉइड इन द नाइट ऑल्सो। सोते समय 1 ग्लास गुनगुना, और उसे जब बनाते हैं गुनगुना करते हैं गर्म करते समय, बॉईल करते समय उसमें हल्दी डाल दीजिए। तो आधा चम्मच हल्दी के साथ बॉईल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली की है कि अगर आपको पहले कभी कोई भी बीमारी रही है या आप इस समय भी किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसके लिए आपको पहले से जो एहतियात या परहेज बताए गए हैं उनका जरूर पालन करें। जैसे कि अगर आप डायबिटीज हैं तो ऑब्वियसली आपको मिठाइयाँ नहीं खानी है, ऐसा नहीं कि बीच स्किप कर दिया ये चीजें, या पहले से आपको किडनी प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको बताया गया है कि आपको मूंगफली नहीं खाना है या नींबू पानी नहीं पीना है, तो उस चीज का फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। दिस इज फॉर अ बेसिक डाइट प्लान, it's a sample menu plan, it's not a personalized diet plan, so these things must be taken care. Medical nutrition therapy for covid positive patient, कोई भी डिजीज है लेकिन हमारा जो बेसिक है इंडियन प्लेट है वही बेस्ट प्लेट है। अगर पेशेंट कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है तो आराम से इन चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं विद रेगुलर किचन डाइट। आई स्टार्टेड विद रेगुलर किचन डाइट
including 2 major meals and 2 minor meals, along with 2 times milk or milk alternatives, along with lukewarm water. I use plate method, which is suggested by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and Eat Right India campaign by Food Safety and Security Authority of India, which included anaj or dale in sufficient quantity, फैट और शुगर्स और सॉल्ट वाली चीज़ों को कम से कम लेना है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वाली चीज़ों की सर्विंग्स कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। यदि आप अंडा मांस मछली खाते हैं तो उसे अच्छी तरीके से कुक करके ही खाया जाए, बट प्रेफरेबली इस समय पर मांस मछली या दूसरे मीट मना किया है, सिर्फ बॉइल्ड एग अलाउ किया गया है कि आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। और फल और सब्जियों को अच्छी मात्रा में, यानी कि कम से कम 3 से 4 बार, 3 से 4 सर्विंग, यानी कि अगर आप 2 समय हरी सब्जी और दोनों समय सलाद खा रहे हैं और एक समय सुबह के ब्रेकफास्ट में, जैसे मैंने कहा, अंकुरित मूंग के साथ आप बाकी चीजें मिलाकर ले रहे हैं, तो वो काफी है। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको भरपूर मात्रा में पानी दे रहना है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होती है। आपकी करंट जो भी इम्यूनिटी लेवल है उसको आप इनहेंस, उसे आप बढ़ा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को और बेटर कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। और उसके साथ साथ गार्गल करना, कुछ चीजें मैं हमेशा परहेज के लिए हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो सभी के लिए हैं और इस समय पर तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, सॉल्ट, शुगर एंड फैट मेड फूड्स, market made foods, preserved and canned foods, junk food, fried foods, leftover foods, and if there is any previous illness, follow the restrictions as advised. मैं यहाँ पर एक चीज में जरूर फोकस करना चाहूंगी, प्रिजर्व्ड एंड कैंड फूड, जितने भी प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, जो मार्केट मेड प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स का ऐड किया जाता है जो कि केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने में बहुत बहुत रोल प्ले करते हैं। एक चीज मैंने इसमें मेंशन करना आई मस्ट से कि रह गया है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत डाउन करता है, इसलिए अल्कोहल का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अल्कोहल का उपयोग ना ही किया जाए। दूसरी चीज ये आती है कि जो आप मार्केट मेड फूड्स लेते हैं, उन फूड प्रोडक्ट्स में के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इन्फेक्शन भी ग्रास्प कर लेते हैं, तो फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। खरीदते समय उसे लाने के बाद प्रॉपर क्लीनिंग के लिए आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर, जो भी आप फूड प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल्स या सब्जियां लेकर आ रहे हैं उन्हें एक बाल्टी में डाल दीजिए, उसमें गर्म पानी थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा नमक मिला करके सारी सब्जियों को उसमें 30 मिनट्स के लिए डिप कर दीजिए और उन्हें 30 मिनट्स के बाद निकाल करके प्लेन वाटर से वॉश करके आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इवन आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में अगर आप गर्म पानी या सिरके का पानी या आपके पास में इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते, 0.2% solution of soap water could be made and washed with it, and it could be thoroughly washed with plain water, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अगर आप 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम साबुन पानी का घोल बना लें 1 लीटर पानी में, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद सादे रनिंग वाटर में नल के पानी से, साफ नल के पानी से धुल करके आप सेफली अपने फूड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि जो पैक्ड फूड हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं उन्हें कैसे साफ कर सकते हैं। उन्हें साफ करने का तरीका ये है कि अगर पैकेट को ऊपरी सतह पर किसी भी एक कपड़े में हल्का साबुन लगाइए और उस पूरे पैकेट को उस साबुन के उससे वॉश कर दीजिए, जिस तरीके से हम लोग अपने हाथों को करते हैं, और फिर उसके बाद उसे साफ पानी से धो लीजिए। जैसे कि पैकेट वाला दूध, फोर्टिफाइड दूध हम लोग लेते हैं, या दूसरी ऐसी चीजें जो पैक्ड आती हैं, क्योंकि उसकी ऊपरी सतह पर हो सकता है कि वायरस वहां पर हो, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस समय
पर वायरस हैंड हाइजीन के साथ साथ आप जो चीजें खरीद के ला रहे हैं कपड़े के थैले में लाइए और ला करके उन्हें प्रॉपरली वॉश कर लीजिए और उस कपड़े के थैले को भी वॉश कर लीजिए। तो ये जो स्टेप है यानी कि आपको फूड सेफ्टी की इस चेन को पूरा मेंटेन रखने की जरूरत है और इस तरीके से आप अपने फूड को सेफली यूज कर सकते हैं, सेफली एंजॉय कर सकते हैं और आप उसे डे टू डे बेसिस पर यूज कर सकते हैं। Nutrition education. Now we come to nutrition education part. How I did it? I did it via using telemedicine, via group chat, via different news articles circulating to my all known numbers, all my WhatsApp groups, and requested them just to pass on to all. This is just an example. The very first radio talk which I given to All India Radio was on 27th March. Secondly, then we designed a sample menu plan and it's rotated to all as well as to the different departments via manual circular, via print media circular. This is just an example of nutrition education. Yesterday was a food safety day. So this is just a part of my article for to improving the immunity system via fresh fruits and nutritious foods, fresh and nutritious foods, and how we use it via social media, via YouTube, making short videos of approximately 1 to 3 minutes of via Telegram, via Facebook, via WhatsApp chat, group chat, etc., and via telemedicine. For the as I told about you, I'm working in the Department of Internal Medicine. So when we get a reference, we use the we used to get the reports on WhatsApp. We talk to the patient as and when possible, or talk to the doctor. What is the requirement? What are the current medical reports? What are the clinical reports? What are the biochemical reports? And then we advise as per the disease condition, or if it is required, we have a sample menu plan for normal people. And if there is a need of doing in severe cases and for rice tube feeding, so as you all, we are having limited uh, facilities, though we are in a big institute, in a tertiary care institute, in a medical university, but we have to use in a very judicial manner. So the people who are working with the COVID positive patients, we just advise them and we just followed the diet plan via telephonically counseling. So thank you all. And with this thing, I would like to request all of you just follow the social distancing norms, which is actually physical distancing, not the social distancing. Use mask. Thank you so much, ma'am, for this wonderful presentation. Now, I will request Dr. Kamakhya Kumar, sir, Associate Professor and HOD, Department of Yoga, Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar, Regular hand washing. to deliver his talk. Sir, please. Namaskar. Thank you. First and foremost, I would like to thank the convener, Dr. R.N. Singh ji, and the organizing secretary, Dr. Rajiv Misra ji, for giving me the opportunity to deliver my talk in this webinar. Please provide me the authority to share my slides. And being a dietitian and as a
Dr. Kamakhya Kumar, sir. Yes, I'm just trying Okay. to share my slides. I think it's sorry, I'm not able to share my slides. So I continue with my own presentation. First and foremost, I would like to chant the Gayatri Mantra. Anyone can chant. Please chant with me. भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. The today's topic of my discussion is role of yoga to boost immunity. In this presentation, I have 5 points to be discussed. Introduction to yoga, what is immunity, immunity and its relation with stress and the anti-stress mechanism of yoga. Then the conclusion. So, yoga is enjoying growing population in Western community. Most of us are aware of that. A quick review of New England Holistic Health Directory shows that yoga classes are being offered at every area. Stress reduction is one of the most precious things in the area of yogic management and yoga therapy. So, if you go through the definition of yoga, as explained by Maharishi Patanjali, it says, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga is nothing but the stopping the fluctuation of mind. And if we just stop our fluctuations, we are more focused, we can be more focused on the part we wish to focus. So, for the beginners, it is Ashtanga Yoga to be practiced, and for the advanced practitioners, it is Kriya Yoga. But I'm coming to the point, as Lord Krishna has given, Buddhiyukto jahati hai ubhe sukrite duskrite tasmat yoga yujasva yoga karmasu kaushalam. Action with perfection without expectation. Nowadays, it is very difficult to perform any action without expectation. One who prudently practices the science of work without attachment can get rid of both good and bad reactions. So life becomes more easier to be performed and more easier to be stay with this situation. Now coming to the point, what is immunity? Immunity is the capability of multicellular organism to resist harmful microorganisms from entering into it. Immunity involves both specific and non-specific components. The non-specific components acts as तो आपने तो बताया था मुझे eliminations of a wide range of pathogens irrespective of their antigenic makeup. Immunity is the balanced state of multicellular organism having adequate biological defense to fight infection. So you all are medical practitioners and either the seekers of medical colleges. So, immunity is of two types. One is humoral and second is cellular. Humoral can be transferred with infusion or plasma, and cellular cannot be transferred. So, humoral immunity depends upon the presence of antibodies which are contained in the gamma globulin vectors of the blood plasma
And cellular immunity depends upon the general health of all the cells in the body. What determines the immunity is hemoglobin, immunoglobulin, and particularly the alpha, beta, and gamma, which is very much relevant with the antibodies. And the third thing is vitamins. As Dr. Salli was discussing all such points, the diet and the minerals, vitamins we required for the immunity, and it was a very nice talk as I heard it. So how can we measure the immunity? It's just measure our level of hemoglobin, serum protein by electrophoresis, especially total gamma globulin, IgM and IgG. Then we can also measure the vitamin A, vitamin D, serum iron, and serum zinc level. So what makes the immunity system weak is dietary deficiency of protein, vitamin A, vitamin D, vitamin B complex, iron, and zinc, and lack of physical activities, which is my part of concern. Lack of relaxation, and third thing is stress due to heavy stress. So if we lose immunity, there are 4 points only. First is dietary deficiency of several things, as I mentioned. Then second is lack of physical activities, lack of relaxation, that means exertion, and fourth one is stress. These all three parts, the last three parts are of my concern, that is you. So if we just try to improve our physical activities, or if we just try to relax for a better moment, there is only way, and I think that this is the easier way to enter into the practice of yoga. Immunity and its connection to stress. Actually, third point is stress, and it should be discussed actually. So stress may be largest factor in determining our illness. When we become stressed, our immunity system becomes less. So the stress hormones, particularly the corticosteroid, decreases, even suppress the immunity system by lowering the number of lymphocytes. So there are several studies done by the experts in medical field as well as in the area of yoga. Those who express that stress is very much related with our immunity. Whenever our stress increases, the immunity goes down. So make even BS and study done by the other scientists proves that stress may be very difficult to improve our immunity. And there is another study for Solomon GF that shows that stress is associated with the increased latent viral reactions, upper respiratory tract infections, and wound healing time, indicates that stress causes significant immune response dysfunction. So what we need to do is deep breathing and the rest. Deep breathing, the longer you exhale, the more signals your brain receives to initiate the parasympathetic nervous system, the calm brain response. So that's why the practice of Kapalbhati is very much useful. When the calm brain is turned on, the stress response is turned off. This causes the heart rate and blood pressure to lower. There are a couple of ways to turn on the calm brain, so the breath. A second one is rest. See, sleep or rest cannot be underestimated. When you sleep, your immune system releases protein that helps you
your sleep and fight infections. Actually, rest or sleep is not the wastage of time. It is the requirement of our human biology or particularly the immunity. So relaxation, particularly if you practice yoga nidra, is very much useful. So I would suggest three parts. For the deep breathing, you need maximum exhalation, and that is Kapalbhati. For deep breathing, you practice pranayama, and for the relaxation, you practice yoga nidra. So three things would be suggested in the primary part of my presentation. Later, I will discuss other points also. So there is a study by Abdo A.M. et al. And he says the first evaluated the effect of GABA intake by 13 subjects of their brain waves. Electroencephalogram were obtained, 3 tests, and each volunteer follows intake only after GABA. And the findings denoted that GABA not only induces relaxation but also reduces the anxiety, one of the most risk factors for the immunity. And second thing, the second study was conducted by the same author, and he observed that the GABA group would effectively as a natural relaxant, and the affected could be seen within 1 hour, and its administration or induces relaxation and diminish anxiety. So the anti-stress mechanism of yoga is there is a preliminary evidence that relaxation therapy may influences endocrinal functions and counterbalance stress-induced endocrinal changes. Stress mechanism is required for the students to decrease depression and anxiety and to improve sensitivity towards themselves, peer and parents. So there are another studies proves them at the Gallois PH and White House. So another anti-stress mechanism studied by me in the year 2007, effect of yoga nidra on ESR level, erythrocyte sedimentation rate, and effect of yoga nidra on our hemoglobin and total leukocyte counts. So if we just relax for a moment for a half an hour daily, so your that is reported in the year 2007 and 2013. So effect of yoga nidra or relaxation improves our total leukocyte counts and the hemoglobin of the practitioners, and it also increases our immunity, like it reduces our pulse rate, respiration rate, blood pressure, and galvanic skin response. Four parameters have been observed for 60 days practice of relaxation or yoga relaxation technique. So the buffering effect of yoga on stress induces decrease in the cellular immunity, maybe due to its ameliorating action of HPA, creating an optimized secretion of cortisol. Yoga also restores the autonomic reflex regulatory mechanism, creating a balance between sympathetic and parasympathetic links in the presence of a stressor, which probably prevents the impairment of cell-mediated immunity as reflected in IFNY levels. So the practices which improves our immunity or to protect ourselves from the pandemic, the practices are
Surya Namaskar, Nari Sudhan Pranayam, and Savita Dhyan. Savita Dhyan is meditating on the rising sun. Surya Namaskar is a posture selection of 12 postures together, and it is very much systematic one by one. So it is a systematic practice of yoga asana. 12 postures are there, and studies proves that practice of Surya Namaskar, Nadi Shodhan, and Savita Dhyan improves our immunity, as well as practices of Kapalbhati and relaxation are very much useful in the improvement of relaxation, in the improvement of immunity. So relaxation helps lower stress hormone that compromise the immune system while also conditioning the lymphatic system of our toxins from the body and bringing oxygenated blood to the various organs to ensure their optimal function. Yoga is probably the best known technique of relaxation, hence there is a strong connection between yoga and developing the immunity itself. So that's it from my side. Thank you very much, the organizers and the convener, particularly Dr. R.N. Organizing Secretary, Dr. Rajiv Misra ji. I am also thankful to the whole team of the organizing committee and thankfully depart from this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for this wonderful information. Now I will request Dr. Yashwant Singh, sir, ex-principal, Kamla Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, to deliver his talk. Thank you. Respected organizing secretary and all the participants, especially Dr. Ram Singh, Sir, who have invited to Dr. Yashwant, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज लाउड नहीं है. आवाज नहीं आ रही है. Sir, it's not loud and audible. Hello. Hello. Yes, sir, it's much better. Yes, sir, अब आ रही है. Hello, आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है. हाँ. Respected organizing secretary and all the participants, especially Dr. Ram Singh, who have invited today. हमारे आपके यहाँ एक कहावत है, तंदुरुस्ती लाख नियामत. हेल्थ इज वेल्थ. और उसी स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है. World Health Organization itself has declared global health emergency due to the incurable disease caused by the COVID-19 pandemic. Undoubtedly, it has local and global effects. It has affected the life, lived and health of the entire humanity worldwide. हम मानते हैं किसी में लॉ का स्टूडेंट हूँ, वो भी इंटरनेशनल लॉ में हूँ, तो मैं उसी संदर्भ में जाऊंगा. So nowadays the World Health Organization is there in a small city about it. But previously it didn't take the disease seriously. So seriously as it was required by it. Instead of repeated information and ultimatum given by USA, WHO didn't take the matter seriously. नवंबर दिसंबर 2019 से ही
चाइना में लोग मास्क पहन करके टहलना शुरू किए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते यहाँ पर 5,000 लोग काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी। जिम्मेदारी बनती थी WHO की, पता करते कि ऐसा क्या हो गया, जरूर महसूस किया जाना चाहिए था। इट इज मैटर ऑफ एन इंक्वायरी, देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग अबाउट द हेल्थ। इन्होंने कुछ नहीं पता किया, चाइना ने स्वयं सूचना दिया कि हमारे यहाँ एक स्पेशल टाइप का निमोनिया हो गया। कहता है चाइना कि किसी लैब में एक्सपेरिमेंट के दरमियान ऐसा कुछ करेगा, नेचुरल इंसिडेंट है, चलो ये ही सही। लेकिन ये तो मानते हो कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई, इसे बताना चाहिए था आपको। आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टिंग करते रहे, इंटरनेशनल ट्रेड करते रहे, इस भयानक बीमारी के बारे में अच्छी तरह जानते हुए WHO को आपने इन्फॉर्म नहीं किया। आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, तो पावर आपके साथ है, आपने इस बात का जिम्मा लिया है कि दुनिया में कोई भय जैसी स्थिति नहीं पैदा होने पाएगी। इन जिम्मेदारियों से आप कैसे मुस्कुरा सकते? मानता हूं कि आज WHO बड़ा सीरियस हो गया है और उसने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कोलैबोरेशन से तकरीबन 100 डेवलपिंग स्टेट को 160 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विसेज। कहा WHO ने the patient should be taken carefully without discrimination. They are required full protection against any inhuman treatment and cruelty. अभी पिछले महीने के पहले सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली का 74वां अधिवेशन होगा। तमाम सजेशन आए, जैसे आज सजेशन आ रहे हैं, scientific cooperation and international medical cooperation regarding the manufacturing and distribution of antiviral vaccine, वैक्सीन बनाई जाए, प्रोडक्टिव इक्विपमेंट बनाया जाए, दुनिया भर की बातें हुई। तो सबसे बड़ी बात थी जनरल असेंबली ने जो कहा वो ये कि हेल्थ इज द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, therefore fundamental right of every individual residing on the territory, residing on this very earth. Health is the social, economic and cultural right. It is not set by the President of Assembly, General Assembly only. This very right has been declared by the Universal Declaration of Human Rights in its body. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कन्वेंशन हुआ था, बड़ा रक्तपात हुआ था, मानवता का बड़ा ह्रास हुआ था, तो उससे विचलित होकर के हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन किया था, तो मानव गौरव और गरिमा, लाइफ ऑफ लिबर्टी को अच्छो बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया था, प्रॉमिस किया था, प्रतिबद्धता जताई थी। फिर 1967 में कोवेनेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, फिर 19 प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, इसका कन्वेंशन का तमाम राइट रिकॉग्नाइज हुए थे। छोड़िए उनको, हमने स्वयं अपने भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में इसे स्वीकार किया। आर्टिकल 21 में माना राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। राइट ऑफ हेल्थ इज इनहेरेंट इन द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। जीने का अधिकार का मतलब भीख पीट करके जीना नहीं, जीने का अधिकार का मतलब स्वस्थ जीवन, तन और मन के स्वस्थ के साथ जीवन बसर करने की, गौरवपूर्ण जिंदगी बसर करने का अधिकार। हम इस पर नहीं जाते। कभी प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ, भूखे प्यासे गर्भवती पत्नी, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चों को लेकर के कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करने का हौसला लिए निकल पड़े। चलो ट्रेन से भी भेजे गए, कई घंटे की यात्रा थी, न भोजन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। उनके हेल्थ की केयर कौन करने वाला था, इस बात को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि तमाम बातें हो चुकी हैं, तमाम योजना। मैं एक बात आप चूंकि तमाम डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं ये कहता हूँ कि हेल्थ इज परमानेंट फंडामेंटल। अगर ये सही रिकॉग्नाइज राइट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, नेशनली रिकॉग्नाइज है, हमारे संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज है, इट इज इनेट राइट, नेचुरल राइट, राइट बाय बर्थ, ह्यूमन राइट, बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट, जो भी राइट कह दें, किस तरह का राइट है। सोचिए जब लॉकडाउन यहाँ डिक्लेयर हुआ इस देश में, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात चली, जब घर में रहने के लिए आदेशित किया गया, तो सभी हॉस्पिटल की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या गैर सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो क्लिनिक हो या कोई भी क्लिनिक। देखिए है ना, तुलसीदास ने लिखा है, जिसके पाँव लपटी बीमारी सोच रह जाने की बनाई। मैं स्वयं पेशेंट होने के नाते इस बात को रियलाइज किया, इसलिए मैं आपको तमाम डॉक्टर यहाँ बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। तो जितने भी ओपीडी में आपने कभी देखा है, एक एक जिले में हजार हजार लोग तमाम हॉस्पिटल सरकारी से लेकर गैर सरकारी में आते थे, उनका क्या हुआ? या तमाम और रोगी थे, उनका क्या हुआ? जैसे मैं स्वयं किडनी का पेशेंट, मैं पीजीआई में भी रहा, लीलावती में रहा, हर किशनबाग मामले में भी रहा, लेकिन मुझे फायदा हुआ। लखनऊ महासार नगर चौराहे के डॉक्टर आरटी लहंस के माध्यम से उनका दवाखाना बंद है, 3 महीने से बंद है। 10 दिन 15 दिन की कोशिश के बाद तो किसी तरह डेट मिलती थी, मुझे ही नहीं तमाम लोगों, जाने पर भी कई सैर लोग बैठे होते थे, सुबह गए शाम हो जाता था। इसी तरह से तमाम लखनऊ में डॉक्टर है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजी है, कोई यूरोलॉजी का है, कोई किसी का, कोई किसी का, सबके यहाँ इतनी भीड़ जुटती थी, सबके सब हॉस्पिटल बंद हो गए। उन रोगियों के बारे में क्या हुआ? वेदर दे हैव नॉट द फंडामेंटल राइट टू सेव देयर हेल्थ, उनका मौलिक अधिकार नहीं हुआ। मौलिक अधिकार से वो क्यों वंचित कर दिए गए? एक बात। दूसरी बात यह कि माना कि इस लॉकडाउन के चलते गोमती निर्मल हो गई, गंगा का पानी पवित्र हो गया, जमुना का पानी पवित्र हो गया, वायुमंडल प्रदूषण मुक्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो गई, हिमालय दूर दराज से दिखने लगा, 4 तारे चमकने, रात के अंधेरे में ज्यादा चमकने लगे। तो क्या ये कोरोना डिजीज के नाते और जितने रोग थे वो भी आदमियों की तरह दुम दबा करके कहीं गहरे जाकर नहीं छुप गए, किसी कमरा किसी गुफा में सभी लोग भाग गए, हर रोग तिरोहित हो गए? अगर ऐसा हुआ है केवल एक कोरोना के नाते रोग मुक्त हो गया, जैसे प्रदूषण मुक्त हो गया सब कुछ, यदि रोग मुक्त हो गया समाज का, तो चलो कोरोना का स्वागत करते। अन्यथा मैं इस पर भी गौर कीजिएगा कि ठीक है कोरोना है, लोगों ने तमाम बातें बता डाली, प्रिकॉशन की बातें कही, एक डाइट की बात कही ताकि इम्यूनिटी बढ़े। इस पर भी गौर कीजिएगा, जो डाइट बताई जा रही है ना, तो सेब संतरा मौसम्बी और हरी सब्जियां क्या क्या। मैं मानता हूं कि इस देश में दुनिया के जो 1000 अमीर हैं उसमें से 60 लोग इस हिंदुस्तान के, लेकिन 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपको जरूर पता होगा कि 14,000 किसानों ने पिछले वर्ष आत्महत्या, जरूर पता होगा कि भूख से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। करोड़ों ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जिंदगी नहीं बसर करते, बल्कि खाने के लाने हैं, भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो पौष्टिक भोजन कहाँ से लाए? कुछ ऐसा भी कहिए जो जब सामान्य के लिए, जो 60 करोड़ के लिए भी हो। आपने योग की बात कही, बड़ी बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि है ना, जो कहा जाता है भूखे भजन, भूखे हाँ नहो गोपाला, भूखे भजन नहो गोपाला। भूख में ये पेट भरा होना तब योग भी होता है, भोग भी होता है। खाली पेट न भोग हो सकता है न योग हो सकता, पहले उसकी और न तो स्वास्थ्य कैसे, फिर सबके बारे में। और फिर मैं कहता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जाए बाहर में, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी तो है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है,
उसकी क्या कोई गाइडलाइन आज तक जारी हुई है? जो सरकार में सरकारी डॉक्टर हों, ये सेवा से संबंधित जो भी डॉक्टर नर्स कंपाउंडर जुटे हुए हैं उनकी तारीफ करता हूँ, वंदनीय है वो। स्वास्थ्य कर्मी वंदनीय है, सुरक्षा कर्मी वंदनीय है, लेकिन वो जो सरकारी है, गैर सरकारी डॉक्टर कहाँ गए? गैर सरकारी कंपाउंडर नर्स मिडवाइफ कहाँ गई? क्या उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं बनती है? वो घर बैठ गए या उनको घर बैठा दिया गया? प्राइमरी के अध्यापक क्वारंटाइन सेंटर पर जो नॉन स्किल है रखे गए हैं, क्या इनको नहीं रखा जा सकता था? उनको आप भत्ता देते, उनको रिजर्वेशन देते, ये व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? अभी तो कहा तो गया इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कल परसों की बात, दिल्ली में एक एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला कई कई हॉस्पिटलों में गई, लोगों ने उसको एडमिट नहीं किया और ये भी चैलेंज किया, जाओ बुक करना हो। देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, हुआ क्या वहां पर? इक्वलिटी नहीं थी, ये हॉस्पिटलिटी थी। क्या एक डॉक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स के अनुकूल था? क्या हुआ उसके फंडामेंटल राइट था? सुना है केरल में किसी एक जानवर को विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया, वो विस्फोट किया, वो जानवर मर गया। इंक्वायरी चल रही है किसने किया। इस विस्फोटक स्थिति के नाते जो महिला मरी है उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, किसके नाते हुआ? कहाँ गए मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग? कहाँ गया ये फंडामेंटल राइट की बात करने वाले? कहाँ गया न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो स्वयं संज्ञान लेता रहे? कहाँ गया महिला आयोग और उससे जुड़ी महिलाएं जो बात बात पर बात उठाती है महिला के गौरव और सम्मान की? एक गर्भवती महिला इस तरह से दम तोड़ दे क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी। कहाँ गई डॉक्टर की इथिक्स? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या और जो पेशेंट हैं उनके केवल कोरोना ही कोरोना, उसी का रोना, और महिला गर्भवती मर जाए उसका कोई रोना नहीं, उसका कोई देखा, उसका कोई राइट नहीं? इस पर भी विचार कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातें सच लग रही हो, लेकिन मैं स्वयं पीड़ित हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी मेरे छोटे भाई की पत्नी गिरमरी की हाथ टूट गया था, उसका एक्सरे कराने में और प्लास्टर लगवाने में मुझको आगे लग गए। इनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश, वाह भाई क्या तमाशा है। ठीक है, कोरोना के लिए सब कुछ व्यवस्था होना भी चाहिए, एक डिजीज है, पूरी दुनिया को भयभ्रांत कर दिया है, लेकिन कोरोना ने सबको रोग मुक्त नहीं कर दिया है। उनके बारे में क्या है, इस पर भी विचार कीजिएगा। दूसरी बात, क्योंकि जूलॉजी डिपार्टमेंट हो रहा है, बायो टेक्नोलॉजी बड़ा डेवलप कर गई, इसकी समस्या क्लोन बनाने लगे हैं, जीव पैदा करने लगे हैं, न्यूक्लियर बम, आइटम बम, केमिकल वेपन, पॉइजनस वेपन बना लिए हैं, दुनिया के विनाश का हथियार बना लिए हैं। कहते हैं 2500 बार दुनिया का विनाश करता है। भाई एक तरफ भगवान बन गए, जीव जंतु बनाने लगे, एक तरफ शैतान बन गए, विध्वंस की बात करने लगे। देखो भाई ऐसा है कि जो कुछ हमने विज्ञान के माध्यम से जाना है वो प्रकृति का रहस्य है। प्रकृति जैसे हवा, पानी और प्रकाश से प्रकृति का रहस्य, खुला रहस्य है। कुछ रहस्य जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है या जितने भी हैं वो प्रकृति के रहस्य थे, हमने जान दिया, वही विज्ञान है। तो जब प्रकृति के रहस्य को जानोगे इंसानी फायदे के लिए तब तो लेकिन भगवान बनने लगोगे ना, सृजन करने लगोगे या शैतान बन जाने लगोगे, विध्वंस करने लगोगे ना, तो पता नहीं कितने कोरोना का रोना रोना। क्योंकि मैं जिस संस्कृति, जिस परंपरा, जिस मूल्य में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रकृति के सानिध्य में, उसके गोद में रह करके ही हम सहज स्वाभाविक रह सकते हैं। उसके गुप्त रहस्यों को जान करके, सर्वस्व जान करके उसके ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की स्थिति अगर हम पैदा करेंगे तो प्रकृति हमको संतुलित करने लगेगी। जो समूह हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखिए, आदिवासियों को देखिए, वनवासियों को देखिए, गिरिजनों को देखिए, उनको कौन महत्व रहेंगे? क्योंकि प्रकृति के बहुत प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य, तो ये तो हमारा बुलाया हुआ वो क्या नहीं है। अंतिम बात शिक्षा की आती है। हालांकि आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें दी, इसके लिए आप सभी को साथ हुआ, लेकिन जो मैंने कहा है वो ये मतलब नहीं, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, परसों मैंने कहा, अभी पूर्ववर्ती वक्ता ने भी कहा कि ऑनलाइन शिक्षा वो परंपरागत शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। एक शिक्षक छात्र के बीच
एक परंपरागत संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होता है, संवेदनात्मक संबंध होता है, रागात्मक संबंध होता है, आत्मिक संबंध होता है, आध्यात्मिक संबंध होता है। तो संबंध नहीं स्थापित हो सकता। किसी अध्यापक की अभिव्यक्ति शैली, उसकी वाणी, उसके मिजाज, अंदाज, उसके चरित्र से बहुत कुछ सीखता है छात्र। और खास करके वो सब्जेक्ट में आपको साइंस के हैं जहाँ प्रैक्टिकल होता है। अब डिस्ट्रक्शन तो ऑनलाइन होगा नहीं। मैं तो लॉ का आदमी हूँ। अब लॉ में इंटर्नशिप तो हो नहीं सकती, कोर्ट विजिट तो हो नहीं सकती, मूल कोर्ट तो कराया नहीं जा सकता। और इंटर्नशिप अगर लॉ में नहीं हुई तो नॉन स्किल लॉ स्टूडेंट पैदा होंगे डिग्री लेकर के, जो समाज का नुकसान करेंगे। और देखो ये सब चीजें जब लोग उठते बैठते हैं, लोगों के सामने करेंगे। इंटर्नशिप क्यों है कि एक सीनियर वकील के यहाँ जाइए, किसी जज के यहाँ जाइए, किसी लीगल ऑफिसर के यहाँ जाइए, एनजीओ में जाइए, मान कुछ सीखिए आप कैसे अभ्यस्त किया जाए, कैसे वाणी की कुशलता कैसे आपके अंदर आए, कैसे हाजिर जवाबी हो। एक उदाहरण दो, पंडित मोतीलाल नेहरू वकालत कर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस कर रहे थे। पर उस जमाने में ये पंखे नहीं हुआ करते थे। एक फैन कूलर पंखा खींच रहा था, वो दरवाजे पर खींचता था। अंग्रेज जब था तो गया मई का महीना। अब पंडित मोतीलाल नेहरू बहस कर रहे थे, चुप कैसे हो? बहुत डांट कहा, इडियट यू आर स्लीपिंग। वो जब घबरा था, उसने कहा व्हाट मैटर मिस्टर नेहरू, डोंट हैव नथिंग सर, दैट फैन कूलर वाज स्लीपिंग, आई एम आस्किंग बाय व्हाट अथॉरिटी वाज स्लीपिंग, व्हाट नॉट, आई डोंट केयर। वो शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा कि सर वो कुछ नहीं, उस फैन कूलर को डांट रहा था तो भाई बोल एक सब एक कला पत्ता ऐसे ही नहीं आएगी जब तक इंटर्नशिप न होगा। हालांकि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कुछ बड़े लॉ कॉलेज, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कोलाबोरेशन से तमाम लीगल एक्सपर्ट बुला करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बस उनसे कनेक्ट होने की बात है। कोशिश हो रही, लेकिन वो नहीं ले सकता जो लिया जाना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, एक केवल बात कि देखिए हम विज्ञान के आदमी आप लोग हैं, महिला का आदमी हूँ, हमारे अंदर तर्क वितर्क चलता है, मन मस्तिष्क की बात करते हैं आप, लेकिन इस मन मस्तिष्क के अलावा एक आस्था भी है। मैं जब हॉस्पिटल में लीलावती में था, 7.8 मेरी ट्रीटमेंट हुई थी, तो डॉक्टर आते थे तो ये भी कहते थे कि देखो प्रोफेसर ऐसा है ना कि भगवान पर विश्वास करो, बस फर्क। उसका रीजन नहीं बताते थे ऐसा क्यों, लेकिन आस्था की बात करते थे। आस्था का मतलब कि बगैर तर्क के विश्वास, बगैर प्रमाण के शुक्रोक्त। और इस आस्था में बड़ी ताकत होती है। ये मन मस्तिष्क के नियंत्रण की बात नहीं होता। आप कह सकते हो जो मन मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है वो क्या, आपका शरीर है ना, आप जिंदगी के आदमी हो, आप जानते होंगे इसी शरीर में जितने भी अंग हैं सब संचालित होते हैं। लेकिन यार एक हार्ट भी धड़क रहा है, क्या मस्तिष्क कंट्रोल कर सकता है कि धीरे से धड़को या जोर से धड़को? डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या मस्तिष्क कह सकता है जल्दी जल्दी खाना पचाओ, रसगुल्ला हो खाना है? तो आपके शरीर में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से आपका तो मन मस्तिष्क के कंट्रोल की बात नहीं है, क्योंकि इमोशनल सेंस है। उस हमें आस्थावान होना होगा प्रकृति पर, ईश्वर पर। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ संस्थान के संस्थापक बुलाया, और आप सभी पार्टिसिपेंट को जो मैंने सुना, बड़े ही अच्छे विचार हमने सुने, उससे मैं लाभान्वित हुआ। आप सभी के साथ बात की। Thank you so much, sir, for this wonderful speech. Now I will request Dr. Amit Kumar Singh, sir, Associate Professor, Swami Vivekanand Yoga Anusandhana Sanstha, Yoga University, Bangalore, CMO, Arogya Dham, Bangalore.
to deliver his lecture. Respected organizer, speaker, and participants, welcome to all of you to this session. I'm going to cover the, it's audible, ma'am? Yes, sir, it's audible. The preventive role of yoga on COVID-19. So, what is the yoga? Yoga, Maharshi Patanjali told in his first sloka, first sutra, Atha Yoganushashanam. He told yoga is a discipline. So, what type of discipline? If we are talking about the lockdown, social distancing, we should not use the word social distancing. It's kind of physical distancing. So, yoga is a self-discipline. And in the second sutra, he explained what type of anushashan. This anushashan means yoga chitta vritti nirodha. It means चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, mastery over the mind. How to get the mastery over the mind? उससे हम कैसे अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर स्वामित्व पा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है. तो जहां पे हम बात करते हैं इस तरह की वायरस पैंडेमिक सिचुएशंस में, तो योग ऑलरेडी इसके बारे में बात करता है. इस सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और वह सेल्फ डिसिप्लिन हमारे मन से आना चाहिए. अभी हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ और कोविड-19, योगा का क्या रोल है हेल्थ और इस कोविड-19 सिचुएशन में. एज पर द एंशिएंट टेक्स्ट, इट्स रिटन इन द तैत्रीय उपनिषद, द होल योगिक कॉन्सेप्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ योगा is depend on this Taittiriya Upanishad. Our understanding of the body is, it is in the 5 layers: Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha. Means this whole body is made up of 5 sheath, 5 covering. If we understand only the physical body, so we cannot understand the yogic concept of how yoga treats the disease. In this situation, the physical body is the Annamaya Kosha, the Pranamaya Kosha is our life force, the Manomaya Kosha is our mental seed, the Vijnanamaya Kosha is our intellectual seed, and Anandamaya Kosha is a blissful seed. Ma'am, I have one request. How it's coming in the slides, the full, hello? Yes, sir. Sir, do you want to share your screen or what? Actually, if you see the slides, उसमें बहुत सारे इस तरह से lines, बहुत सारे lines आ रहे हैं. Oh. Sir, can you please just reshare it? Okay, we'll do it now. Yeah. That's okay. Thank you. Okay. So this physical body, how we can differentiate the physical body with the Annamaya Kosha, with the Pranamaya Kosha? If you see the one death body and life body, what is the difference between death body and life body? So there is something that is the prana, which is there in the life body and which is not there in the physical body. If we will go for the Manomaya Kosha, mental seat, so we can give an example of one patient who is admitted in ICU. So in the ICU, he is admitted, there is a physical body, there is a prana, vital energy, but there is a lack of action and reaction. Even though physical body is there, prana is there, if Manomaya Kosha is not there, so he cannot respond. Then Vijnanamaya Kosha is an intellectual seat. We can take the example of a patient who is having the psychological disorder, psychiatric disorder, maybe he's in the depression, or he's very aggressive, he's not in anyone's control. So there is a physical body, there is a prana, pranamaya kosha, life force, there is a mental body, mental seat, action and reaction, but there is a lack of intellectual things. There is a lack of vijnanamaya kosha, there is a lack of buddhi,
Aha Nidra Bhamathu Narana Vivikana. These human beings is known for their intellect. The fifth one is the Anandamaya Kosa, is the blissful body. So if anyone who is physically fit, having the prana, very active, highly intellectual, we can take example of any company CEO who is a type A personality. He is achievers in the life. But if there is a lack of bliss, lack of ananda, lack of satisfaction, Anandamaya Kosha, so even though he is not happy. Same thing is discussed in our ancient text, some dosha, some agni, some dhatu malakriya, prasanna atma indriya swasthaitya vidhiyate. Means there also they mention the physically healthy person is not healthy. WHO says the same thing, physically, mentally, socially, spiritually, person should be healthy. And aim and objective of our ancient text is also swasthasya swastha rakshanam aturasya vikara prasannam. Means maintain the health of healthy person or destroy the disease of diseased person. There is some problem in the screen sharing. Here we can see that in the Tatri Upanishad, we take the one example of Pranamaya Kosha. So the prana is the vital energy. It's not a physical energy. It's a subtle energy. Or we can see that if we have the seed, if you put the seed in the soil, अगर हम किसी बीज जमीन में डालते हैं, वाटर मिलने के बाद, soil मिलने के पास जिस तरह से वो germinate होता है, in the same way, this yoga is a journey from soil to soul, means from Annamaya Kosha to the Anandamaya Kosha. Here we have given one example of the pranayama versus breathing. If you will see the breathing, we are doing the clavicular breathing, thoracic breathing, abdominal breathing. If you will see the yogic technique of the breathing, in the yoga, we are doing the same breathing with the mudra, same breathing with the chanting. Means, यदि हम उदर शोषण कर रहे हैं, abdominal breathing कर रहे हैं, for the abdominal breathing, we are using the akara chanting and the chin mudra. If we are doing the thoracic breathing, यदि हम उदर शोषण कर रहे हैं, for that we are using ukara and chinmay mudra. Same way we are using the clavicular breathing, means lungs is divided into three parts, lower part, middle part, and upper part. And for each, we have the different breathing pattern, different mudra, different chanting for each lobes. So this is the difference between normal breathing and pranayama. When we are doing the wakeful, conscious, slow, deep abdominal breathing, wakeful, conscious, slow, deep abdominal breathing is a pranayama. That is the difference between the normal breathing and pranayama. Here, just I want to share you, or I want to explain you the difference between the sthul sarira and the sukshma sarira, the difference between sachal body and the gross body. The yoga help us to get the mastery over the involuntary nervous system, which is not under our control. Involuntary nervous system through the voluntary nervous system is a yoga. Means our accessories muscles like diaphragm muscles, thoracic muscles, and clavicular muscles. These are the accessories muscles which helps in the breathing. So we are using these tools. We are doing with the voluntary muscles, and we are going to the involuntary. Involuntary means lungs is not under our control. So we are going to the involuntary nervous system for this breathing. The second thing, when we are practicing the yoga, so there should be the synchronization between brain, breath, and body. The brain, breath, and body means whatever the practice we are doing with the breathing, with the chanting. So this way we can tell that
what I will do, sir, I will share my. Someone is not. शायद कोई प्रोहिबिट कर रहा है शेयर करने, अभी शेयर कर। डॉक्टर अमित सर। Yes, yes, ma'am. सर आप अपनी सिर्फ स्पीच दे दीजिए, आप प्रेजेंटेशन अपना शेयर मत करिए। Someone is intentionally doing this. It's an intentional action. Okay, no problem. Okay, sir. Yeah. Okay. Stop share. Okay, ma'am. Thank you. Okay, sir. So, if we will go through this is the, just I explained about the yogic concept and the Annamaya, Pranamaya, Manomaya, this Panchakosha, because anatomy and physiology is based on this yogic concept. This is the anatomy and physiology of the body. And second one, if we are doing the any practice, we are doing with the brain, breath, body synchronization. If the mind, breath and body is not in order, there is a no synchronization. Yes. Amit sir, sorry for the interruption. आप अब अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay. Actually, ma'am, you have to allow me. Host disabled part sharing. If you'll allow me, then I can share. I think he stopped everyone to share Sir, this. just a minute, sir. Just a minute. Yeah. In between, I will continue, ma'am. You try if it is possible. We can. Yeah, sure, sir. Yeah, if it is possible, just to let me know. I will share the screen. Yes, sir. I'll let you know. The pranayama is the breath regulation. What happened with the breath regulation? The breath is the bridge between brain and body. Why I want to explain this one? Our understanding only the physical body in the yogic concept is not there. So this breathing, the breath regulation, the effect of this breath regulation at the body level, it relaxes the muscles. We will find the muscular relaxation at a physical level. And same way at the mind level, it converts our reaction into the response from the mind level. It means it reduces the anxiety and stress. If we will come to this COVID-19 situation, what happened to our immune system when this coronavirus enters into our body? So there is only one mode, through the inhalation. If this virus comes through the nose, if it will come to the nose, so we have the two immunity, innate immunity and adaptive immunity. So this innate immunity at our nasal tract, they start fighting with this virus, with the natural killer cells. We can give the example, like we have the security guard here. So this security guard, first he fight with the virus. In the same time, that guard, that our innate immunity send the message to the adaptive immunity at the thymus level. Means adaptive immunity means there is a police station inside the body, like our lymph nodes. Then they transfer the message to the police station. These type of enemies are coming inside the body. So if our immune system is strong, so we fight, our innate immunity fight with the virus and kill the virus there only. Suppose if it is not, so it comes inside, and the same time, our immune system, our adaptive immunity, our police station, they started the antibodies against that virus. So now we can see there is a 80% participants, 80% patient who is asymptomatic. हमें 80% लोग asymptomatic मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो जो ये एंटीबॉडीज हैं, उनमें टेस्ट से पता चलता है कि they are the positive. But what happens? Suppose if the innate immunity, adaptive immunity, our immune system is not so strong, then what happens? Then our mind, it sends message to the lymphocytes. It creates a cytokine storm. Means we can say that there is a very good mechanism. I have the slide, but due to some technical problem, I'm not able to show you. Due to the stress, from the stress, this is the, everything is a scientific. Due to the stress, it comes to the psychoneuroimmunology. From the mind, it comes to the nervous system. So in the nervous system, there is a
sympathetic arousal or sympathetic activation. Due to the sympathetic activation at the level of nervous system, we can see at the molecular level NF-kappa B cell. This NF-kappa B cells, there is activation of the NF-kappa B cells, which causes the immune inhibition. We can say that due to the stress, there is a irregulation at the level of HPA axis, at the level of autonomic nervous system, which causes the immune inhibition. When our immune system immune inhibition happens, suppose the CD4 CD8 ratio, when it happens, then it causes the cytokine storm in the body. So our IL-1, IL-6, TNF alpha has aggravated. When it causes the cytokine storm in the body, so due to the cytokine storm, there is the air emergency. What is the air emergency? Air emergency in the lungs means there is a breathlessness. And this air emergency took us to the acute respiratory distress syndrome, ARDS. So virus is causing less problem, but our anxiety, stress towards this disease is causes more problem, which took us from how it causes, it helps, means it causes the immune inhibition, and same time it causes the cytokine storm, same time it causes the air emergency, and same time it causes the ARDS. So there is a several publication where we have seen this breath regulation, pranayama, yoga, muscular relaxation, they help to maintain the NF-kappa B cells. They reduces the cytokine IL-1, IL-6, TNF alpha. They reduces the cytokine storm. They improve the immune system, and they help in the bronchodilation also. This bronchoconstriction, this yoga helps in the bronchodilation. So here we can summarize that if we will do the yoga, what is the yoga? Whatever the physical activity you are doing, if you are doing it with the breathing, with the relaxation, with the awareness, with the breathing, with the relaxation, with the awareness, that is your yogasana. And this breath regulation helps in the reducing the stress, reducing the anxiety, and your muscular relaxation. And we have several publications, not only because we know the yoga is for the NCD, non-communicable disease, but we have the publication, yoga for the influenza, yoga for the HIV, where there was the viral load, yoga for the tuberculosis. We have got the very good publication, very good result in the communicable disease also, where virus and bacteria are involved. And I will give the another one example. I will take the only 2 minutes. All of us know the Bhramari Pranayama. In the Bhramari Pranayama, we are producing the humming being sound. मधुमक्खी की तरह sound निकालते हैं. So there is the research when we are producing this type of sound. So there is a paranasal sinus. जैसा अभी हमने आपको बताया कि जब वायरस एंटर करता है तुम्हारे नेजल ट्रैक्ट में सबसे पहले यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी है. तो आपके नोज के पास there is a paranasal sinus. This paranasal sinus secretes nitric oxide, and this nitric oxide is an antioxidant which fight. We can say that that is a part of our immune system which prevents us from the infection. So there is a two group. One group did the normal exhalation, another group who did the Bhramari. So we found 15-fold more. जिन लोगों ने भ्रामरी प्राणायाम किया था उनमें 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन था नॉर्मल exhalation करने वाले ग्रुप से. Hence we can tell that if we are doing this pranayama, if we are doing this yogasana, we can boost our immune system and we can prevent us from the infection. Now the social distancing, yoga teaches us not a social distancing, it should be the physical distancing. If we are having, during the lockdown situation also, there is a several publication researchers coming out. During the lockdown, the people are having the more anxiety, more stress because they cannot go for the any physical activity or walking, anything, the stress level are high.
and all the cardiac risk marker is very high. So if they opt the yoga, which is the mental discipline, which is come from inside, so we don't need any tool. We don't need in the gym, we need the tool to do it. We don't need any tool also. From the home, we can practice this and we can boost our immunity. Like a border, we can block our borders. But if militant come inside from the border, what we will do? So yoga is, one thing is the social distancing, this physical distancing prevent us from the virus. We have to follow all the government norms. But at the same time, we should follow all the Ayush system, the Ayurveda, Kadha, the homeopathic medication, and this yoga practices also to boost our immunity. Thank you very much, sir, to giving us a chance to this platform to share our ideas. And if it is now allowed, so I can just share the screen and show the slides, if it is possible. Otherwise, thank you very much. Yes, sir. Please share. Yeah. Sorry, ma'am. It's coming host disabled participant screen sharing. Okay, ma'am. It's okay. Thank you very much. Okay. If any questions are there, you can ask. Anyone with the questions? No one. Thank you so much, sir. Now I will invite Professor Joseph Singh, sir, from Department of Sports Biomechanics, Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, for delivering his speech. A very good afternoon to one and all. Can I share the screen? Yes, sir. Please share it. Okay. It's not coming, ma'am. So just try it now. Okay. Okay, you can see that screen? Yes, sir, it's visible. Okay. So today, once again, a good afternoon to one and all. The topic which I took is, I prefer to use the word Chinese plague, time for paradigm shift in physical activity. So being a physical education from this discipline, I'm going to present about the physical activity part. The invasion of the zoonotic, no one has ever predicted this outbreak, that is COVID-19 pandemic. It is an unprecedented time around the world. Extensive social distancing policy, those are coming up and restricting the people not to go out and be safe at the home. The perfect storm, we call it, because it's like a perfect thing that is coming up. The opportunity to be physical activity or physical active is hampered. The activities such as walking or moving around or playing, these are all hampered by the, see this again, that thing is coming. So I'll just stop my share. Okay, I'll just stop my screen share. So it's visible? No, sir, it's not visible. It's not coming up? No. So during this time, what all activities can be done? Because people are now at home and they are in a problem, people are not able to participate, because as we are in a physical education institute, here our students are going through this because they are, every day they play and they want to play. So when they are at home, what can they do? They are able not to do the little work also. So they are now doing what to be in a perfect physical condition, because they have to maintain that condition, because they have to perform when this lockdown will get over. So I'll suggest them some exercise they can do at home
because if they are not doing this exercise, they will be not in a condition to be physically active after this unlockdown. And when they'll come to the field, they will have a problem. So WHO has also suggested that you should do some daily work of intensive activity, and you should do it at home also, or you can perform it surrounding or within your house. So when you'll do this activity, that fitness is there. So I'll suggest some planks. If you are doing that planks, set up at home, you can come with the strength part of this. You can do cycling, or we can say cycle around the home, or you can walk. You can jump, you can do skipping rope at home. People are doing various activities at home. So when this activity is done by the students and people, they will be in a fit position. You can do various flexibility exercises. If you are in a stress, you can go for the yoga. Yoga, meditations are there, and you can go for that thing, because when you will not do this, all this activity, you will have a big problem, because the fitness level, you are going to not going to condition your body according to it. So you can do various planks, sit up, push-ups during the lockdown with your own body weight. You can do a standing squat. People can stand and do the standing squats. They can use the own body weight in doing the standing squats. So like this, if you are doing the activity, you have to be active in that. So when you are going to get all the physical condition, and you will be able to do it well during this lockdown situation. I have made many presentation, but it is not coming up. So I'll just go with the without the slide only. When you're doing any activity at home, just be careful. Don't overdo it. Don't overdo it. What you can do, don't lie down on the bed. Keep moving. You can put after a half an hour or within an hour, you should move around. You should relax your hand, legs, make it walk. Walk when you are talking on the phone. You can do aerobics. You can go for videos on YouTube. You can do the activity at home. Put some music, dance. If you have got children, you can play around with them. This is a very beautiful time. You can spend around time with them doing some physical activity. Don't play on the mobile, the games, but play with them at home only. If you have got pets, move around. If you're playing with the pets also, you are doing some activity. So these activities will keep you fit, and you have to be in a sound situation, because sitting around at home, you will be in a stress. What I'm doing sitting around. Most of the people I've seen going on the Netflix, they are going for the movies, a long serials. Overnight they are overdoing it. They are not sleeping at proper time. So if you're not sleeping, anxiety will develop and stress will develop. So whatever you can do, you can exercise at home. Around your home only you can do. Okay. Thank you very much, and be fit and stay active. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Any questions? Anyone up with questions? Anyone? So no questions are there. Okay. Thank you. Thank you for giving this chance. I'm going to Arun sir, Rajesh sir for conducting this platform, bringing various people on the one platform only. Thank you. Okay, sir.
सर अभी आप क्या है क्या, तो वोट ऑफ थैंक्स फिर आपका है लास्ट में ना? नहीं सर मिस्टेक, अभी सर टाइम है, आराम से देख लीजिए ना। अरे सर आप तो सर अगर आप तो सर आके बंद कर दिया, आपको वोट ऑफ थैंक्स आता है। Which page? नहीं पता तो उनका कर दो कमाल डी लाइन पैसा। Now I will request Dr. D.N. Rai sir, retired from King George's Medical University to Lucknow, for the lecture. अच्छा, हरिओम तत्सत। आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आवाज आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी लोग मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। योग का सत्र है, आप योगी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, तनाव मुक्त होने की विधियां सीख रहे हैं, तो ये भी सीख लें। ओम का उच्चारण मस्ट है जब हम कुछ नया काम करें। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, लंबी श्वास खींचें, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें राजीव। ओ आंखों को बंद रखें, श्वास के प्रति समर्पित हो जाएं, देखें श्वास कैसे चल रही है। धीरे से आंख खोल दीजिए। विषय दिया गया है कोविड-19 के संदर्भ में हठ योग की उपयोगिता, यानी हमें ये बताना है कि हठ योग के द्वारा आप किस तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 में जो तनाव व्याप्त है, भय व्याप्त है, असुरक्षा व्याप्त है, संशय है, द्वंद्व है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और भय होगा, संशय होगा, तनाव होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। आपने अन्य वक्ताओं के भी लेक्चर सुने। दरअसल ये सत्य है, जब तनाव में होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और एक नहीं कई बीमारियां व्याप्त होने लगती हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य खराब हो जाता है, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संपूर्ण स्वास्थ्य से मतलब शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी आप पीड़ित हो जाते हैं। शारीरिक रूप से आपके अंतरस्रावित ग्रंथियां सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं, विभिन्न बीमारियों व्याप्त हो जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं हो पाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स काम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा उत्तेजित रहती है, ये आप जानते हैं। इसी के साथ साथ मन आपका भ्रांति रहता है, भागता रहता है, तनाव में रहता है, निद्रा हो जाती है, खाना रुचि समाप्त हो जाती, भूख नहीं लगती है, यह मानसिक द्वंद्व के कारण होता है। इसी तरह सामाजिक संपर्क टूट गया है, आप घर में बंद हो जाते हैं, सोशलाइजेशन नहीं हो जाता है और साथ साथ आध्यात्मिक दूरी बढ़ जाती है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रेम, दया, करुणा, ममता समाप्त हो गई, आप भयग्रस्त हैं, किसी से बातें करना भी आपके लिए दुष्कर है। तो ये होता है किसके कारण? ये हो रहा है कोविड-19 के कारण। हम भयग्रस्त हैं। इस भय से दूर करने के लिए, भय से छुटकारा पाने के लिए हम योग का सहारा लेते हैं।
और मुझे दिया गया है कि आप हठ योग पर बोलेंगे। लोगों ने राजयोग पर बहुत बोला। राजयोग मीन्स अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह राजयोग है। इसका उद्देश्य है समाधिस्थ हो जाना, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना और कैवल्य की अवस्था प्राप्त हो जाना। और यदि अवस्था प्राप्त होगा तो आप तनाव मुक्त होंगे। लेकिन आज के संदर्भ में ये राजयोग कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, इसलिए हठ योग की उपयोगिता ज्यादा बढ़ गई। आज जितने भी आप योग देख रहे हैं वह हठ योग ही है। राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, ये 4 योग हैं जो खास योग हैं। अब तो बहुत से योग हो गए हैं। हठ योग की जो आज की लोकप्रियता है उसका कारण है शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं हठ योग करने से, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सामाजिक दायरा हमारा बनता है, सोशलाइजेशन होता है और प्रेम दया करुणा की भावना विकसित होती, व्यक्तित्व परिमार्जन होता है, व्यक्तित्व का शोधन होता है, तनाव मुक्त होते हैं। अब सवाल ये है कि साहब राज हठ योग है क्या? हठ योग की तो बात आप कर रहे हैं, हठ योग है क्या? क्या है हठ योग? क्या जबरदस्ती शरीर को तोड़ना मरोड़ना हठ योग है? पैर को सर पे लगाना हठ योग है जो आज देख रहे हैं? कदापि नहीं। हठ योग का मतलब है आपके नाड़ियों से संबंधित। 72,000 नाड़ियां हैं आपके शरीर में अकॉर्डिंग टू हठ योग फिलॉसफी, हठ योग लिटरेचर, हठ योगियों के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से 2 नाड़ियां महत्वपूर्ण है, ईड़ा और पिंगला। पिंगला है दायां स्वर, ईड़ा है बायां स्वर। दायां स्वर का संबंध आपके मस्तिष्क के बायां भाग से है और बायां स्वर का मतलब दाईं तरफ जो स्वर चले उसका आपका दाहिने भाग से। मस्तिष्क के दोनों भाग, दोनों गोलार्धों में संतुलन को हठ योग कहते हैं। यानी कि हठ ह पिंगला नाड़ी और ठ ईड़ा नाड़ी दोनों संतुलित होती हैं तो आपका व्यक्तित्व संतुलित होता है, आप बीमारियों से मुक्त होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह है हठ योग का मतलब। उद्देश्य क्या है इसका? संतुलन। कैसे जानेंगे? सुषुम्ना स्वर संतुलन का प्रतीक है। ईड़ा बाईं स्वर जो चलती है तो आप शीतल रहते हैं, कूल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। एक ही नहीं चलता है, बदलता रहता है। और दायां चलता है तो उत्तेजित रहते हैं, भाग दौड़ मचा रहता है, तनाव में रहते हैं, अनिद्रा में रहते हैं। और जब दोनों चलता है तो आप संतुलित होते हैं। दोनों चलने का मतलब सुषुम्ना प्रवाहित होने लगती है। आपके हठ योग का यही मतलब। हठ योग के द्वारा ही आप इलाज करते हैं। आज जितने भी लोकप्रियता है योग की वह कारण हठ योग के कारण ही है। अब सवाल यह कि हठ योग की कुछ और भी जान जाए। हठ योग के रचयिता महायोगी गोरखनाथ जी हैं। 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है। उस समय भी बहुत तनाव का युग था, यमनों का आवागमन हो रहा था, हमारी संस्कृति नष्ट की जा रही थी, हमारा कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, व्यक्तित्व नहीं था, हम अपने समाज से अलग हट जा रहे थे और भोग को योग समझा जाने। 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। ठीक वैसी परिस्थिति कोरोना की वजह से आज है। हम आज भी तनावग्रस्त हैं, आज भी दबावग्रस्त हैं, आज भी द्वंद्व में हैं, आज भी संशय में हैं। कल क्या होगा, मृत्यु हो जाए किसी की या हमारे परिवार कैसा होगा। ये सब कारण के को निवारण के लिए आज के संदर्भ में हठ योग की नितांत आवश्यकता है। लेकिन हठ योग करता कौन है, कैसे करता है? हठ योग की बातें तो बहुत होती, योग की बातें बहुत हो रही थी, करा कैसे जाए, हठ योग में होता क्या है? तो गोरखनाथ जी की ये परिकल्पना थी। महायोगी गोरक्षनाथ, गोरखनाथ मंदिर का आपने नाम सुना होगा, उनके सिद्ध स्थल है। उन्हीं की ये दी हुई प्रतिपादित, उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित हठ योग। हठ योग में होता क्या है? हठ योग में आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, मुद्रा होते हैं, बंद होते हैं, नाद अनुसंधान होता है और षटकर्म की क्रिया होती है। यदि ये क्रियाएं आप करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये यदि क्रिया करेंगे तो तनाव मुक्त होंगे
यदि ये क्रिया करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उत्तेजित है, सक्रिय है, फ्लो हो रहा है, वो पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करेगा। यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वर्ड आ गया। एक पिंगला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ईड़ा है पैरासिम्पैथेटिक। दोनों में संतुलन होना चाहिए। जब आप व्यवस्थित होंगे, संतुलित होंगे, रिलैक्स होंगे। यदि ये दायां स्वर यदि ज्यादा एक्टिव है तो आप उत्तेजित होंगे, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तनाव में होंगे, सिजोफ्रेनिक हो सकते हैं। और यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको शांत करता है, ये भी ज्यादा सक्रिय होगा ईड़ा, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड का आइडिया आएगा जो आजकल आ रहा है, क्योंकि एक ही चल रहा है। दोनों में संतुलन होना जरूरी है। तो संतुलन कैसे किया जाए, यही हठ योग की परिकल्पना है, यही हठ योग है। इसी को आप अच्छी तरह समझ लें और प्रश्न पूछना है तो पूछते रहिए, खूब पूछिए, पूछना चाहिए। योग में केवल ग्रहण करने मात्र से हो सकता है आप गलत कर रहे हैं। अब आसन हम कैसे करेंगे? सबसे जरूरी है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों संतुलित हो जाए। कौन सी ऐसी क्रिया है जो पिंगला स्वर और ईड़ा स्वर को संतुलित सुषुम्ना जागृत करे, कौन सी है, तत्काल हो जाए। अभी आप टेंस में आ गए और उसके आप कर लीजिए, आप रिलैक्स हो गए। तो कौन सी क्रिया है, कोई बताए? वह क्रिया है शशांक आसन। नमाज की तरह है। वज्रासन में बैठिए, हाथ को ऊपर कीजिए, सांस को खींचिए, धीरे धीरे माथे को जमीन पे लगाइए, फ्रंटल लोब को टच कर दीजिए, दोनों स्वर अपने आप चलने लगे। हो ही नहीं सकता, यदि ब्लॉकेज है तो हो ही नहीं सकता है। आप उठ के बैठ जाएंगे तो बार बार करेंगे तो ये स्वर खुल जाएगा। दोनों स्वर का क्या मतलब है? क्या मतलब है? सुषुम्ना स्वर खुल जाना। सुषुम्ना स्वर का क्या मतलब है? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाना। हाइपोथैलेमस मतलब क्या हुए? आपकी जितने भी अंतरस्रावित ग्रंथियां सब व्यवस्थित हो गई, आपके कंट्रोल में हो गया, आप तनाव मुक्त हो गए, तत्काल हो जाता है। अभी करके आप घर पे देखिएगा। वज्रासन में बैठिए, हाथ को ऊपर कीजिए, सांस को खींचिए, धीरे धीरे लेते आइए, नीचे आके छोड़ दीजिए और सांस यहाँ चलती रहेगी। कितने देर तक? 5 मिनट। अब सवाल ये है कि 5 मिनट तक करेंगे क्या? उल्टी गिनती करेंगे। 100, 99, 98, 97, 96 सांस को गिनते रहेंगे। उससे होगा क्या? आपका ध्यान भी, एकाग्रता भी बढ़ेगी, टेंशन भी कम होगा। और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होंगी? एडर्नल ग्लैंड से एड्रेनलिन स्रावित होने लगता है जब तनाव, वो कंट्रोल हो जाता है, तत्काल हो जाता है। ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है, मस्तिष्क के दोनों भाग एक्टिवेट हो जाते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो शशांक आसन आज के युग में, आज के संदर्भ में, आज के काल में संक्रमण का काल चल रहा है, आपातकाल से भी भयावह स्थिति है, जो अदृश्य है, उसे छुटकारा पाना है तो नियमित आप शशांक आसन घर पर प्रातः काल कीजिए। योग का नाम लेने से प्राप्त नहीं होता, योग में क्या करना है ये बहुत जरूरी है। अब दूसरे है कि प्राणायाम। प्राणायाम देखिए, आसन से अंतरस्रावित ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, शरीर प्रभावित होता है, सुडौल होता है, लचीला होता है, रोग से मुक्ति मिलती है। बातें यहाँ तक तो सही है, लेकिन मन के व्यापार, मन का जो भागदौड़ है, तनाव, वह कैसे नियंत्रण? वह नियंत्रण होता है प्राणायाम से। इसलिए कहा गया आसन है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और प्राणायाम है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मन क्यों विचलित होता है? आपका मन कंट्रोल में नहीं है, आप मन के गुलाम हैं। जो मन कहता है आप भागते रहते उसके पीछे पीछे। मन को नियंत्रित करना ही प्राणायाम का कर्तव्य है, मनोनिग्रह करना प्राणायाम का कर्तव्य है। और प्राणायाम को प्राण को नियंत्रित करने के लिए, प्राणायाम को प्राण को नियंत्रित करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए प्राण को नियंत्रित करना जरूरी है। याद कर लीजिए, ध्यान सेंटेंस फिर से बोलते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए प्राण को नियंत्रित करना पड़ता है। यदि आप इस समय आप विचलित हैं, विचलित बहुत ज्यादा हैं, तनाव में हैं, एक सांस को रोक लीजिए, रोक लीजिए। अब देखिए मन शांत हो गया। स्टॉप थेरेपी, स्टॉप ब्रीदिंग थेरेपी, ये हमारा प्राणायाम है। ऐसे ही कई प्राणायाम है जो तत्काल हमें लाभप्रद देते हैं, फायदा पहुंचाता है तनाव में। आज के युग में इसकी जरूरत है, नितांत जरूरत है।
अब क्या प्राणायाम करें? ये तो एक समान प्राणायाम बताया। आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, रास्ता ब्लॉकेज है, ब्लॉक है, जाम लगा हुआ है, आप परेशान हो रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए, कार में बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सांस रोकिए, रोक ली, वाह, रिलैक्स हो गए, झरनों में जाए दुनिया, आप रिलैक्स है, स्वर्ग का आनंद उठा लिया आपने। तो ये है प्राणायाम का महत्व। अब 3 प्राणायाम हम आपको बताएंगे जो बहुत जरूरी है। एक है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका लोहार की धोकनी से बना हुआ, आपके अंदर भी धोकनी है, आपके अंदर भी अग्नि जल रही है। जब आप तनाव में होते हैं तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, धीमी हो जाती है आंचें। वो अग्नि कहाँ है, कौन बताएगा? वो अग्नि आपके नाभि में मणिपूरक चक्र में है। जब अग्नि मंद हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो क्या होता है? लिबिडो समाप्त हो जाता है। लिबिडो क्या है? उत्साह, मंग, तेज गति, आगे बढ़ने की चाहत, संसार में बहुत कुछ हमें सभी प्राप्त करना है, ये समाप्त हो जाता है और डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम योग में बना है। क्या करना? धीरे धीरे सांस को नाक से, दोनों नाक से से खींचना है, पेट तक ले जाना है, और अग्नि यहाँ नाभि में है, उसको टच करवाना है श्वास को, और फिर बाहर निकल जाना है। कैसे करना? बैठ जाइए प्लीज, प्लीज राजू जी, बैठ जाइए और देखिए, लंबी सांस खींचिए दोनों नाक छिद्रों से, ले गए, नाभि को टच कराया, फिर बाहर निकाल दिया 1, फिर ले गए, नाभि को टच किया, बाहर निकाल दिया 2, फिर ले गए, नाभि को टच किया, बाहर निकाल गए 3। इस तरह 30 बार करेंगे। 30 बार करने से आपके अंदर अग्नि प्रज्वलित होगी, आप उत्साहित होंगे, तनाव मुक्त होंगे, और आप एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत विद्वान हैं। आप तो कहेंगे कि साहब इसको आप फिजियोलॉजिकल आप बताइए कैसे होगा। विदेश वाले स्वीकार नहीं करते मेरी बात को, ऐसे हम इंडिया में तो कुछ भी कहते हैं स्वीकार करते, विदेश में कहते नहीं। आप सिद्ध कीजिए। तो होता क्या है, जब दोनों नाक छिद्रों से सांस खींचते हैं तो क्या होता है? मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक्टिवेट हो जाता है। दायां सा का संबंध बायां से है, और बायां सा का संबंध दायां से, ये आप चलते। और इसमें क्या होता है? दोनों गोलार्ध सक्रिय होती है और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। आगे फिजियोलॉजिकल काम करना, उसको करना है, आपसे कोई मतलब, आपको सही करना है। तो एक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कितनी बार करेंगे? 30 बार करेंगे। और शरीर हिलना नहीं चाहिए, ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। शरीर हिल गया तो प्राणायाम नहीं हुआ, हो एक्सरसाइज हो गई। शरीर नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल स्थिर, रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरुदंड सीधा, स्पाइन शुड बी इरेक्ट बट रिलैक्स, और सुषुम्ना जागृत हो जाती बीच में, उसी से फ्लो होता है वो एनर्जी। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, जो वक्त वक्त पर आप जानेंगे। अभी इतने ही जानिए भस्त्रिका कैसे किया जाता है। अब दूसरा है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती में क्या होता है? दोनों स्वरों को सम करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। भस्त्रिका में नहीं हो पा रहा है तो कपाल भाती में निश्चित हो जाएगा। दोनों को बराबर करते हैं। दोनों देखिए, 2 नालियां चल रही, ऐसे इमेज कीजिए, कल्पना कीजिए, 2 नालियां बह रही हैं, एक में ज्यादा फ्लो हो रहा है, एक में कम हो रहा है। तो दोनों को हमको फ्लो करने के लिए क्या करेंगे? बाल्टी से पानी हम डालेंगे, दोनों एक साथ बह जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, आप समझ गए होंगे। आप ना समझे हो तो फिर से पूछिए। तो दोनों को फ्लो करना है कि दोनों से मतलब कीड़ा और पिंगला, दोनों से मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक, दोनों से मतलब चित्त शक्ति मन शक्ति, दोनों से मतलब दोनों गोलार्ध, दोनों से मतलब शरीर और मन। इतने चीजें होती हैं, बहुत गुण है ये। अब इसको फेंकेंगे हल्के से, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये सब नहीं करना होता है। रिलैक्स कर हो जाएगी, आंखें बंद कर लीजिए और धीरे से सांस को फेंकेंगे। फेंकने का मतलब होता है फ्लो करेंगे, और उससे दोनों स्वर खुल जाएगा, और दोनों स्वर खुलने का मतलब सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना चलने लगेगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ जांघ पे रखिए,
हमने क्या किया, लिया तो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, अपने आप चला जाता है। आपको केवल फेंकना है, झटके से फेंकना है नहीं, धीरे धीरे औले औले रिदम के साथ। झटके से फेंकेंगे तो क्या है, हार्ट को जोर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाएगा। ये किसी कथा कथित किताबों में के बातों में मत आइए, टीवी मत देखिए, अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे लिटरेचर पढ़िए, सत्यानंद टेक्निक अपनाइए। फ्लो करना धीरे 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 रिदम के साथ, और आप कूल होते चलेगा। ये हो गया कपाल भाती। अब 2 और प्राणायाम हम बताएंगे। सुनाई नहीं दे रही है जी, हमारे संदर्भ में बातें हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रही है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम खत्म तो नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गई? नहीं सर, टाइम खत्म नहीं हुआ है अभी। अच्छा, टाइम है। अब सवाल क्या है? आवाज नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। सर जस्ट 1 मिनट का समय दीजिए, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ ठीक है, टाइम नहीं खत्म हुआ तब बहुत अच्छी बात है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, और इसकी चर्चा हो चुकी कि दायां का संबंध बायां मस्तिष्क से, बायां मस्तिष्क का बायां नाक से दायां नाक, दोनों को बराबर करते हैं। 2 उंगली यहाँ रखते हैं आज्ञा चक्र पे, दोनों नाक बंद करते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, बंद करते हैं, दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं, इधर से खींचते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर इधर से निकाल देते हैं। खींचा और निकाला 1, फिर खींचा और निकाला 2, इस तरह करके 30 बार करते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं। नाड़ी शोधन नाड़ी शोधन के बाद भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे। भ्रामरी में क्या होता है, कमरे में जिस तरह गुंजन करने से कमरा गूंजता है, वैसे गुंजन करना मस्तिष्क में, भौरे की गुंजन करना, और कुछ नहीं, ओम की गुंजन नहीं, भौरे की गुंजन करना। ये उंगली रखेंगे, ये कान बंद कर लेंगे, हाँ अच्छी तरह कान बंद कर लीजिए, हाँ सांस खींच लीजिए, गूंज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, एंजाइटी लेवल आपकी कम हो जाएगी, बिल्कुल धीरे। स्वामी सत्यानंद कहते थे कि जिस तरह कमरे में आप गूंजन करेंगे और गूंजता रहेगा, वैसे ही कुछ इस तरह होता है, मस्तिष्क का गूंजन होता है, एंजाइटी आपकी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, तनाव मुक्त होगा, बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास शब्द का इस्तेमाल किया हुआ, बौद्धिक बुद्धि का विकास होता है, प्रज्ञा खुलती है, सृजन क्षमता बढ़ती है, इतने ज्यादा फायदा होता है। ध्यान कहाँ लगाना है, ध्यान कहाँ लगाना है, नाक के नहीं लगाना है, मस्तिष्क के बीच, मिडल ऑफ ब्रेन पर लगाना है, और इस तरह आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम भी कर लिया और तीनों प्राणायाम किया, 4 प्राणायाम हो गए, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। अब आप करेंगे योग निद्रा। डॉक्टर कामाख्या कुमार भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। योग निद्रा बहुत जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, अंतरस्रावित ग्रंथियां सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं, तब होता है। और सभी काम करने लगे तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप रोग मुक्त होंगे। तो योग निद्रा में केवल यही नहीं होता है, बल्कि आप अचेतन मन तक जाते हैं। मन के 3 पार्ट होते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन। अचेतन में क्या है, कूड़ादान पड़ा, हमारी डिजायर्स, हमारी भावनाएं, हमारे बहुत से विचार जो वर्षों के दमित होते हैं, सब वहीं जाके इकट्ठे होते हैं, और हमारे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उससे प्रभावित होता है, और हमारे रोग के कारण भी ये होते हैं, वो सभी कैथारसिस हो जाता है, निकल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, शिथिल अवस्था में वो बाहर आ जाता है। तो ये योग निद्रा भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह हठ योग की क्रियाओं को अपना कर आप क्या हो सकते हैं, तनाव से मुक्त हो सकते हैं, और कोविड-19 कोरोना वायरस जिसको है, कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं, और आप त्रस्त नहीं होंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, भयग्रस्त नहीं रहेंगे। जो भयग्रस्त हो गया, कहते नहीं,
जो भय में व्याप्त है वो रोग पाले हुए इकट्ठा किए हुए, तो भय को मुक्त कीजिए। एक चीज और है, कुंजल क्रिया है, षटकर्म में आता है, ये भी हठ योग का पार्ट है। कुंजल क्रिया भी बहुत प्रभावशाली है, जो हमने अपने मरीजों को देखा है। पानी पी के उल्टी करना, इंडिविजुअल करें, सामूहिक नहीं करना है। पानी पी लीजिए, नमक मिला के हल्का सा 4-5 गिलास नमक पानी गर्म कीजिए, उसमें हल्का सा नमक मिलाइए, बैठ के उसको पीजिए, 2 उंगली डाल के उसको बाहर उल्टी कर लीजिए। इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके इन बीमारियों से। मेरे ख्याल से इन्हीं शब्दों के साथ आप समाप्त करते हैं। कुछ सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो और भी हम आगे बढ़ा देते हैं। कुछ सवाल हो, प्रश्न हो, पूछिए, निसंकोच पूछिए, जैसा भी प्रश्न हो पूछिए। मैडम पूछिए, आप पूछिए। Anyone up with the questions? निसंकोच, सहर्ष। Questions नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब या तो समझें या नहीं समझें, दो में से एक बात। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। समझ गए होंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Moving towards our next speaker, Dr. Arvind Kumar Singh, sir, Professor, Department of Zoology, Banaras Hindu University, Varanasi. Okay. Should I start? Yes, sir. Start कीजिए. Thank you very much, madam. Good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank to all those persons who have given their precious time to organize this meeting. I'm very thankful to the Principal Kamla Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, Dr. Radheshyam Singh, and convener Dr. R.N. Singh for inviting me to participate in this webinar. I have selected this topic. Please, slide, please. Slide. I have to share slides actually. बिल्कुल सर, शेयर करिए. It is not opening from this side. Sir, just a minute. सर अब आप शेयर करिए. Okay, so the topic on which I am going to speak is genetics and evolution of coronaviruses. In fact, viruses are not new to our society. We have already encountered with so many viruses which have caused diseases in our society in our long course of evolution. So, and we know much more about their genetics. So that is why I thought that I must share this particular aspect to the general audience, general people. See, this COVID-19, which is actually a type of novel coronavirus, which has been given a specific name SARS coronavirus 2. It has spread in more than 200 countries of the world. And unfortunately, 4,000 people have lost their life. More than 70,000 have become infected to it. And our country, that is also becoming worst sufferer. Presently, we are, if we go to the number of individual infected, we are at the 6th position. So this is really a matter of big concern. And we are really worried for this because the number is increasing day by day. This is scenario of our country where the number of infected persons is increasing day by day. This trend actually started from 9th or 10th of April. And from that period, it is increasing very steadily. The number of fatalities that is also increasing. So far, we have more than 250,000 infected persons, although so many of them are now quite good, means they have recovered. But unfortunate part is that
so many of them have lost their life. Coming to the virus, because I mainly want to discuss viruses, this is a term which means poison. These are very tiny particle means the microscope which we use in our laboratories, like compound microscope or student microscope, that does not help to observe these tiny particles because they are submicroscopic. Their size could be 10 to 800 nanometer, and they could be seen only with the help of electron microscopes. These are infectious particles, and they can infect any kind of cell, means animal cell or plant cell or fungal cell. Even bacteria are infected by viruses. In a single bacterial cell, hundreds of viruses could be formed, and then they are released outside. So they are obligate intracellular parasites, and in fact, they hijack host cellular machinery. Structurally, they are made up of mainly proteins and the genetic content, which could be DNA or RNA. And in some cases, the lipid bilayer also present as an envelope. The genetic material, that is DNA, could be double-stranded or single-stranded. RNA, that could also be double-stranded or single-stranded. So there are so many different kind of viruses, and these viruses, they have varying genetic content. That shows that probably they have originated from different organisms during the course of this long evolutionary history. See, in this table, you can see on the right side, there is a list of some of the commonly known viruses which cause diseases in human beings, like cold sores disease, infectious mononucleosis, chickenpox, smallpox, which has now been totally eradicated. Some of the cancer is caused by viruses, respiratory diseases, a number of them are known which are caused by viruses, hepatitis B, poliomyelitis, common cold, rabies, mumps. These are the diseases which are known to us, and they are caused by different kinds of viruses. But you see, these viruses, they have varying genetic content. As I just told you, that DNA could be genetic material or RNA could be genetic material. This particular coronavirus, for which we are mainly concerned, that possesses a single-stranded plus RNA, that is just like to messenger RNA, that could be immediately used for, once it enters into host cell, that could be used for protein synthesis. So this is a list of where some of the viruses which are disease causing in humans. Then particularly I have taken this slide purposes to show that viruses, they vary in their shapes and sizes. Like pox virus, see, it is a very complex kind of virus, quite large in size. Herpes virus is smaller than this. And then you can see adenovirus, papilloma virus, which causes cancer. These are DNA containing viruses. Then in the lower side, you can see some of the viruses which are RNA viruses, like poliovirus, HIV, AIDS. Few years back, we were much concerned from HIV infection, which causes AIDS. But fortunately, we have certain drugs. With the help of those drugs, we can now cure people. And then influenza virus, coronavirus, rabies, these are RNA containing viruses. So you can see their size is varying, their shapes are varying. So they are not all of the same size, means they have varied kind of structure. In this slide, although it is not concerned with coronavirus, but there is a purpose of putting this slide here. Actually, I'm showing the life cycle of HIV, that is human immunodeficiency virus. This virus contains RNA as genetic material. But this RNA, in fact, let me use this cursor. This RNA genetic material, it changes into DNA, double-stranded DNA, and then it gets integrated or incorporated into our genetic material, that is into host genetic material. It enters into T helper cells, then finally enters into the nucleus of the cell, and there it gets integrated into our DNA.
From this DNA, it can synthesize its RNA, from which so many different kinds of proteins which are required for its synthesis are actually synthesized. And then its RNA is also synthesized simultaneously. Viral particles are formed. But the life cycle of coronavirus that differs, I will be coming to that aspect. See, this is the structure of coronavirus, about which I have to mainly give my emphasis. On the external side, you can see these are lollipop-like structures. These are the spikes, external projections. And actually, with the help of such projection, it binds with our lung epithelial cells. So this spike protein is a specific kind of protein, that is S protein. And this S protein shows affinity with the host receptor cells. Now, you can see here is the envelope. This is actually protein and lipid bilayer that makes this envelope. And then inside it is RNA, that is its genetic content. Now, doctors or even media persons, they are very much advertising that using soap for cleaning hands actually helps to kill the virus. This, you see, this lipid bilayer is that gets disrupted when we use detergent for cleaning our hands. So that is why this is actually suggested, because its total structure gets disrupted. The genetic content will be released out. There will be distortion in the proteins which are present on the external side, and it will be totally helpless to bind to the, if it is somehow left somewhere, it will not be able to bind with the host lung epithelial cells. That is why this structure important. You can see the structure of this spike protein. See, this is S1 protein, which actually binds with our lung epithelial cell receptors, which is referred as ACE. And then it has a tail-like structure which gets studded into the lipid bilayer. So you can see the life cycle, how this coronavirus completes its life cycle. This is an interesting structure, particularly for biology, you know, in people, those who understand biology. This is the virus particle. Now it's S protein, that is S1 protein, binds to our cell receptors. We have cell receptors for some other purpose, but this virus actually binds to the receptor. Then it introduces its genetic content, messenger RNA, that is plus single-stranded RNA, into our cytoplasm, and then hijacks entire host cellular machinery for its own growth and increase in number. So this is RNA. It possesses poly A tail event. For presence of poly A tail is an evidence that it is exactly similar to messenger RNA, because our messenger RNA that possesses poly A tail, and our cell actually believes or that considers that it is its own, you know, messenger RNA, and that is why it helps the synthesis of the protein. So all sorts of protein which are required for the viral assembly, actually they are synthesized. The RNA molecule gets synthesized into negatively stranded RNA, and from this the plus strand RNA will be synthesized. So this RNA becomes genetic content of the virus, and the proteins are assembled with it. So what we are observing here, that the RNA along with the proteins that help in the formation of the virus. So this virus then gets released from the cell. This way, a single cell can produce hundreds and thousands of viral particles. One can believe that these particles, when they are released from the infected cell, they can actually infect healthy cells which are present in the adjacent area. So a time will come when majority of the cells of the host tissue will be actually infected with the virus, and our that specific organ will get affected, severely affected. See, in this particular picture, you can see how a virus particle is being budding out, how it is being released out. This is a cell, host cell. Inside the host cell, the viruses are formed, and these viruses will be released one after the other. You can see at a time
6, 7 viruses, they are ready to be liberated out. And all those cells which are actually infected, they will be liberating such kind of cells, sorry, such kind of viruses outside, and will make the situation very, very worst. In this slide, you can see so many black spots. These are actually viruses which are being released from infected cells. Purposely, the lung epithelial cells are actually infected with the virus, and then its synthesis starts, means coronaviruses are able to build up their number inside the host cell. And you can see at a time, these many dark particles are there, and these are actually coronaviruses. So scientists are capable to culture cells in the laboratory, and they are capable to increase the number of these viruses that will be useful for various purpose. Maybe the S proteins could be used for making vaccines. Such kind of endeavors are already going on. So that is a different strategy and story. Now in this slide, you can see the classification of coronaviruses. See, being biology person, people will be knowing that the organisms are classified into different, taxonomic categories. Likewise, viruses are also classified, and the International Committee on Taxonomy of Viruses help to classify viruses. So what happens, this coronavirus that belongs to family Coronaviridae, because viruses are also classified into orders, families, subfamilies, and genera. So Coronaviridae is a family which is further divided into 2 subfamilies, but it's one subfamily, that is Coronavirinae. It is further divided into 4 genera, that is alpha coronavirus, beta, delta, and gamma coronavirus. So these are 4 genera. And out of these 4 genera, this coronavirus belongs to beta coronavirus group. And this one is actually a specific name, that is SARS coronavirus 2 is a specific name. You can see MERS, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. It is already there. It has already resulted death of so many people wherever it started, spreading. Severe acute respiratory syndrome coronavirus. So these 3 are phylogenetically connected to each other. Means you can say that one form underwent mutational changes and that gave rise to the other form. So such kind of mutational changes will be there. And this classification is actually based on the structure of viruses. In the earlier slide, I just showed varying shapes and sizes of viruses. So based on the structure, morphology, type of genetic material viruses possess, and the way their messenger RNA is synthesized or protein synthesis take place, all these criteria or characteristics are actually considered to classify viruses. So we have been able to classify it, and we have found that it is close to SARS coronavirus or MERS coronavirus. So there is phylogenetic relationship, evolutionary, they are connected to each other. Now, we are also aware that these viruses, they have varying, incubation period. This coronavirus, it has 2 to 14 days incubation period in our cells, and that is why people are advised to go for quarantine for 14 days. There may be exceptional cases where individual may be incubating the virus in the body for more than 20 days or 24 days. But it takes some time, and you will find that different kinds of viruses that take varying time to incubate or build up their number in our body, and then only they show the symptom. So in case of coronavirus, this symptom may be appearing between 2 to 14 days. If you see the genome size of this virus, it is of approximately 30,000 nucleotide bases. And the first person who was there in Wuhan, is actually RNA content was sequenced from one end to the other. Exactly 29,811 nucleotide bases were actually observed in that individual. Out of them,
the exact number of adenine, cytosine, guanine, and uracil bases were actually observed, and their percentage was seen to be 29%, 18%, 19%, and 32% respectively. So I can say that this particular virus has totally been sequenced. Its specific areas which code for different proteins are known, and the molecular mechanism that how it is assembled, everything is now known to us. Genomic characteristic of this virus has enabled it to be resistant to human host and undergo evolutionary changes. See here, this is also the genomics structure of a virus, in which you can see the different the open reading frames which are actually responsible for the synthesis of different proteins. Some of the proteins which are essentially needed and which this virus can synthesize on its own, that is its protease, which is used to split protein into segments, replicase, which is used to synthesize its messenger RNA, helicase to open RNA, complement repairing, and then spike protein S1 and S2, which are actually essential for binding with the host cell membrane. See here in this slide, one can see that those organisms which have larger genomic size, like we have quite large genomic size, around 3.2 into 10 to the power 9 base pairs genome size we have. And in our case, the rate of mutation is slow. If you see here the rate of mutation on x-axis, it is slower in our case. Whereas the very fast, mutation rate, or it is highest in case of viroid. Viroids are actually RNA molecules. They do not possess protein, and they mainly infect plant cells. So they have highest mutation rate. Whereas viruses, particularly RNA viruses, they have slower, means they have also, high mutation rate. So, and single stranded DNA, such viruses, they have even slower mutation rate. So you can see that these are organisms, and the rate of mutation is shown, indicating that there is relationship between genome size and mutation rate. Now we can say by seeing it that these viruses will undergo mutational changes in the future also, and we will have to face such kind of situation in maybe in remote future, because this is not the end of a story. Means such kind of viruses, even those who have become dormant at the present stage, may experience some random, mutation in them, and could be virulent at one day. So it is totally unpredictable that what will happen in the future. Then this particular virus, SARS coronavirus 2, we have observed so far two different strains in it. One is S strain, which is actually the oldest strain of the virus. And another one is L strain, which is mutated form of S strain. But we find that this S strain causes milder illness, whereas L strain, it is more serious one, and it causes, and in 30% of individuals, S strain is found, whereas 70% individual possess L strain, and those who have better immune system, they actually, they are capable to fight this infection. Now, S strain is less aggressive and slow spreading, whereas the L strain is more aggressive and faster spreading. Continuous to infect new patients at a steady rate, that is characteristic of S strain. This L strain was observed in Wuhan, and from that it has now gone to the different areas of the world. Even in a single person, sometimes S and L, both strain virus could be seen. It means that individual gets infected at two spots, and that is why the virus of both strains could be observed in that such individuals. See, we are also capable to have mutations. We experience mutations. These are the process like mutation, recombination, independent assortment of genes, hybridization. Through these processes, genetic variations are created in our population. Among the individuals of a population, these are the ways by which the variations could be created. So
we are actually genetically different from each other. And that is why we show varying immune response. We means every individual does not show similar kind of immune response. Now, but in case of viruses, the genetic changes occur mainly through replication errors and recombination during its jump between organisms. Now, this fight against fatal microbes will ever go till existence of life on this planet. Such challenges are inevitable, means are likely to happen, and because of our unjudicious approach towards nature, the future human races may face even more serious events due to highly altered strains of bacteria and viruses. Finally, I will say that this pandemic has left its impact on the entire global human society, influencing all kinds of life activities. It has affected our health, education, economy, social bonding, individual behavior, etc. And because of this, we expect very unprecedented change in our existing system. Viruses have had a major impact during the course of our evolution. The human race would be facing such encounters in future too. Our steady efforts to overcome the deadly infectious disease by discovering new drugs and vaccine will be going on, and we hope that we shall be able to get the solution very soon. Thank you. Thank you everybody for giving me chance to speak on this occasion. Thank you so much, sir. Moving on to our next speaker, Dr. Ishwar Saran Bharadwaj, sir, Dean, Faculty of Medical Science and Health, Gurukul Kangra University, Haridwar. हेलो Yes, sir, you are audible, sir. ये वीडियो नहीं आ रहा ना? Sir, वीडियो नहीं आ रहा? हाँ अब आया. Yes, sir, you may start. सर आप स्टार्ट कर सकते हैं. एसी बंद कर. ये पंखा. ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. Impact of COVID-19 pandemic on health and education विषय पर आयोजित इस वेबिनार में मैं सभी प्रतिभागियों का, आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विशेष रूप से राजीव मिश्रा जी जिन्होंने संपर्क किया और जहां ये आयोजित हो रही है उसके वाइस चांसलर अभी एक बहन बोल रही थी, मुझे नाम का नहीं पता, उनका भी मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहाँ सम्मिलित होने का अवसर दिया. बहुत ही रेलेवेंट ये सब्जेक्ट है जो आपने रखा है. आज इस महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है
और इसका समाधान खोजने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं, जबकि अभी तक कोई समाधान इसका मिला नहीं। इसलिए जो आपने टॉपिक रखा है हेल्थ और एजुकेशन, दोनों के ऊपर ही बहुत ही प्रभाव छोड़ा है। आज एजुकेशन सिस्टम भी इसके ऊपर, ये देखिए कि लगातार मंत्रालय की तरफ से भी गोष्ठियां चल रही हैं, जहां विचार किया जा रहा है कि कैसे हम शिक्षण करें और कैसे परीक्षाएं करें, कैसे इनके सेशनल एग्जाम लें, कैसे रिजल्ट घोषित करें, अगला सत्र शून्य ना हो, उसके अगले सत्र की कैसे तैयारी करें, और कब ये सब होगा, इसके लिए अभी तक विचार चल रहा है और शिक्षण संस्थाएं अभी तक भी खुली नहीं है। जो शिक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ के जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो बहुत ज्यादा है। आज घर में बैठ करके लोग विचार कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस का, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पूरी दुनिया में इतना विस्तार होता जा रहा है, बड़ा चिंतनीय है। और अभी पीछे एक सर्वे करके कहा जा रहा था कि लगभग दिसंबर एंड तक पूरा भारत भी इससे ग्रस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों को मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है और फिजिकल भी हो रही है। घर में बैठे हैं तो ज्यादातर उदर विकारों से ग्रस्त हैं और मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। इनके विषय में भी देखा जाए, तनाव तो सामान्य स्थिति है, तनाव के बाद में ऐसी स्थिति आ रही है कि अनिद्रा हो गई है, आत्महत्या की प्रवृत्ति आ रही है। कुछ लोग इस उससे ग्रस्त हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, और अभी तक उससे निकलने का उपाय कोई सामने ऐसा नहीं आ रहा जो जाके लोग उसकी शरण ले। तो मैं समझता हूँ कि योग उसके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, जो शारीरिक भी और मानसिक भी विकारों से हमें मुक्ति दिला सकता है, और घर में रह करके बिना खर्च के किया जा सकता है। हम अपने घर में रहें, लेकिन हमारा चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है सकारात्मक चिंतन की, और सकारात्मक चिंतन होगा तो हम अपने आप को इस समस्या से निपटने के लिए तैयार कर लेंगे। हम जब सकारात्मक चिंतन करेंगे तो विषम परिस्थितियों में भी जीने की आशा हम में जीवित रहेगी। जब हम अपनी समस्याओं को ज्यादा बड़ा मानने लगते हैं तो वो समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय हम उनके बोझ में दब जाते हैं, और बोझ में दबने के बाद उससे उबर नहीं पाते, इसलिए आत्महत्या तक की प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है। जब जीना मुश्किल लगने लगे तब व्यक्ति आत्महत्या की तरफ को जाता है, और आत्महत्या कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियों में बड़ा धैर्यपूर्वक मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना है। सीमित संसाधनों में भी हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है। आज हालांकि भारत की तरफ से भी बहुत तैयारी की गई, और जो लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमने इसकी तैयारी कर ली थी, और तैयारी करने के बाद अब हम इसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो हमें अपने आप को जब इस समस्या से बचाना है तो उसके लिए सकारात्मक सोच की मैंने बात की, और उसके साथ अनिद्रा की स्थिति है तो निद्रा पूरी लेने के लिए हमें शवासन और योग निद्रा का प्रयोग करना चाहिए। मेंटल
शांति के लिए ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। घर में रह के हम आराम से ये सब काम कर सकते हैं। ये समस्या जो स्थिति है उसको निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। कुछ जो शारीरिक समस्याएं हैं, कुछ मेंटल समस्याएं हैं, उनके लिए हम योग के जो साधन हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। योग में षटकर्म की क्रियाएं हैं जो शोधन करती हैं, उनका प्रयोग करें। उनमें धोती है, वस्त्र धोती, वमन धोती, इनका प्रयोग करें तो कफ की निवृत्ति हो जाती है। और ये वायरस भी कफ प्रवृत्ति है तो इसकी हम कंठ में ही निवृत्ति कर लेंगे, बाहर निकल जाएगा तो अंदर इन्फेक्शन जो फेफड़ों में करता है वो नहीं करेगा। ऐसे ही नेति का प्रयोग करेंगे, नासा मार्ग साफ हो जाएगा। नेति, सूत्र नेति, जल नेति और फिर कपालभाति करें। तो जैसे बर्तन को बांध करके उसकी सफाई की जाती, फिर धोया जाता है पानी से, तो सूत्र नेति, जल नेति तो ये काम करेंगी। और कपालभाति तो जैसे हवा से सुखाया जाता है उसका प्रयोग करेंगे तो पूरा नासा मार्ग साफ हो जाएगा। और जब नासा मार्ग साफ होगा तो दो लक्षण जो बताए हैं, जुकाम और खांसी, वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर किसी का अटैक भी हो जाए कोरोना, तो वो इनका प्रयोग करके उससे बच सकता है। और मैं समझता हूँ प्रारंभिक स्थिति में अगर इनका प्रयोग कर लिया जाए तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसा दूरी बनाने और अपने आप को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है वो तो है ही, साथ में इनका प्रयोग कर लें। बाकी धोती है, पूरा सफाई करने वाली है। मेडिटेशन मैंने बताया अभी, मेंटल उसके लिए है। योग निद्रा है अनिद्रा के लिए। साथ ही आसनों का प्रयोग करके शरीर को स्वस्थ रखने की स्थिति है। एका आसनेन रुजोहंती, आसन के द्वारा रोग दूर होते हैं। और आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है, शरीर मजबूत होता है। तो वो जो आसन की स्थिति है वो कुछ सिंपल आसन करें। सिंपल आसन का मतलब है जो आसानी से कर सके। और आसन भी सीख करके करने, क्रियाएं भी सीख के करनी है, किसी अच्छे योग्य प्रशिक्षक से सीख करके इनका प्रयोग करें। तो जो आसनों की स्थिति है ना, उसमें आप सिंपल आसन करेंगे, उसका जितना उसको रोकने की स्थिति है, जितना रोकने का समय आप देंगे उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। केवल आपने आसन कर लिया फिर वापस आ गए, उसका तो केवल व्यायाम तक है। लेकिन अगर आपने आसन को रोक लिया और उसका प्रयोग किया तो अंतर तक वो काम करता है, अंदर मांसपेशियां और तंत्र तक काम करने वाला है। आसन का प्रयोग करें। प्राणायाम का प्रयोग बहुत उपयोगी है। प्राणायाम के द्वारा ये कहा है युक्तिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करें। अब जब युक्तिपूर्वक का है यानी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ, अब हम प्राणायाम करने लगते हैं, बंधों का पता नहीं है, बंधों का प्रयोग नहीं करेंगे, वायु प्रकुपित होकर के अपना दुष्प्रभाव जब करती है तो रोग हो जाते हैं और मानसिक विकृति होने की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सीख करके प्राणायाम का अभ्यास करें और बंधों का प्रयोग किए बिना श्वास को रोकने की क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम सीख लिया और करने लगे लेकिन बंधों का प्रयोग नहीं किया तो उसका दुष्प्रभाव होगा, वो फायदे की बजाय नुकसान करने वाला होगा। इसलिए कहा है युक्तिपूर्वक करें। और अगर ठीक नहीं किया तो हिक्का काशस्य श्वासस्य शिरः कर्णाक्ष वेदना भवन्ते विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। हिचकी आना, खांसी होना, श्वास रोग होना और आंख कान सिर में दर्द होना, इस प्रकार के बहुत सारे रोग हैं जो प्राणायाम के गलत अभ्यास से हो जाते हैं और फिर वो औषधि उपचार के बाद भी
पूरी तरह से ठीक नहीं होते। प्राणायाम का अभ्यास सोच समझ के करें। जैसे प्राण बहुत ही पावरफुल है, प्राण को कंट्रोल करना भी कठिन है, लेकिन प्राण को धीरे धीरे वश में करने का विधान है। इसलिए कहा यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे शेर, हाथी आदि जो जंगली जानवर जो एकदम से हमारे सामने आ जाएंगे, अटैक करेंगे, उनको हम वश में नहीं कर सकते। उनको धीरे धीरे वश में करके कंट्रोल में करने के बाद, जब सर्कस में आपने देखा होगा कि हाथी भी हमारे कहने से काम कर रहा है, शेर भी हमारे कहने से काम कर रहा है, वो इसलिए कि उसको हमने इतना वश में कर लिया है कि अब वो हमारे वश में, हम जैसा कहते हैं वैसा करेंगे। तो ऐसे ही प्राण को धीरे धीरे जब वश में करेंगे तो उसकी घातकता नहीं होगी, और उसको कंट्रोल करने के बाद जब हम उनका उपयोग करेंगे तो अपने अनुकूल कर पाएंगे। जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे। तो प्राण का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्राण का अभ्यास करें। तो प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ये सावधानियां बरतें। इस स्थिति में हम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो रोग अटैक ही नहीं कर पाएगा। प्राण को वाइटल फोर्स कहा है, तो वो फोर्स है, उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसको जब अभ्यास करके अपने वश में कर लें तब। आपने देखा होगा कि प्राण के अभ्यास से अपने वक्ष स्थल के ऊपर सैकड़ों किलो का पत्थर रख करके लोग तोड़वाते हैं, जो ऐसा प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों को रोक लेते हैं। वो प्राण की फोर्स है, इसलिए प्राण का अभ्यास करना जरूरी है। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन फिजियोलॉजी को मेंटेन करने वाला है। भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आएगा। इम्यूनिटी सभी बढ़ाते हैं, लेकिन भस्त्रिका का प्रयोग करके हम ज्यादा अपने आप को शक्ति दे पाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास करें, मेडिटेशन का करें, तो दोनों प्राणायाम भी और मेडिटेशन भी मानसिक रोगों को दूर करने में सहायक है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से हम योग का उपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। ये हेल्थ का मैंने एस्पेक्ट थोड़ा सा बताया। अभी हेल्थ की दृष्टि से हम देखें तो भोजन की आवश्यकता सबसे पहली है, क्योंकि जो भोजन हम करेंगे उसी का रस बनेगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। इसलिए हम जो भोजन करें वो पोषण करने वाला हो, सात्विक और शीघ्र पचने वाला हो, जिसके द्वारा रस ठीक मात्रा में बने, और ठीक तरह से बना हुआ रस इन 7 धातुओं की पुष्टि करने वाला होगा। वही जो शुक्र धातु है ओज में परिवर्तित होती है, जो इम्यूनिटी की सूचक है। हमें अगर शरीर में ताकत है, ये भोजन के माध्यम से ही शरीर आता है, क्योंकि शरीर बनता ही भोजन से है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो प्राणी हैं वो अन्न से बनते हैं। तो इस अन्न के ठीक तरह से पाचन से पोषण होगा, उस पोषण से इम्यूनिटी बनेगी, और उस इम्यूनिटी के माध्यम से हम रोग का प्रतिकार कर पाएंगे। इसलिए भोजन बहुत जरूरी है। भोजन के लिए भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम सब तत्व तो ले ही, साथ ही ऐसा भोजन करना है जो हमें बल देने वाला हो और शीघ्र ही पचने वाला हो। भोजन करने का तरीका हमारा ठीक होना चाहिए, भोजन करने का समय ठीक होना चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो सूर्योदय होता है उसके साथ साथ हमारी जठराग्नि बढ़ती है और भोजन की पाचन करने की स्थिति मजबूत रहती है। जैसे जैसे सूर्यास्त की तरफ को जाते हैं वैसे वैसे जठराग्नि मंद होने लगती है, रात्रि में और भी मंद हो जाती है।
इसलिए जो भरपेट खाने वाली स्थिति है वो आप प्रातःकाल जो नाश्ते का टाइम है उसमें भरपेट भोजन कर सकते हैं उस समय, और बाद में दिन में हल्का लें और शाम को बिल्कुल हल्का लें। रात में दूध लें, दूध के साथ में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। साथ ही कुछ प्रातःकाल आप गिलोय है और तुलसी है, इस तरह का जो वनस्पतियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़े। तो आहार का ध्यान रखना है, और आहार ही समझिए कि मेन आधार है इम्यूनिटी के लिए भी। तो हमारा जो गीता में कहा ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, जो प्रॉपर डाइट लेता है, संतुलित आहार लेता है वो, और उसका विहार, उसका आचरण, उसका व्यवहार वो ठीक हो, अनुकूल हो, साथ ही कर्म ठीक हो, और सोना और जागना ठीक है। आज न सोने का पता है न जागने का। रात में 2-2 बजे सोते हैं, 10-10 बजे सुबह उठते हैं, तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी, इम्यूनिटी कहाँ बढ़ेगी, रोग का घर हो जाएगी, और उदर विकार उसको अवश्य में हो जाएंगे। इसलिए हमें सोने का जो उचित टाइम है वो 9 बजे है, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे है। इसके बाद सुबह उठने का टाइम 4 बजे, और 4 बजे के बाद में जो हमारी दैनिक चर्या शुरू हो जाएगी, तो रात में 9 बजे अपने आप ही नींद आ जाएगी। अनिद्रा की स्थिति में हम दूसरी जो अभी बताई मैंने, योग निद्रा और शवासन का प्रयोग कर सकते हैं, और शरीर में जब व्यायाम होगा, थकान होगी, तो उससे भी नींद आएगी। इस तरह योग की क्रियाओं का अभ्यास करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा, क्योंकि समय 20 मिनट कहा था मुझे, तो मुझे लगता है कि 20 मिनट भी होने वाले होंगे, तो समय कम है, इसके बारे में डिटेल में तो बात करना संभव नहीं है। फिर भी मैंने जो कुछ मेरे विचार हैं वो आपके सामने रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच सर। जी मैम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Moving on to our next speaker, Dr. NL Yadav sir, consultant, Balrampur Hospital, Lucknow. नमस्कार। हेलो, वीडियो आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ नमस्कार। आज के इस वेबिनार के आयोजक मंडल तथा वक्तागण एवं अतिथिगण तथा विदेश व देश के सभी प्रतिभागी, आप सभी को सादर नमस्कार। आज इस वेबिनार के अवसर पर जो मैंने टॉपिक लिया है, रोल ऑफ योगिक षटकर्म एंड नेचर के लाइफ स्टाइल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड। मित्रों, बता दें कि कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है, तबाह है, और इसे में एक ढूंढा ये जा रहा है इसका इलाज कहीं ना कहीं किसी रूप में मिले। तो आपको बता दें कि यौगिक क्रियाओं में खासकर षटकर्म जो हमारे शरीर के शोधन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और शारीरिक शोधन जैसा कि आप लोग हम जानते हैं कि चाहे मोटरसाइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक जितने भी हमारे इंजन युक्त संसाधन हैं, सबका टाइम टू टाइम हम सर्विस कराते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में कभी अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं करा पाता।
और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर के एट लास्ट में बीमारियों से ही उसकी मृत्यु होती है। मित्रों, मैं बता दूं कि यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, लाभप्रद है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सत्कर्म में नेति क्रिया, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक तथा कपालभाति, ये हमारे शरीर शोधन में बहुत ही उपयोगी शोधन क्रियाएं हैं। और जो हमारे नाक, कान, गला, आमाशय, बड़ी आंत, ये धुलाई और सफाई में बड़ा मददगार है तथा ब्रेन के भी वॉशिंग में, क्लीनिंग में बड़ा मददगार है। तो आज हम थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे, अब हम सब जब जानते हैं कि जब भी कभी सर्दी और जुकाम या खांसी होती है तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो भी उल्लेखित है कि जलनेति क्रिया बड़ी कारगर है। जलनेति क्रिया के लिए हमें करना क्या होता है कि 400 ml से 500 ml पानी लिया और पानी को भी पहले बॉइल्ड करेंगे। जो पीने का पानी होता है उसे बॉइल्ड करना है। बॉइल करने के पश्चात उसमें 500 ml में लगभग 2.5 से 3 ग्राम नमक, खाने वाला नमक डालने के बाद खूब डिजॉल्व कर दीजिए और गुनगुना रहने तक की स्थिति में उसे ठंडा करें। गुनगुना हो जाए, इसके बाद अपने बाई नॉस्ट्रल से सांस को, बाई नॉस्ट्रल से उस पानी को गिराएंगे, लगाएंगे टोटी को। टोटी देखेंगे, खासकर इस तरह का जलनेति का पात्र होता है। ये जलनेति का पात्र जो कि हमारे जलनेति क्रिया में बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो इसमें हम ही अभी आपके सामने जलनेति का जो अभ्यास है, खासकर बाईं नासिका से डालेंगे और दाईं नासिका से ऑटो प्रोसेस से पानी निकलेंगे और दाईं से पानी डालेंगे बाईं नासिका से और बाईं नासिका से पानी निकलेंगे। ये पानी डालना और पानी को निकलना, इसमें क्या ऐसा खासियत है कि जिससे कि सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में तत्काल राहत मिलती है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो कि वायरस जनित समस्याएं होती है वो नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से व्यक्ति को ग्रसित करती है। तो मुझे ये बात बताना है आपको कि चूंकि जलनेति की जो पानी होता है जिसे हम बॉयल करने के साथ नमक डाल करके तैयार करते हैं, वो फुल्ली मेडिकेटेड वाटर हो जाता है और यह वायरस किलर है। सामान्यतः आपको कितनी भी सर्दी, जुकाम, खांसी आ रही है, केवल जलनेति क्रिया अर्थात नमक युक्त पानी का प्रयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इन्फ्लुएंजा, सर्दी, जुकाम, खांसी दूर। मेरा यह मानना है कि यदि यह वायरस जनित समस्या दूर हो सकती है तो कोविड-19 का जो वायरस है इसके लिए भी प्रयोग दिया जा सकता है और लाभ मिलना। दूसरी बात यह है कि साथ साथ हम ये मानते हैं कि नाक, कान, गला तथा आमाशय, इनको भी शोधित करना आवश्यक है क्योंकि वायरस का जो अटैक है नाक, कान, गला तथा फेफड़ा और स्टमक में हो सकता है। तो उसके लिए करना यह है कि वैध कर्म कपालभाति, शीत कर्म कपालभाति कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिमॉन्स्ट्रेशन जलनेति क्रिया का करवाएंगे, जरा आप लोग देखेंगे। जलनेति क्रिया के लिए हमारे बीच में साधक है, ये जलनेति क्रिया करके दिखा रहे हैं। साफ आ रहा है?
जैसा कि आपने देखा कि बाई नासिका से पानी को डाला गया, दाई से निकाला है इन्होंने, और दाई नासिका से वह मेडिकेटेड वाटर डाला गया और बाई नासिका से निकला। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि सांस मुंह से लेना है, नाक से नहीं। दूसरी बात, जलनेती क्रिया के पश्चात नाक का शोधन बहुत आवश्यक है। अगर आपने नाक को ठीक ढंग से स्वच्छ नहीं किया तो आपके सिर में दर्द हो सकता है, रक्त बन सकता है, रक्त बना रह सकता है और दिन भर तनाव में रह सकते हैं। इसलिए भस्त्रिका के माध्यम से या कपालभाति के माध्यम से आप इसे पानी को निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद जाकर के पेट के बल लेट जाए और सिर का फोरहेड को जमीन पर लगा। ये देखेंगे आप कि पानी का, जलनेती का पानी अगर कुछ बचा भी था तो वो भी बाहर निकला। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा वयुत कर्म का, जैसा कि आपने बताया, देखा कि यही वही पार्ट वाटर जो आपने जलनेती क्रिया के लिए लिया था, वैसे ही वही पानी लेंगे और नाक में टोटी से लगाएंगे इसको, टोटी, और मुंह से पानी को निकालना। एक बार लेफ्ट से करेंगे, दूसरी बार राइट से करेंगे। ऐसे में ये होगा कि वयुत कर्म कपालभाति जो होती है, ये भी आपके अगर नासिका तथा गले में अगर वायरस है तो या तो वो निकल आएगा या मारा जाएगा। तो चूंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड वायरस का दुश्मन कहा जा सकता है या एंटी वायरस। तो ये मेरा मानना है कि जलनेती क्रिया, वयुत कर्म कपालभाति और शीत कर्म कपालभाति से अभिप्राय यह है कि मुंह से पानी को लेना है और नाक से पानी को निकालना। मुंह से पानी को लेकर के और नाक को से पानी को निकाल देना है, थोड़ा सा ऐसे झुकाते हैं। तो यौगिक क्षेत्र में कार्य करने तथा लंबे अनुभव का जो वो है एक्सपीरियंस है, वो हम अवगत कराना चाहेंगे कि कैसा भी सर्दी जुकाम खांसी है तो वो देखेंगे केवल सुबह शाम ही कर डालिए तो 2 दिन में सर्दी जुकाम खांसी खत्म हो जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत लोग, चाहे नर्सेज हो या डॉक्टर्स हो या स्टाफ, ड्यूटी से जाने से पहले अगर जलनेती क्रिया करके जाते हैं तथा जो भी प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, सावधानियां बरतते हैं, तो निश्चित रूप से वो कोविड-19 से बच। दूसरी बात, आने के बाद ड्यूटी से आते हैं या शाम को आते हैं तो भी जलनेती क्रिया या और वयुत कर्म कपालभाति का शीत कर्म कपालभाति करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि हमने बताया कि जब नमक आप पानी में डाल देते हैं तो ये एंटी वायरस का रोल अदा करता है और यह पानी हम अपने उन जो भी इससे कोविड-19 से ग्रस्त हैं या बचे रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और साथ ही साथ हमें नेचर की और लाइफ स्टाइल हमारी ठीक करनी होगी और इसे संतुलित करना होगा। प्रातः काल, जैसा कि अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने पूर्व में बताया, प्रातः काल उठने का समय, रात में सोने का समय, खाने का समय बिल्कुल असंतुलित हो गया है। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर डिसऑर्डर, और जिनकी भी इम्यूनिटी पावर डिसऑर्डर है या कम है या असंतुलित होती जा रही है, तो ऐसे में स्वस्थ रहना सामान्य तौर पर भी मुश्किल है। मेरा ये मानना है प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली अपनाएं। प्रातः काल जल्दी उठें, अर्थात सूर्योदय से पूर्व उठें, अथवा सूर्य के उदय के साथ। ज्यादा देर करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर को डिसऑर्डर करता है। साथ ही साथ रात्रि में सोने का जो समय है 9 से 10 बजे तक, खाना खाने पश्चात सो जाना चाहिए। अच्छा हो कि खाना खाने 8 से 9 के बीच में खा लिया जाए रात्रि में, और खाने के बाद कम से कम आधे घंटे वॉकिंग जरूर करना। और इसी के दौरान ये भी बताना चाहूंगा कि प्रातः काल का जो समय है उसमें हमें प्रातः भ्रमण,
जॉगिंग, दौड़, व्यायाम, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान हम कर सकते हैं। इससे ये अभ्यास से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फलस्वरूप हम कोविड-19 से ही नहीं बल्कि नाना प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं। और आहार में हमें चोकर समेत आटे की चपाती का भी प्रयोग करना है। चोकर समेत चपाती जो होती है हमारी, वो पेट के शोधन में आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल इत्यादि की जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होने पाएंगी। तथा चोकर समेत आटे की रोटी चपाती हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अधिकतम लोग क्या होते हैं कि दवाओं का प्रयोग करते हैं पेट को साफ। ऐसे में हमें फाइबर युक्त अधिक मात्रा में भोजन हमारे शरीर में पहुंचना चाहिए। उसके लिए चोकर समेत चपाती बहुत ही उपयोगी। और समय समय पर यह भी ध्यान रखना है कि इसमें हमें स्पंज बाथ भी कर सकते हैं। स्पंज बाथ क्या होता है? एक आप 2.5 से 3 लीटर पानी लीजिए और एक हैंड टॉवल लें, उसमें डुबोएं, निचोड़ें और पूरे सिर से लेकर के पैर तक, अर्थात पहले हेड को, फिर चेहरे को, फिर गला और गर्दन को पूरा प्रेस से रगड़ रगड़ के सफाई। उस पानी में आप आधा या 1 नींबू रस डाल सकते हैं। तत्पश्चात जो है दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड लें, फ्रंट एंड बैक साइड लें तथा पैरों को ले लें। इस तरह से पूरी सफाई करने के बाद नहाने से पहले इसको करना। जब ये कंप्लीट स्पंज बाथ हो जाए तो तत्पश्चात आपको ताजे पानी से नहाना। और इस बात से आपके शरीर में टॉक्सिसिटी जो होती है, विषाक्त द्रव्य होते हैं, वो निकाल करके बाहर निकल आते हैं तथा आपके रोम छिद्र, हेयर फॉलिकल खुल जाते हैं। इन्हीं यौगिक और नेचर क्योर के कुछ यौगिक ट्रीटमेंट, कुछ विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ एवं संतुलित रख सकते हैं तथा कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। Thank you, sir. Thank you so much. Now I will request Dr. Shikha Gupta ma'am from Board of Naturopathy and Yoga UP for a session. वॉल्यूम आ रहा है? इज इट ओके? मैम थोड़ी कम है वॉल्यूम। ओके, अभी? यस मैम। आप सभी को हमारा प्राकृतिक नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक था वो है रोल ऑफ नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स इन कोविड-19 क्राइसिस। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत किस तरह से मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं कोविड-19 क्राइसिस से ऊपर आने के लिए। जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक चिकित्सा को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। अगर इसको हम और बखूबी समझ लें तो हम और ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। नेचुरोपैथी का पहला प्रिंसिपल है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मतलब नेचर इटसेल्फ एज अ हीलर। प्रकृति अपना खुद स्वयं हीलिंग करती है। हमारी बॉडी का अपना एक विजडम है, एक इम्यून सिस्टम है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो लगातार हमारी बॉडी को हील करने में लगी रहती है। चाहे छोटा सा कोई पार्टिकल आंख में चला जाए तो टीयरिंग के थ्रू उसे बाहर निकालने में कोशिश करती है। कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी माइक्रो एंजाइम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, नाक के थ्रू जाता है तो छींके, स्नीजिंग के थ्रू इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। माउथ के थ्रू जाता है तो वोमिटिंग के थ्रू हमें इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी इटसेल्फ हीलिंग का काम करता है। बट हमें ये समझना होगा कि हम अपनी बॉडी को नेचुरल प्लेटफॉर्म पे रखें, नेचुरल उसको एटमॉस्फेयर दें। नेचुरल एटमॉस्फेयर देने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है ये है कि हम अपनी डाइट को अल्कलाइन और एसिडिक डाइट को मेंटेन करें। मींस 80% हमारा डाइट अल्कलाइन होना चाहिए, जो कि हमारे फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से,
सैलेड से, सूप से, नट्स से आता हो और 20% डाइट ही कुक्ड फॉर्म में हो, जो कि हमारी ना सिर्फ हीलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेगा बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को भी अच्छा रखेगा और हम बेहतर होते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम अल्कलाइन और एसिडिक डाइट को मेंटेन रखते हुए अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये बेसिक प्रिंसिपल हमें फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड प्रिंसिपल नेचुरोपैथी का है कि फर्स्ट डू नॉट हार्म, मीन्स हमें बेसिकली अपनी बॉडी को सबसे कम हार्म पे रखना चाहिए। लाइक जब जितना जरूरत हो उतने टेस्ट कराए जाएं और जितनी कम से कम जरूरत हो उतना ही मेडिकेशन किया जाए और उतना ही हम ऑपरेशन या सर्जरीज की जाएं। जितना बॉडी को हम रेस्ट पे डालेंगे बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करने लगेगी। तो बॉडी को कम से कम तकलीफ दी जाए जिससे बॉडी अपने आप काम करे। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो नेचुरोपैथी में करते हैं कि ट्रीट द रूट कॉज नॉट द सिम्टम। तो अपने रूट कॉज पे काम करना चाहिए। सिम्टम में जैसे एक एग्जाम्पल मान लें कि अगर हेडेक हो रहा है तो हेडेक के केस में हम हेडेक की मेडिसिन खाने लग जाते हैं, पर अगर उसका पेशेंट का काउंसलिंग किया जाए तो हेडेक बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से हो सकता है हेडेक हो रहा हो, माइग्रेन से हो सकता है हेडेक हो रहा हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है हाइपर एसिडिटी के केस में आपका हेडेक हो रहा हो। इस तरीके से बहुत सारे कॉजेस हैं। स्ट्रेस, तनाव लगातार रहने से हेडेक हो रहा हो, आईसाइट वीक हो तो हेडेक हो रहा हो। तो इस तरीके से हम सिम्टम पे तो काम करें ही, साथ में हम उसके रूट कॉज पे भी जाएं और रूट कॉज पे भी काम करें पेशेंट पे, जिससे हम उसको पूरा का पूरा ठीक कर सकें। और जब हम उसको पूरा ठीक करते हैं तो ना सिर्फ पेशेंट पूरा ठीक होता है बल्कि एक इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होता है। फोर्थ प्रिंसिपल है कि डॉक्टर एज ए टीचर, लाइक जो भी नेचुरोपैथ डॉक्टर्स हैं या और भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें उनके पास आए हुए मरीज को एज ए टीचर बिहेव करना चाहिए। मींस उनके हेल्थ को न सिर्फ उसी वक्त ठीक किया जाए बल्कि उनका एक लाइफ स्टाइल इस तरह से मैनेज किया जाए जिससे वो होल लाइफ उस डिजीज का मैनेजमेंट करते हुए एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बिता सकें और हमेशा एवर हेल्दी रह सकें। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। जैसा कि और रिनाउंड स्पीकर्स ने बताया कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो आज सिर्फ मेंटल, फिजिकल, सोशल नहीं है, प्लस स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल जो साइट है वो कहीं ना कहीं प्राणायाम, योग निद्रा, मेडिटेशन उसको पूरा करता है। और इस तरीके से अगर जैसे हाई ब्लड प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल, तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में योग निद्रा का अभ्यास, मेडिटेशंस का अभ्यास बहुत ही कारगर साबित होता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जैसा कि केजीएमयू ने किया है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच किया कि हम सबको ला करके एक प्लेटफॉर्म दिया। और थैंक यू डॉक्टर राजीव की हम लोग सब लोग मिल करके एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत इस इतनी बड़ी क्राइसिस से ऊपर आ सकें। सिक्स्थ वन इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में जो सबसे पहली बात आती है कि नेचुरोपैथी का प्रिवेंशन, फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन ही सब लोग आज कारगर है और कर रहे हैं, लाइक कि हम बीमारी को आने ही ना दें। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कारगर हैं उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, सोशल डिस्टेंसिंग है या गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तो हैं ही। इसमें स्टीम थेरेपी, स्टीम इनहेलेशन जो कि आपके सारे जर्म्स को किल करने में सक्षम है, सनबीम थेरेपी, सूर्य किरण चिकित्सा, सन बाथ लेना 20 मिनट्स 40 मिनट्स जितना भी आपको सक्षम हो, मॉर्निंग सनलाइट में बैठना आपके लिए हमेशा कारगर साबित हो सकता है। तो इस तरीके से जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि हमने बीमारी को आने ही नहीं दिया और अपनी बॉडी को अल्कलाइन डाइट पे रखा। देन अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम फर्स्ट एड की तरह उसे बॉडी को रेस्ट पे डालें जिससे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ठीक हो, बॉडी को फ्रूट्स और लिक्विड पे डालें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत आ रही है तो एनिमा लेकर के कोलोन एंड
रेक्टम क्लीनिंग की जाए, कोलोन इरिगेशन किया जाए, जिससे बॉडी फिर से रिस्पॉन्ड करे, एक्टिवेट हो, और रेस्ट पे डालने से उसका पूरा बॉडी सिस्टम रिजुनोवेट हो और प्रॉपर काम करे। तो इस तरीके से ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में यही है कि एक्यूट डिजीजेस के केस में हमें बॉडी को रेस्ट पे डालना चाहिए, जिससे जो इम्यून सिस्टम हम सप्रेस करते आए हैं अभी तक, कि हल्की सी भी स्नीजिंग पे हम मेडिसिन खा लेते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, तो वैसा ना करें। शुरुआत के टाइम पे किसी भी तरह के इनिशियल इन्फेक्शन का मतलब है बॉडी अपने आप उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, और आप उसे सप्रेस ना करें, जबकि उसकी हेल्प करें कि वो उन टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को बाहर निकाल सके और बॉडी की मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर सके, डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इस केस में हम अपनी बॉडी को रेस्ट दें, ना ही सिर्फ फिजिकल बॉडी को रेस्ट दें, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट दें। जूसेस, लिक्विड्स और नारियल पानी, इस तरीके के अल्कलाइन जूसेस या फ्रूट्स पे बॉडी को रख करके हम 2 से 3 दिन उसकी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हैं। थर्ड प्रिवेंशन आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में नो डाउट एलोपैथ को साथ लेते हुए, हम एक नेचुरल लाइफस्टाइल को साथ में रखते हुए एक बहुत अच्छी हेल्थ पेशेंट को दे सकते हैं। आई होप डॉक्टर राजीव ने मुझे 10 मिनट का ही टाइम दिया था। लास्ट स्पीकर्स को ऐसा ही होता है, थोड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है, इसलिए मैंने अपना समराइज करके बेस्ट देने की आपको कोशिश की है। होप सो नेक्स्ट फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Dr. Shikha Gupta, ma'am, is Director of Health is Wealth Holistic Clinic. She is practicing clinical naturopathy, from 2005 with 15 years of experience. Thank you so much, ma'am. Thank you. Moving on to our next speaker, Dr. Ram Kishore sir, who is an ex-yoga instructor from Defense Institute of Physiology and Allied Sciences. नमस्कार, हमारी आवाज मिल रही है मैम? Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, इस विषय के वेब सेमिनार में आयोजक मंडल के सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और मुख्य रूप से डॉक्टर राजीव मिश्र जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपने विषय पर अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा, जिन्होंने मुझे इस सुअवसर पर भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया। कोविड-19 के संदर्भ में सूर्य नमस्कार एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस विषय पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। अब तक के हमसे पूर्व जिन जिन भी योग के विद्वानों ने अपनी बातें रखी, और अब तक के जो भी कोविड-19 के संदर्भ में चीजें निकल के आई हैं, उनका आउटपुट एक ही निकल के आया है कि इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये जिसके शरीर में जितनी अच्छी होती है, उसका स्तर जितना उच्च होता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव भी कम होता है और वो रिकवरी भी उसके ऊपर जल्दी होती है। इसलिए योग के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो कैसे अभ्यासी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इस पर बात करें। योग के मतानुसार प्राण ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य घटक है, मुख्य कारक। प्राण शरीर के प्रत्येक भाग में जब समुचित मात्रा में प्रवाहित होता रहता है तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर अच्छा रहता है, उच्च रहता है। जितना ज्यादा प्राण का प्रवाह शरीर में बाधित होगा, उतनी ज्यादा समस्याएं होंगी या यह रोग
यह रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। यह शरीर जो प्राण है, ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से प्राण के प्रमुख स्थान जो हैं उन्हें चक्र के नाम से जाना जाता है। चक्रों में प्राण का या ऊर्जा का अकूत भंडार होता है और वहीं से शरीर में प्रवाहित होते हैं। यह प्राण जिस नलिका में प्रवाहित होते हैं उस नलिका को नाड़ियां कहते हैं, जिनकी संख्या योग ग्रंथों में 72,000 या किन ग्रंथों में से थोड़ा कम ज्यादा बताई गई। अगर हम सूर्य नमस्कार के दृष्टि से विचार करें तो सूर्य नमस्कार इन चक्रों पर, बेसिकली जो चक्र हैं, सप्त चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, इन सारे चक्रों पर सूर्य नमस्कार का इस प्रकार से प्रभाव होता है कि ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। ये चक्र एक्टिवेट होते हैं और जब चक्र एक्टिवेट होते हैं तो उनसे ऊर्जा का प्रवाह शरीर में समुचित मात्रा में होने लगता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम क्या करता है? तो सूर्य नमस्कार चक्रों से ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है और प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम, जैसा कि हठ प्रदीपिका के नाम से मैं इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहता हूं। तो प्राण के प्रवाह मार्ग को, यानी कि नाड़ियों को अनुलोम विलोम प्राणायाम साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है, जिससे प्रवाह अच्छे से होने लगता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक सेल तक प्राण प्रवाहित होने लगता है। जितना ज्यादा प्राण का प्रवाह समुचित मात्रा में मिनिमम एफर्ट पे होगा, उतना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर। अब विचार करते हैं कि ये जो प्राण है, ये प्राण शरीर में किस स्तर पर रहता है। यद्यपि इसके 5 भाग कहे गए हैं, लेकिन ये पांचों के 5 जो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा है, उसमें जो अन्नमय कोश के ऊपर की लेयर है, अन्नमय कोश का आधार है, इवन अन्नमय कोश की सोल आत्मा कही गई, प्राणमय कोश, यही प्राण ऊर्जा का पूरा पूरा केंद्र बिंदु है और यही रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार। प्राणमय कोश या रोग प्रतिरोधक क्षमता या चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह और नाड़ियों में प्रवाह का मेंटेन रहना ही कोविड-19 का उपचार है। सूर्य नमस्कार ऊर्जा को एक्टिवेट करके अनुलोम विलोम को प्रभावित करता है। अब अनुलोम प्राणायाम का अभ्यास करें कैसे? क्योंकि टेक्निक तो सरल है, लेफ्ट से भरना, राइट से निकालना, राइट से भरना, लेफ्ट से निकालना, लेकिन आवश्यकता है कि इसमें इसके अतिरिक्त और की बातों को ध्यान में रखें। अभी हठ प्रदीपिका में एक सूत्र श्लोक है, 13 संभवता है, सेकंड चैप्टर का, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् आयुक्ति अभ्यासेन सर्वरोग सम्मुति। इस समय पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कोरोना नहीं, कोई भी रोग, प्राणायाम ऐसा समर्थ योग का साधन है जो सारे के सारे रोगों को नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसकी सही विधि ना हो तो कोई भी रोग इससे उत्पन्न भी हो सकता है। इसलिए प्राणायाम को सही विधि से सीखना और अभ्यास करना सारे रोगों का उपचार है, चाहे वो कोरोना हो या कोई दूसरा। एक बार अभ्यास को देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें, दिस इज ज्ञान मुद्रा, और राइट हैंड प्रणव मुद्रा। इसमें प्रणव मुद्रा भी चलती है, कुछ ग्रंथ इस तरह से कराते हैं, बहुत सारे करेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पर प्रणव मुद्रा का प्रदर्शन कर रहा हूँ। प्रणव मुद्रा बनाने के बाद अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और इन्हीं फिंगर का इस्तेमाल करना है। रंड संहिता के 52वें 53वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा गया है, प्राणायाम के चैप्टर के 52 52-53 सूत्र में, कि इन दो यानी कि मिडल और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना ही नहीं है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम दंड संहिता के इसी श्लोक में इस्तेमाल किया गया है ये सब, जबकि इसी अभ्यास के लिए हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन के नाम से इस प्राणायाम को बताया गया है। इस मुद्रा में करने के बाद यहाँ से देखिए काउंटिंग प्ले हो रही है, 1 2 3 4 इनहेल, 4 4 4 4 सेम काउंटिंग में होल्ड करना और उल्टी गिनती 4 3 2 1 में निकालना। एक बार देखेंगे। अब अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों बांध करके होल्ड, राइट से एक्सेल, इसी से इनहेल,
दूसरे लेफ्ट से एक्सेल। ये एक चक्र नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। जहां तकनीकी की बात है, जो कि प्रतिज्ञा में कहा गया है कि युक्तेन यानी कि युक्ति पूर्वक सही विधि के साथ किया जाए। उसमें पहली बात आती है कि फिंगर का इस्तेमाल न करें। मुख्य बिंदु हम यहाँ पर हाईलाइट करें कि किस फिंगर का इस्तेमाल करें, किसका न करें। हर प्रतिज्ञा में कहा गया है इन दोनों का इस्तेमाल न करें, यानी मिडल और इंडेक्स, जबकि ग्रहण संहिता में कहा गया है कि इन दोनों का न करें। और राइट के लिए थंब का इस्तेमाल, लेफ्ट के लिए रिंग या स्मॉल, इन दोनों में से किसी भी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगर की बात हो गई। फिर इनहेल, होल्ड, एक्सेल, फिर उसी से इनहेल, होल्ड और जिससे शुरू किया था उससे एक्सेल। इसका रेशियो क्या? यद्यपि यहाँ पर हमने ओ 1-1-1 यानी कि 4 सेकंड भरना, 4 सेकंड होल्ड करना और औसतन उतने ही समय में निकालना, यह बात की, जबकि वहां पर रेशियो 1:4:2 की बात कही। तो बिगिनिंग में इस तरह से करके फिर धीरे धीरे हम होल्ड कैपेसिटी को, होल्डिंग ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ होता है कुंभक यानी कि होल्ड करना। एक्चुअल में जो होल्ड का समय है वही प्राणायाम, और होल्डिंग ड्यूरेशन एक लिमिट तक ही हो सकता है, इसलिए इनहेल एक्सेल उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो केवली कुंभक है, जहां पर इनहेल और एक्सेल के बिना होता है, उसी को एक्चुअल में और केवली कुंभक कहा है। अगले स्टेप पे आते हैं कि जब अभ्यास आपका सक जाए तो धीरे धीरे, यानी कि जो भी आप इनहेल का ड्यूरेशन कर रहे हैं या एक्सेल का ड्यूरेशन कर रहे हैं, उस पूरे ड्यूरेशन में स्पीड शुड बी सेम, यानी कि एक ही गति से श्वास लें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग पॉइंट। अगर इस बात का ध्यान नहीं देंगे तो शुरुआती समय में श्वास तेजी से जाएगी और अंत में आप किसी तरह से काम चलाएंगे लास्ट ड्यूरेशन तक। एक्सेल में तो ये अधिकतर होगा कि जैसे आप श्वास निकालना प्रारंभ करेंगे तो शुरू के ही 1 या 2 सेकंड में श्वास बाहर हो जाए और लास्ट में आप किसी तरह काम चलाएंगे। तो इनहेल एक्सेल की जो ड्यूरेशन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, कितना रखना है, जिसमें आप कंफर्ट हो उतना ड्यूरेशन रखें। और रेशियो इस तरह से बिगिनिंग में 1-1 करने के बाद फिर 1-4-1-4-2 यानी कि 4 सेकंड भरें, 4 चौक 16 सेकंड होल्ड करें और 4 दूनी 8 सेकंड एक्सेल करें। ये है रेशियो की बात। फिर रेशियो, स्पीड और ड्यूरेशन, 3 बातें होगी। अब चौथी बात, इन दैट टाइम जो इनहेल एक्सेल हो रहा है, उस इनहेल एक्सेल के सेंसेशन को नासिका में फील करें। और उसके आगे जब ये सारी चीजें आप आदत में आ जाएं और आप स्वभावतः इनको कर सकें तो इनमें दिक्कत ना हो, बिना याद किए, बिना ध्यान दिए, क्योंकि कोई भी अभ्यास जब आप कुछ समय तक कर लेते हैं तो मसल्स मेमोरी का पार्ट हो जाता है और आप आराम से बिना उसको ध्यान किए भी आपको बॉडी उसको करने में सक्षम हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तब आप बाईं नासिका से श्वास लेते समय चंद्रमा का ध्यान करें, चंद्रमा की शीतलता का, और दाईं नासिका से श्वास लेते समय सूर्य की गर्मी का, क्योंकि इस प्राणायाम का जो मुख्य इफेक्ट है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करना, एक्टिवेट करना और दोनों को इक्वल लाना। और जितने भी रोग हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और मेंटल रोग यानी कि जो नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होते हैं या एंडोक्राइन सिस्टम उनका केंद्र बिंदु होता है, तो सारे के सारे रोग का जो जहां से स्टार्ट होता है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का संतुलन ही बिगड़ता है और ये उनको संतुलित करते हैं। इसलिए कोई भी रोग हो, या तो उसमें डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट, अनुलोम विलोम सभी रोगों में लाभकारी है, बशर्ते इसकी टेक्निक सही हो। इसीलिए ग्रंथ ने कहा, क्योंकि एक पॉइंट और मैं करके समाप्त करूंगा, क्योंकि आप देखिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और चित्त की वृत्तियां कब बढ़ेंगी? जब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जितना ज्यादा असंतुलन होगा, मन उतना चंचल होगा, वृत्तियां उतनी बढ़ेगी। और जितना दोनों में समता आएगी उतना ज्यादा वृत्तियां अपने आप कम होती जाएंगी, नंबर ऑफ थॉट्स कम होते जाएंगे। हठ योग, तो हठ योग में हा और ठा का मिलन है। यही बात है अभी हमारे योग के परम गुरु डॉक्टर प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी इस बात को बता चुके हैं। अगर हम गीता की बात करें, समत्तम योग उच्चते, तो इसका भी मतलब वही कि जो समता है वही योग है। समता किसकी? चाहे चित्त की समता हो, चाहे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की समता हो। या हम गीता में दूसरी परिभाषा योगः कर्मसु कौशलम की बात करें तो
कौन सी कर्म की कुशलता योग है? ऐसे कर्म की कुशलता योग है जो कर्म बंधन कारक न बने। तो जितना ज्यादा समृद्धिक पैरासिम्पैथिक इक्वल होते जाएंगे, चंचलता कम होती जाएगी और पूरी तरह से इक्वल हो जाएंगे, तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाह शुरू हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्म शरीर के होंगे, मन के नहीं। और जब शरीर के कर्म होंगे तो उनका कोई फल नहीं। तो यही युक्ति पूर्वक किया जाने वाला अनुलोम विलोम या जो भी प्राणायाम के संदर्भ में है कि यह अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि अगर हम योग के विज्ञान की ओर से देखेंगे तो यह विचारों में समता लाते लाते चित्त को शांत करता है। और वायु जैसे जैसे चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद का जो सिद्धांत है कि जैसे जैसे वायु स्थिर होती जाती है वैसे वैसे मन स्थिर होता जाता है। और सहित प्राणायाम से स्टार्ट करके लास्ट में केवल प्राणायाम में जब साधक या अभ्यासी स्थिर हो जाता है तो पूरी तरह से मन स्थिर हो जाता है या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का समायोजन हो जाता है या सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह शुरू हो जाता है। और यह प्राणमय कोश की या जीवनी शक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, जिस अवस्था में पांचों लेयर या सारे चक्र एक सुनिश्चित दिशा से साथ मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र से संबंधित हो जाते हैं। आप चाहे जिस नजरिए या चित्त पूरी तरह से स्थिर होकर के जहां पर भी मन लगा दिया जाता है, मन वहीं से धारणा ध्यान से समाधि में कन्वर्ट होकर के उसे विषय हो जाता है। तो चाहे हम उस नजरिए से देखें, चाहे रोग के नजरिए से देखें, और कोरोना क्या कोई भी रोग हो, जीवनी शक्ति सारे रोगों का साधन है। इस तरह से रोग से समाधि तक जो एक यात्रा है वह योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसमें से मैंने सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम प्राणायाम के पक्ष को रखने का अभ्यास किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर राम किशोर सिंह जी। आप लखनऊ में कई स्थानों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और योग विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को पूरा ध्यान और उनको स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां दे रहे हैं। हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बैचमेट, हमारे बहुत ही करीबी और कह लीजिए कि हमारे मोटिवेटर और हमेशा उन्होंने गाइड भी किया है, डॉक्टर भरत रंजन जी भी हैं। उनका 5 मिनट का स्पीक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन एजुकेशन। डॉक्टर भरत जी लखनऊ में यूपी में काफ़ी सीनियर मोस्ट एजुकेशनिस्ट हैं और वो कंटिन्यूस जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटी है, चाहे वो जर्नल हो, बुक हो या सेमिनार, वो कंडक्ट कराते रहते हैं और वो हमारे बहुत ही करीबी हैं, कुलीग भी हैं और प्रोग्राम के को होस्ट भी हैं। डॉक्टर भरत रंजन जी प्लीज। हेलो डॉक्टर भरत रंजन जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, नो इट्स ओके, इट्स अब आ रही है? या इट्स ओके। ये जो विषय आज के नेशनल वेबिनार का है वो बहुत ही उपयुक्त है वर्तमान दौर के हिसाब से, यदि देखा जाए कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ये अगर देखा जाए तो हेल्थ और एजुकेशन एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, वी नीड एजुकेशन। एजुकेशन को हम खाली उसी शिक्षा से ना लें, उस संदर्भ में ना लें जो हमें कक्षा में प्राप्त होती है, क्लास के अंदर प्राप्त होती है। हम जो हेल्थ एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं शिक्षा के माध्यम से, या जैसे अभी जितने वेबिनार्स हो रहे हैं उनमें हम लोग ने डॉक्टर्स को सुना आज, और हमने देखा कि राजीव जी ने जो है वो हमें ट्रेडिशनल मेडिकल एस्पेक्ट से भी परिचित कराया, जो हमें कोविड-19 से हैंडल करने में हमें हेल्प कर सकता है, और हमें जो एलोपैथिक सिस्टम है उससे भी अवगत कराया। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, हम एजुकेशन पे इसका सबसे गहरा इम्पैक्ट हमें देखने को इसलिए भी मिल रहा है कि बीच में अभी एक स्पीकर हमारे थे, उन्होंने इस बात की चर्चा की कि ऑनलाइन एजुकेशन को एक माध्यम के रूप में चुना जा रहा है कि क्या किया जाए। शिक्षक भी घर पे है, छात्र भी घर पे है, दोनों ही घर पे हैं, लेकिन शिक्षा को अगर चलाना है तो ऑनलाइन माध्यम हम चुन सकते हैं। हालांकि ये रेगुलर माध्यम का विकल्प नहीं है, लेकिन
वर्तमान समय में जबकि हम ये जान रहे हैं, जैसे एक सर्वे का भी माध्यम लिया गया इस पूरे वेबिनार के दौरान, जिसमें कहा गया कि शायद वर्ष के अंत तक जो है वो पूरा भारत या कह लीजिए भारत की अधिकांश जनसंख्या इससे प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में हम रेगुलर शिक्षा को या रेगुलर क्लासरूम एजुकेशन को इतनी जल्दी रियलाइज होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आगामी सत्र जो है ये हमें ऑनलाइन माध्यम से ही चलाने की जरूरत पड़ेगी, या शायद हमें कुछ मौके ऐसे भी मिले कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ कक्षाओं में छोटे छोटे नंबर्स में स्टूडेंट्स को बुला करके अलग अलग डेज में हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वी रिक्वायर प्लानिंग। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो वर्तमान सत्र जो हमारा पिछला चल रहा था उसकी परीक्षाएं हम कैसे कराएं। उसके लिए भी हमें प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। जैसे अगर हम ये चाहें कि जिस समय कोविड-19 का प्रभाव आया उस समय तक जितना करिकुलम हो गया था उस करिकुलम से थोड़ा ऐड करके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, हालांकि अभी इसी वेबिनार में हम लोग ने सुना कि अधिकांश जनसंख्या जो है वो पिछड़े इलाकों से है, गाँव से है, जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है या उनके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और अगर हैं तो इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डेटा परचेज़ करके ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल कर सकें। लिमिटेशंस आर देयर, लेकिन हमें कोई ऐसा माध्यम ज़रूर निकालना पड़ेगा ताकि जो पिछले सत्र की परीक्षाएँ थी उनको संचालित किया जा सके, उन्हें संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा उन क्लासेस में जहाँ परीक्षाएँ हो चुकी थी, चाहे इंटर कॉलेज तक की हम बात करें या कई डिग्री कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी, जहां मार्च में सत्र जो है वो परीक्षाएं होती थी, यदि जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुए हैं, ईयरली सिस्टम पे है, अगर हो गई है तो हम करिकुलम को रिवाइज करें, कम करिकुलम रखें, नंबर ऑफ क्लासेस को रिड्यूस करें, डेली बेसिस पे क्लासेस अलॉट करें, टीचर्स को जैसे ऑफलाइन मोड में करते हैं वैसे ऑनलाइन मोड में करें। तो शायद धीरे धीरे करके हम एक आदत डेवलप कर पाएंगे, एक हैबिट डेवलप कर पाएंगे जिसमें हमको इस ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी, उसके प्रति हमारी कंपैटिबिलिटी भी बढ़ेगी, शायद हम मानसिक रूप से उस शिक्षा के लिए तैयार हो पाएंगे। तो सबसे पहला प्रयास हमें ये करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि शायद अगला सत्र हमें ऑनलाइन मोड में ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना पड़ सकता है, तो हम अपने करिकुलम को रिवाइज करें, ये प्लान करके कि ठीक है इस सत्र में हो सकता है कि हम कम करिकुलम को लें, इस उम्मीद के साथ कि अगले 2 या 3 सत्रों में जब हमारे पास कोविड-19 जैसी समस्या नहीं होगी तो हम उस करिकुलम के छूटे हुए पार्ट को बाकी जो उनके वर्ष हैं उनमें उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं या अन्य कोई माध्यम अपना सकते हैं जिससे उनके उस कोर्स के पार्ट को भी कवर किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी इतने दिनों से हम लोग वेबिनार्स अटेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे हो भी रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। तो अभी जैसे आपका ये वेबिनार भी जो है वो यूट्यूब पे ऑनलाइन करना चाहिए, वेबकास्ट हो रहा है। तो जिस चैनल पे वेबकास्ट हो रहा है हम लोग कई बार उस पे देखते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। पिछले 7-8-10 वेबिनार का जो हमारे पास डेटा है वो ये कहता है कि 25 to 45 मैक्सिमम इस एज ग्रुप के लोग अभी वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे वो फैकल्टीज हो। इसका मतलब अभी भी एक बड़ा ग्रुप जो 45 से अबव वाला है वो अभी टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल नहीं है, अभी वो उसके साथ एडजस्टेड नहीं है, वो उसे स्वीकार नहीं पा रहा है या उसके साथ कार्य नहीं कर पा रहा है, चाहे वो अटेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और चाहे वो कंटेंट डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो पहली चीज मुझे लगता है कि अगर हमें कोविड-19 के इम्पैक्ट को एजुकेशन से कम करना है, रिड्यूस करना है, तो वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीपिंग इन माइंड द इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो शायद हम एक ऐसी अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे जिससे हम इस समस्या से आंशिक रूप से बाहर भी निकल सकेंगे, शिक्षा को भी एक स्तर तक पूर्ण कराने में सफल हो सकेंगे। लेकिन उसके लिए एक सकारात्मक सोच की जरूरत है, उसके लिए एक बढ़िया प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न शिक्षाविदों से,
जो भी इन क्षेत्रों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, उन लोगों से या जैसे यूजीसी या एमएचआरडी या बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो समय समय पर लोगों से सुझाव आमंत्रित करती हैं, उन्हें सुझाव का आमंत्रण देना चाहिए ताकि जनरल पब्लिक जो उनके भी माइंड में बहुत सा आइडिया हो सकता है, जो हो सकता है कई बार हम ना सोच पा रहे हों एक शिक्षाविद के रूप में। हो सकता है कोई एक ऐसा आइडिया हमारे सामने आए कि हम इस समस्या का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। तो बहुत जरूरी है कि एक ओपन इनविटेशन हो सजेशन के लिए, जिसमें देश भर से सजेशंस इनवाइट किए जाएं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चुनिंदा शिक्षाविद हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और ये प्रयास किया जाए कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नेशनल लेवल पे की जाए, जो एग्जीक्यूट हो नेशनल लेवल पे, हर स्टेट में हो, हर सिटी में हो, और हर जगह पे एक प्लान्ड तरीके से अगर हम सेंट्रलाइज तरीके से काम करने में सफल होंगे तो शायद हम एक बेहतर परिणाम पा सकेंगे। क्योंकि हमें ये मान चलना चाहिए, जैसा कि WHO भी कह रहा है, हमारी स्टडीज भी कह रही हैं, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये पैंडेमिक COVID-19 is going to stay for a longer period with us. That means we need a long-term planning to handle such issues. बस मुझे लगता है कि सीमित समय के अनुसार मैं अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। Okay, thank you, sir. Thank you so much for such type of information. डॉक्टर भरत रंजन जी ऑलरेडी अपनी फील्ड में मास्टर हैं, आपके नंबर ऑफ बुक्स हैं, जर्नल आपके ऑनलाइन हैं, इंटरनेशनल जर्नल आपके हैं, आप एकेडमिक एक्टिविटी नंबर ऑफ आपकी हर साल एक्टिविटी होती रहती है लखनऊ में, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी वास्ट है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। एंड मिस्टर संजय पांडे जी जो कोऑर्डिनेटर हैं फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। सर मैं आपका भी थैंक यू धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने भी इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका दी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। सर मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज सुल्तानपुर, on the behalf of organizing secretary Dr. Rajiv Mishra, Department of Endocrine, KGMU, on the behalf of convener Dr. R.N. Singh, Associate Professor KNI, Department of Geology, and on my personal behalf, I would like to express my sincere thanks to all the eminent speakers from different dimensions. Dr. Ishwarsan Bhardwaj sir, Dean Faculty of Medical Science and Health, Gurukul Kangri, University Haridwar. डॉक्टर कामाख्या कुमार सर, HOD योग डिपार्टमेंट उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार, प्रोफेसर यशवंत सिंह सर, एक्स प्रिंसिपल कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज सुल्तानपुर, प्रोफेसर जोसेफ सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स LNIP ग्वालियर, प्रोफेसर AK सिंह सर, जूलॉजी डिपार्टमेंट BHU वाराणसी, डॉक्टर DN राय, KGMU लखनऊ, and Dr. Oriji, Dr. NL Yadav, consultant Balrampur Hospital, Lucknow. Preventive aspects in terms of medical exercises, yoga, whatever you shared with us will be beneficial to mankind in such moments. So thanks a lot for all of you. I would also like to thanks to all yoga experts and dietitians, Dr. Salini Srivastava, Dr. Amarjeet Yadav ji, Dr. Amit Kumar Singh, Dr. Shikha Gupta, and Dr. Ram Kishore. Also one more name, Dr. Bharat Ranjan ji. I express my heartfelt thanks to all institutes, Kamala Nehru Institute of Physical and Social Science, Sultanpur, Department of Endocrine, KGMU Hospital, Hospital Administration, PGI Lucknow, Department of Public Administration, Lucknow University, and
Hemwanti Nandan Bhaguna University, Dehradun, for joining hands in such a movement and organize a valuable webinar for all of us. I would also like to thanks to whole organizing body who puts their best possible efforts to make a valuable platform for all of us. Special thanks are offered to Ms. Nidhi Vats and Mr. Sanjay Pandeji. I must not forget to thanks the volunteers and all participants who always play a key role in such events. At the last, thanks to one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.